टापी पिल गाने लिखे ये शऊर भैया जजी है बागी इसको कहते हम गुरूर नहीं दिले मगरूर तू भी खूब तो आराम देना सूद फिर I'm just a text away इतना भी दूर नहीं feels like yesterday सच का सबूत नहीं तू ही ज़वाल मेरा तू ही है उरूज ए लोगों से पूछे कलम लिखता झूठ नहीं गम देकर फिर दिला से कैसे मुँह पे तसल्लियाँ तो दुनिया में तमाशे कैसे हम आज भी कहते ना कोई रकीब ना हरीफ हम थे गरीब न जाने काटी हैं वो रातें कैसे कलम छोड़ या कलम तोड़ा वजन तोल नहीं हजम शोर ये हजम खोज तू सुरंग खोद तराजू ही नहीं जो तोलेगा ये डजन बोल तू रकम सोच इन लफ्जों की आजा जख्म तोल इंसान भी क्या चीज़ है एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है इंसान भी क्या चीज़ है झूठ की सज़ा नहीं तो तोहमतें लगाने पे यहाँ ढील है तू जैसे रहमत तू ही हूर तू ही नूर कोई नूर तू ही साया तू ही धूप तू फितूर ये फतूर तू इतनी खूबसूरत के मैं लिखने पे मजबूर बादल सिराना क्योंकि दूर तूने तो आना नहीं खुद कुछ ज़माना ये एक गाना कोई फसाना नहीं लिख दे अफसाने तुझ पे लेकिन आज फिर तू आई नहीं याद तेरी आई थी बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी आज फिर तू एक गुमान आज फिर तू शायरी सोचा था तू आएगी तोड़ के वो रस्में सारी दुनिया की रिवायती But God damn it girl आज फिर तू आई नहीं याद तेरी आई थी बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी माफी तलाफी की काफी पर आई काम नहीं जी आप वो लेती मेरा नाम नहीं pills pop I let the weed smoke sometimes just talking does not make the pain go तू ही आग तू ही उस पे पड़ती बारिश मैं वो खाली हवेली जिसकी तू अकेली वारिस तू ही छाँव तू ही धूप रंगों के साथ रूप तू जितनी खूबसूरत उससे कहीं ज्यादा दूर मैं लिखना छोड़ दूं जो तेरे बारे मैं कलम तोड़ दूं और तू स्याही में बसा रहे हंसा रहे जमाने को खुद से परेशान वो पढ़ती थी किताबें मैं पढ़ता हूँ इंसान भी क्या चीज़ है एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है इंसान भी क्या चीज़ है मैं कल गुजरा फिर उधर से तो याद आ गई चीज़ एक तेरा नंबर नहीं है You left the city and you're gone बात करने को है बस ये माइक्रोफोन वही कागज वही कलम लहजे सख्त दिल नरम बदबख्त बस करो उदासी हर तरफ झूठे तेरे भरम किस बात पे तू बरहम पर हम क्यों अभी stuck like a jam on a one way but someday तू समझ जाएगी दूर होके हमसे कि हम में वो करार नहीं पहले वाली बात नहीं तुझे किया आज़ाद या दी है खुद को सजा लेकिन दिल के मोहल्ले में अब तेरा मकान नहीं आज फिर तू आई नहीं याद तेरी आई थी बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी आज फिर तू एक गुमान आज फिर तू शायरी Follow the plan. As long as you have enough plans to go for all the things that happen in game, and Secret can sometimes pull out a wild card. Now they are definitely recovering. तुम लोग उधर जाओगे तो स्ट्रीम कौन देखेगा? I mean, even with NDG, again, he's new to the roster, and he said it himself. By the way, you know, in that video just कैप्सूल now आ गए that हैं he मेरा wants पैसा to be able लूटने to के keep up. लिए। He's trying to get as much experience as possible. I'm wondering how he'll be able to recover to ये get his दोनों mental भाई तो चीटर है दोनों भाई मेरी स्ट्रीम छोड़ के जा रहे हैं। very crucial. Yeah, true. I mean, I can only assume how he's going to try to do that, right? So it definitely is going to be a big factor, I think, as to
यार आज मेरा गला ठीक नहीं है, मैं चिल्ला नहीं पाऊंगा। कौन सा ले रहे हो? अभी मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ भाई, पैसे किधर हैं? एक तो दिला दो। आ गए हैं क्या? हाँ आ गए। We had a Borkum time. We had a Borkum moment. We had a Borkum moment. Not quite a BS. Yeah. So I do want to talk about our predictions. It's different this time around for all those of you in the Philippines, the T-Secret fans. You're like, oh, it's always it. Look, it's a little bit different this time around. I think they're going to bounce back this time because this is what T-Secret does. You know, when they're feeling down, they come back up. So loss is probably a good thing for, you know, their game. But Quack, you picked Zeta this time. Yeah. I mean, again, you know, like if we're going with Asurai's point about how NDG needs to back it up, first of all, I haven't been bribed with like Kare or Secret yet. They're so good, it's hard not to say. Send it to him, I got bribed. We'll give you his PO box. Apart from that, you know, if NDG is that sentinel anchor, going up against someone Hello like Rakesh, welcome to the stream, brother. full force आज of मेरा this गला new ठीक नहीं, थोड़ा सा मैं Zeta चिल्लाऊंगा नहीं roster. You ज़्यादा। got Hirodon and Yuron here to back up depth. If you can't, you know, fend him off, like that's it. It's gonna be a really rough ride. So you need to pull off some of these wild cards. You need to break Zeta Division's system, and that's the whole kind of game plan against this team because they are so structured. They follow these rules and protocols, and you have to make them think. But again, like I mentioned, the rookies on Zeta Division, Hirodon, Yuron, direct upgrade. They are just that good. They provide so much more. The whole team just looks brand new. Yeah. And this is coming off of Hirodon मेरा भी गला खराब, तूने भी मुंह मिला। past when he was previously with Fennel, he was only playing as the Sentinel, and now pushing into a different role, completely freed up. Hello and Abhiram, actually welcome to the just slot stream. in so well. So this man's pretty much a Swiss Army knife in a way, right? He's able to just adapt that quickly. I just really wanted to also just add that both of these teams kind of play on the same ground but different approaches. Where we talk about how कसम से बता रहा हूँ, is very much known for, सेकंड बोलेगा तो those aggressive कसम से बता रहा हूँ but Team Secret also known for कि those इन लोगों ने ना बहुत टाइम स्पेंड किया होगा सेंटिनल्स की बनाने में, क्योंकि उनको पता है सबसे ज़्यादा बिजनेस तो यहीं से आएगा। But before that, we did an audience survey. Oh. We like to ask our audience किल इनका ये अच्छा है, ये बैनर अच्छा है इनका। फनाटिक का बैनर कैसा है? फनाटिक के बैनर की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें, फनाटिक तो है ही रॉयल्टी है भाई, ये तो रियल मैड्रिड है भाई, ई स्पोर्ट्स का रियल मैड्रिड। जेटा का बढ़िया है, जेटा का नाम मत लो भाई, I can't answer you guys because I don't जेटा have का नाम friends. मत लो मेरे सामने। Wow, Astray. For those of you Lol. watching at home, if you would like to ये be अच्छा है। friends with Astray, please follow Liquid कैसा him है? on his Twitter and his Ooh. Instagram because he needs some Liquid भी friends. nice। But what would you pick? Look, I have friends who are both of these awful things, by the Fanatic का buy way. करो। So I do have Outplays। friends who are awful because they. एक्सक्लेमेशन मार्क I have जी one पे चंदा भेज दो। Round 2 has a freaking Odin. Like, that's just how he plays. Maybe I might go with someone who asks for an Odin because at least they are asking for it, and then I can tell them, no Odin. But Stop. every round, like, quack, quack, quack. Mute. Odin, I'm Odin. done. I take my headset off. Cut out your skin. You guy. Do you have a skin? Do you have a skin? Do you have a skin? Oh my god, that's amazing. What would you pick? I thought I gave my answer already. Friends who फनाटिक का खरीद रहे हो क्या? You know what? I like to have a friend खरीदना है अभिराम भाई, एक्सक्लेमेशन मार्क जी पे चंदा भेज दो। because हेलो at least डेस्कटॉपर, they वेलकम टू द know, स्ट्रीम। right? 18 If पीपल your वाचिंग गाइस, friend प्लीज लाइक द only स्ट्रीम। runs अब and लोग guns, अभी that हम means लोग that थोड़ी they देर में don't know वॉच how to पार्टी use स्टार्ट it. करने वाले हैं। 100 थीव्स कैसा है? Okay. 100 थीव्स भी fair बिकेगा enough. मेरे Well, हिसाब like I से। said, our friends who do लोगों both इसका and, बड़ी अच्छा है, इनका भी 100 I थीव्स भी duel बड़ी with अच्छा them है। anyway. फनाटिक का बड़ी मुझे I look good. अच्छा ज़्यादा क्यों लग रहा है पता है? क्योंकि कन्वेंशनल से अलग बनाया इन्होंने। देखो बाकी Anyway, सबका we are gonna go to the stage वाइट कलर का बड़ी बनाया really इन्होंने। देखो soon, फनाटिक and का उन्होंने you know, ऑरेंज we're रखा gonna है, see a इनका भी जैसे rejuvenated येलो है, Secret. It was a मतलब इन्होंने very ध्यान रखा है short कुछ break. चीज़ों का। Let's see them तो walk देखो out. ये भी Let's वाइट ही है see जैसे who as we go into our second series of today. C9 का भी वाइट रखा है, जबकि ब्लू रख सकते थे यार C9 का भी, क्योंकि ब्लू C9 इज ब्लू यार, C9 तो है ही ब्लू सब कुछ। एनर्जी का अच्छा है क्या? और भी ना Stepping up to the stage, representing Japan, make some ना ना noise ना for ना Zeta नावी का Division. येलो होगा। हाँ नावी भाई, रॉयल्टी है भाई, नाम में रॉयल्टी है भाई। नावी बहुत बहुत बिकेगा उनके रीजन में,
मतलब अपने अपने रीजन में बहुत बिकेंगी ये, फनाटिक बहुत बिकेगी अपने रीजन में, नावी बहुत बिकेगी, फिर लाउड भी बहुत बिकेगी भाई, लाउड बहुत बिकेगी। ब्राज़ील में लाउड बहुत बिकेगी भाई, नो मैटर कैसा भी दिखे। अच्छा है लोगो इनका भी, बड़ी अच्छा है इनका। हेलो शीशी गेमिंग, वेलकम टू आदित्य सिंह, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर। G2's बैनर इज सेक्सी। G2 का क्या, वेयर इज G2? G2 भी फ्रांस में बिकेगा, फ्रांस में G2 बहुत बिकेगा भाई। 6-7 टीम है जिनकी अपने अपने रीजन में बहुत सेलिंग होगी, और बाकी फिर ओवरऑल में मुझे लगता है सेंटिनल्स बिकेगा सबसे ज़्यादा, तो क्योंकि इंडिया में बहुत निब्बा हैं वो जो लेंगे सेंटिनल्स के। MIBR RRQ भी बिक सकता है उनके इसमें, RRQ भी कल्ट फैन फॉलोइंग है RRQ की। थ्रू लेव, वाइटालिटी, लिक्विड भी बिकेगा, लिक्विड अपने रीजन में बिकेगा। BC इंजीनियरिंग का पेपर बहुत लेंदी था, 10 मार्क्स का चूड़ी। अरे रे रे रे, BGM म्यूजिक सही है। बैनर दिखाओ G2 का, सॉरी। चैट में सचिन भाई, स्पेक्ट्रम क्लासिक और कैप्सूल। कैप्सूल बोलूँगा क्योंकि स्पेक्ट्रम क्लासिक तो पुरानी हो गई है, ऊपर से इसमें 3-4 चीज़ें मिल रही है ना, बड़ी भी मिल रहा है यार। इंग्लिश का पेपर लेवायथन का देखो, लेवल का देखना है क्या, इधर यार। एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, मुझे क्लासिक की स्किन एक भी अच्छी नहीं लगी, एक भी नहीं अच्छी लगी है, ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ, एक भी क्लासिक अच्छी नहीं है। जस्ट उसको जो बनाया है ना जिस तरीके से, वो पैटर्न ही अच्छा नहीं लगा मुझे, वो भले फनाटिक क्यों किसी को दिया। बैनर देख रहा हूँ, एनिमेशन अच्छा है, बट ये नॉर्मली जो है ना, इंस्पेक्ट अच्छा है, बट नहीं है, क्लासिक में दम नहीं है। इसका देखना था, लेव का बैनर देखना था, का बैनर भी अच्छा है भाई। If they would have any chance to pick any map that they're not going to be comfortable on, right? Especially that is this going to be a map, you know, might as well just put it at the very start, right? So I feel like do or die, they don't want to have Icebox be their like last map, as I was mentioning when we saw that previous series with Secret. I mean, they love bouncing back. They love proving everyone wrong, and they did go into overtime in that Icebox just now, so I'm not surprised. And you're right, when you were talking about, you know, we've seen a lot of Zeta. Now, both of these teams are quite notorious for counter-stratting other teams, and to have them kind of see who can big brain the other. मैं सोच रहा था अभिनव भाई इस बार आपसे ना लेके चैट में से चंदा ले लूं, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, बता देना मुझे, कोड भेज देना, ऑन स्ट्रीम लूंगा, लेकिन लूंगा तो फनाटिक की है भाई। RGX क्लासिक आई है मेरे में, और स्पेक्ट्रम डूडू का फैंटम आई है। कंटेनर में मेहनत ही नहीं करी भाई, बिल्कुल भाई बेहतरीन है BH G2 के और ये लेवल के। अच्छा, टीम्स को खुद देना था क्या अपना बैनर? अपना G का बैनर कैसा है? I mean, Zeta has looked really good on this. Of course, Sugar Zero, Yuran, logo अच्छा लगता है मुझे। Great things. They shut down players like Pulvi incredibly well. Can they do that against someone like Jeremy? Just wanted to add, there's no more woes for Team Secret here to deal with the Gecko, which has been such an issue for them. PaperX ने अपना बड़ी में सिर्फ RX क्यों लिखा है? वो शायद P और R में ही PR कर दिया है क्या? मतलब एक ही लेटर में दोनों ऐसा किया है शायद। PaperX का लोगो ही ऐसा है क्या? For Team Secret, that being said, the reckoning from the मतलब ये R में ही P काउंट कर लेते हैं, ऐसा P और R और X ऐसा कुछ है ना? The coaches, Zeta doesn't have enough time to pick it apart in time for the second or third map. Without, let's get into the game. Let's go over to Paperthin and Will. See, Sentinels has one of the most kicking things off right where we left off. It's going to be Icebox for this map 1. Now, as the desk mentioned, Paperthin, a lot of people have questions about, all right, Secret, how confident were you in this pick, in this composition? It's a little outdated, but they bring it out again. Yeah, and it's going to be tough going back to back. You know, Zeta had a chance to just watch this map स्ट्रीम लाइक कर दो, बड़ी बड़ी जो देखते रहेंगे। अब मैच चालू हो गया, आ जाओ।
So definitely looking towards Yoran and Hirodon, two of the players that were mentioned in the pre-match interview with the coaches, to see if they can continue to have that impact that they had the last time around when they faced off against Global Esports. So just a little bit of mid-aggression. Love it from Team Secret. Getting a very different look here to start. A big change. Now, unfortunately, not winning that first duel amongst the Killjoys. So Last going to pick that off, and that's a spike dropped as well. So, I mean, Zeta has a decent idea. They had this fast push as well, but they don't have any idea about this deep push into Kitchen, let alone how many members it might be. So, map control kind of all over the place. This retreat from Zeta on the B side, that's the big question to be had. Will Team Secret find the timing? Is Jeremy will pick one off, get straight in. He's ready for the second. Hiroron just waiting for his teammates. There's 3 pinching on 2. Borkum stays alive, snake bites and try to draw him out. That's 1. He just has to buy time. That's all he needs to do as the spike does go down. And Jesse Bash long range kill onto Def and a nice headshot to follow up. Yuran, the rookie for Zeta Division, trying to stay alive. They would love to kick things off on the right foot. But Borkum is not giving him the time of day. I mean, this is just a fight for time. Just keeping up the screen, trying to shift in, trying to find these 1v1s. He was ready for it, but not going to find the kill in time. Envy will clean it up for Secret. Yeah, what a funky round there from both teams. With one pushing up middle and with Zeta pushing out B, it caused both teams to kind of pull back and have to kind of reassess some space. So that gives Jeremy 1, and then Hirodon is right there to trade for the other. But then Jesse gets so far deep into the defender's spawn. He's able to find 2 kills with that Sheriff. And, yeah, you can see it on Borkum's face. This is going to be a rough day for Team Secret no matter what, but see if they can get off to a hot start here. Keep Zeta on the back foot. Dart out early. Be clear, trying to set up this push for Laz. Yeah, that's so orb as well. I mean, that's one of the things the Sage can do very well, is really deny that ult orb from one side or the other. Jeremy's just going to dash on through, keep the pressure going. Team Secret has no intention to slow down. They are just forcing Zeta out of this site. Borkum in the lead with a Spectre. Slow work from his own teammate, kept him at bay for a little bit, but NG picks up 1, and Borkum has to reload, barely stays alive, but enough time for a spray down assist from Jeremy Depp, cleaning up that kill, and eventually it will be a round win. A little messy, but still keeping 3 weapons in hand. Yeah, not bad at all here. आज ना यार मेरा गला भी ठीक नहीं और मेरा शोल्डर मेरा बॉडी बहुत एक कर रहा है तो मैंने लो एनर्जी में स्ट्रीम करूंगा the best form maybe we've ever seen him. Body पूरा body एक हो रहा है. The firepower that now resides behind Depp on this Zeta squad. Tough, nice little drop down there for Jeremy. Pre-fire on the corner for Borkum. Team Secret all business. आवाज खेलूंगा वाले दबा के. They want to try to right the ship. They do not want to go out in this match. If they can win here, if they can find मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? they give themselves an opportunity. ठीक है जिन वॉल्यूम वगैरह उसका. आवाज तो मेरी खराब ही है आज. मैंने तो मजे में दिया था 87%. Of course, given the grueling scheduling, Team Secret, lots to learn from, but can they adapt to it with just that short break? And Zeta, how much did they glean from that? Very far back alarm bot, just making sure it covers screens for a potential lurk. And no pressure on mid just yet, other than the poison cloud just trying to bait out some more pressure. It will draw out that drone coming out from Hirodon, and he's going to clear that out. And DG just hides right from it. उठा नहीं रहा मैच में ना अभी कॉल नहीं उठा for Zeta Division. Zeta firmly planted. You can have kind of an interesting position here from Hirodon. Pretty deep into mid, maybe playing off that alarm bot, but as of right now, Team Secret not showing any of that mid pressure. Jeremy swinging wide. Good on, safe behind that wall. जेंजी ने बहुत अच्छा फाइट किया भाई पहले मैच. बहुत अच्छा मतलब किसी भी मोमेंट पे गिव अप नहीं किया उन्होंने. अगर लोटस वाला मैच देखोगे ना तुम, टेक्सचर के 2 किल थे डिफेंस में. अटैक में जो मारा है उसने. इस मैच की प्रेडिक्शंस मुझे लग रहा है टीम सीक्रेट जीत जाएगी. मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जेटा जी के सामने ही खेल पाई. मुझे लगता है निंग के सामने भी खेल पाएगी. टीएस जीतेगी, देखना आप. टीएस जीतेगी. ये राउंड तो निकल ही गया. बोनस भी निकाल दिया देखो. अरे भाई कोई नहीं यार. सेट कौन सा था? ये अब तुम पढ़ाई की बातें करोगे क्या चैट में? Onto the B site by Zeta, playing so far back on the map, gives them an easy plant. That wall still proving to be a little bit tricky for players to remember how to deal with.
And Team Secret falls victim to it in terms of not being able to really contest the plant itself. That allows Team Secret to get into these deep post-plant positions. And the angles are so well covered. Again, everybody in a position where they can trade off of the kills, cover each other very, very nicely. Team Secret going to take the bonus here against Zeta. Both teams going to trade recon ये उसने क्या recon किया मुझे over देखना on था the यार. A site. Team Secret staying behind there as Jeremy. ओ उसके अंदर किया उसने recon शायद. वहाँ छोटा सा gap है. In that nest and push forward continues. करना पड़ेगा Last for ऐसा another recon. cheeky sheriff kill. Not able to connect this अब go बताओ कौन around. सा Jesse's agent going to अगली load बार. up. रेना खेलो भाई, रेना खेलो. मैंने अब बोलना छोड़ दिया मैंने लोगों को भाई, क्योंकि See if Team Secret can get the plant रेना down. लेके जीतोगे भाई. ना दिमाग लगाओ ना कुछ, चुपचाप रेना खेलो, मारो मर जाओ. सही बता रहा हूँ, अगर रैंक अप करना है ना सिर्फ रेना खेलो भाई. गेम सीखना है तो अलग अलग एजेंट खेलो, रैंक अप करना है तो सिर्फ रेना खेलो भाई. खेलते रहो, रेना ही खेलते रहो. जब तक MVP ना निकालने लगो खेलते रहो. 5 किल पे मरो. Constantly getting tagged. They don't want to give up that short range angle, and Jeremy plays the timing well to his advantage. Another good Should round be from a Team Secret. Clean finish to the round for Secret, but there is a sheriff in Uran's hand. Not landing any shots just yet, though. Yeah, tough position now for Uran. Depp couldn't snag that gun off the kill. He got dashed out and wasn't able to pick it up. So no extra firepower available for him as the round went on. And Uran, nope, Jesse Bash, not having any of it. Yeah, quick little check. Doesn't want to take any risks. I mean, Team Secret, they know that not only do they need to win this match, आप किसको सपोर्ट? मैं टीम सीक्रेट को सपोर्ट कर रहा हूँ और लास्ट मैच में जेनजी को सपोर्ट कर रहा हूँ. इसके बाद वाले मैच में दोनों मैच का बता दिया मैंने. हेलो स्मार्ट हंटर, वेलकम टू द स्ट्रीम. Your opponent's picks as well if it comes down to the wire. So every round counts, and they're snowballing forward to make sure that they have that advantage. Yeah, the good news here for Team Secret is if you can 2-0 Zeta here, then you have a really good potential tiebreaker in that you were able to get a big lead against Gen G with that 13-5 on to Breeze. So absolutely, there's still a lot to play for here for Team Secret, and you can see it in their play. They are really fired up right now. You do have a Blade Storm for Depp. Jeremy's sitting on one as well. Jesse Vash has that Hunter's Fury that he has been so good with today, finding so many valuable moments to pick off players. And going fishing once again, but Zeta wise to it, not giving him the opportunity to get a ping off that drone. Yeah, but the site opened up. All the Killjoy utility already burned other than the turret watching for the flank. Now it is watching for that screen's entrance, so once they flood the site, they should feel relatively safe. Do keep in mind, you're still over on the B side as they hadn't quite heard the blast. So a lot of damage put down, and it is going to be just an extra scratch onto NDG down to 14 health, but the spike is down, pit is up. Zeta, you have to find the information to get through, but it's Jesse Bash who gets the first kills. Depp finds him right above the screen, but he needs to dive into the pit. He needs to dive into enemy territory, trying to make sure he catches anyone on the outside first. He will find it, be from above. Another reset for the Blade Storm, the hero for Zeta Division. How much can he do as it's only 2 members of Zeta? Now finding his screen, he wants to go in on the close angle, tries to use the Chaos to his advantage, but no, NDG is smart to it, and that's a 5-0 lead. Phenomenal reactions by NDG there. Depp might add him dead to right, but he's able to swing just in time and take him down. Depp doing everything he can above the pit, but never able to isolate and eliminate Borkum. Our Zeta, they did not have much utility left to clear by the time we get to this point. Depp, yeah, quick to respond. Jeremy and company seeing the feed there sticking out on top of the wall. Good round, good round. Just really. Hi Rohit Sharma, welcome to the stream. He's got a smile. Secret जीतेगी, Secret जीत जाएगी. 2-0 भी कर सकती है Zeta को. This cast, but Zeta the good thing is he's G putting के that सामने smile खेलती है on, भाई. right? I mean, जैसे despite a grueling match, which again, that's something Warbird's talked about. That's the first time NDG's पता नहीं हम लोग अनलकी रहे यार, दोनों बार हमारा Zeta से मैच हुआ ना. भाई अभी भी मूड ऑफ. And so far, it looks like the team has done a good job of trying to keep the spirits up. Obviously, they're going to be tired. I mean, that's just a given fact. But how much can you hang in there? Because at the end of the day, Zeta's going to be going through the same thing in that next match. So whatever round wins and map wins you can get here is going to matter in Secret. No doubt about it. And really curious to see exactly how Zeta is going to recover निकाले दोनों after this rough 5-0 start.
ऐसा नहीं है. Playing very far back, giving up a lot of space. Some of it, you know, sometimes to deal with some ults that could potentially come through. You know, like in that previous round, you don't want to deal with getting pinged and getting Hunters Furied by Jesse Bash. ध्रुव, playoff में हारे तो बाहर हो जाएंगे क्या? मैं बताता हूँ देखो क्या सीन है. So I'm curious. What I want to see is like Zeta get a little bit more aggressive, start challenging. देखो यहाँ से तो पता लग गया ना ये सारी टीम्स क्वालिफाई हुई हैं. तो जो डायरेक्ट क्वालिफाई हुई है ना वो सीधा प्लेऑफ्स में है. लेकिन जो सेकंड मतलब डिसाइडर से क्वालिफाई हुई ना वो आज खेल रही हैं प्ले-इन्स राउंड रॉबिन में. मतलब तीनों टीम का एक दूसरे से मैच होगा. जो टीम 2 मैच जीत जाएगी ना या फिर जो भी टीम ऊपर रहेगी मतलब राउंड डिफरेंस या जो भी है मैप डिफरेंस के हिसाब से वो टीम जाएगी प्लेऑफ्स में. प्लेऑफ्स में अभी एक स्लॉट खाली है. गुड. इनकी किस्मत नहीं है आज हारनी चाहिए वैसे भी. ठीक है फिर यहाँ से प्लेन से एक टीम यहाँ आएगी. प्लेऑफ्स होंगे हमारे 24 फरवरी से. ठीक है सेमीफाइनल और जो भी मतलब जो भी 2 टीम फाइनल में आएंगी ना वो जाएंगी मास्टर्स मैड्रिड जो होने वाला है मार्च में. मार्च में होगा. देखो 2 टीम आएंगे अमेरिका के कॉफ से, 2 टीम आएंगे EMEA से, 2 आएंगी चाइना से, 2 आएंगी पैसिफिक से. ऐसा. There's a head bob again, just making sure he's relaxed. See that whenever he's feeling good about that last round. The operator now in hand for Jap and Zeta. They've just been starving for a round win. They're not जेनजी को मेरे हिसाब से दूसरा मैच जीतना ही होगा. अगर तीनों टीम एक-एक मैच जीत गए ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ ना तो उस टाइम तो मुझे लगता है कि जेनजी बाहर होगी क्योंकि पहला मैच जेनजी का बहुत क्लोज हुआ है. कुछ बता रहे थे आप समझा. हेलो तन्मय भाई राम राम वेलकम टू द स्ट्रीम. मैं बता रहा था कि सेंटिनल में साइफर केजे और डेडलॉक खेला करो. डुएलिस्ट में रेना जेट योरू और रेस खेला करो. इनिशिएटर में गेको स्काई सोवा खेला करो. हो गए ना सारे. और कंट्रोलर में ब्रिमस्टोन एस्ट्रा और ओमन खेला करो. They're starting to fall apart, and it's only the first quarter of the map. जी हाँ जी का नेक्स्ट मैच सीधा अप्रैल में होगा. Sure, he still has 8 to his तब तक name, जी का कोई but मैच how नहीं. many of them really had impact? As it's more just him trying to stay alive with this operator. Yeah, and Zeta has no money. I mean, obviously you're down 0-6, so या कुछ चांस नहीं. अभी अप्रैल तक जी का कोई मैच नहीं होगा. Bank a little extra cash to rely on, and yeah, Jesse's so early. Tricky. Oh, that's quick enough. Now Everything he definitely is wants the going operator. in Calls टीम over his सीक्रेट्स teammates to फेवर. see if अभी they can जेटा को make पता some लग रहा हो sort of कल जो जी के pinch साथ हो for रहा था mid ना as well. Not gonna be too much time, हर but फाइट हर एंगल हर Green पीक Bumble, उनके फेवर give में him जा that रहा था. आज position. सब That उनके अगेंस्ट जा रहा in है. safety, the अच्छा last है अच्छा swing है. around, and Def ऐसे will ही हारो. survive with ये the गया. Ultragear. Woo! I was getting really antsy about that timing. हाउ टू गेट वॉच पार्टी. मेरी मैनेजमेंट टीम करती है शरण भाई वो सब. मैं मुझे कुछ नहीं पता है. अप्रैल में कौन सा मैच है जी का. अप्रैल आने दो ना तब देख लेंगे. अभी से जान के क्या करोगे. अभी से जान के प्लान कर लोगे क्या कुछ. देखो ना अभी भाई प्रेजेंट में जिया करो भाई. इतना आगे का क्यों पूछते रहते हो भाई. अभी का देखो ना. For the side of Zeta, they've been playing retake heavy. Now's the round where that has to work if it is ever going to. Yeah, I mean you're already down 7 rounds. Even scraping together all 5 right now would be a desperation play for Zeta. भाई ये तो इनका ब्रेड एंड बटर है भाई. इनका काम ही Trying to यही है. set this up. Now we saw this trap play come up from Range, Gen I G guess. yesterday as well. But now they hear the bulldog, they hear the extra gunfire, and they're just trying to clear it out. The shock darts doing their job of pushing Sugar Zero out of position. Oh, the jump just a little high, just a little wide, and that's all Dep needs. That won't be the first kill, and on to the second, and this is exactly what Dep wanted. But the trade, Team Secret, they still have the option to continue pushing forward bit by bit. Euron and Sugar Zero are holding their अभी angles बोल there, रहे and अप्रैल में Dep's going to देखेंगे. get caught 26 people watching by guys the please like the elevated stream. position of his opponents, so now you got a tough आज के प्लेन्स का सेकंड मैच है. पहला मैच जेनजी जीत गई टीम सीक्रेट से. अभी टीम सीक्रेट और जेटा का मैच चल रहा है. 7-0 स्कोर है. 8th राउंड चल रहा है. 3v3 का सिचुएशन है और ये तो गया. गुड ट्रेड यार. गुड ट्रेड. और अच्छा हुआ शुगर जीरो मर गया क्योंकि उसका अल्ट थी. अब अल्ट भी ये इसकी साउंड भी आ गई. साउंड दे दी इसने. लैज ने साउंड दे दी. ये मार देगा देखना इसको. यही मार. Lines up the headshot. The clutch master for Zeta Division, the IGL, trying to put the first victory on the board, but this is a mind game. Is that he you going to cannot expect? possibly be ready for the ये तो lockdown.
He's surely assumes that he's backed out all the way, but Borkum knew this was coming. Yeah, he's just waiting in Snowman. I mean, he has all ये the तो अभी space to वॉक hold करके the आएगा angle. इसके. He's waiting on Oh, the he's peak as expecting. well, and Laz has the Bro, suspicion, he but was Borkum expecting. shuts भाई it down. awareness He इतनी shuts next down the level होती है ना lockdown. यार That's इन लोगों 8 की. rounds. Ult's wasted. Zeta still nothing on the board. Borkum read that the lockdown could come. अरे through, रोहित so भाई वो he इसलिए मर moved गया to the क्योंकि उसने side, पीक नहीं where दिया he's यार. gonna वो have पीक देता more ना तो मार extra देता. open space to Love you contest Veggie भाई. B. Hello legend Deep Karthik, welcome to the attempt stream. by Laz. Laz is just kind of a little bit befuddled there. That toxic screen that मतलब Borkum डेप throws ने up बेचारे right ने at 2 the पिक plant निकाल makes के it दिए थे. impossible एक to राउंड में तो know उसने which कुछ way he इम्पैक्ट went. डाला था, He वो went भी हार left or गए. he went right. थोड़ा सा इधर He went उधर right हो this गया time, and केजी it का. was the आपकी right ही मदद decision से as मैं well, सिल्वर से so गोल्ड पहुंच गया. now मैंने you कहा have to मैंने कुछ नहीं किया भाई. already बोरकम इज द take आइडियल that राइट. second यस time यस. out. I mean, at this point, अलग if anything, अलग we get the वीसीटी की mental back टीम in the game, प्लेऑफ्स right? के थ्रू Forget the क्वालिफाई map होकर वर्ल्ड के itself. बेस्ट टीम Whether you compete win this करेंगे. map यस or कॉस्मिक not, बुरिटो. your अभी mental मैंने वही gets बताया ना. destroyed just within the मास्टर्स first होगा 12 मैड्रिड rounds of में. this best of 3. You have a long way to go. मैड्रिड में मास्टर्स होने Try to वाला crawl है. back. So you have to imagine the उसमें coaching ये 8 staff टीम्स खेलेंगी. making sure the players 15 aren't मार्च से too 25 flustered, मार्च तक चलेगा despite ये. the योर scoreline. रैंक Just don't टिप्स look at the वीडियोस आर टू गुड. scoreboard. थैंक यू Get ब्रदर, back into थैंक it round by यू. round. शाम को Yeah, खेलोगे वजी exactly. भाई. I mean, this मन है is खेलने का पर बॉडी इतना something पेन that कर रहा है ना. I बहुत remember बॉडी पेन कर talking to रहा है. Minnie about last year at Champs, and और he मुझे said, आज थोड़ा सा मेन you know, आईडी खेलने का sometimes when मन you're है. just getting भले ही मैं blown डी out, रैंक हो जाऊं चलेगा, the only लेकिन thing मैं you सोच can रहा हूँ आज do मेन आईडी खेलूं. is एक या just, 2 गेम तो एटलीस्ट. उसके बाद you know, वापस reset. And it almost makes it easier असेंडेंट sometimes वाली आईडी पे आ because जाएंगे. you're just like, okay, मैनिफेस्टिंग अ well, फनाटिक all right, वर्सेस maybe they'll सेंटिनल्स get this फाइनल. one, but नॉट we get the हैपनिंग next अभिराम one. भाई, That नॉट can change your हैपनिंग. mental really fast if you can let go Not of happening. it that quickly. And Zeta, you know, certainly a team that's been around the सेंटिनल्स block की for the most किस्मत part, थी other कि than पहला the big मास्टर्स players. जीत गए वो लोग. Maybe a little bit of a अभी struggle भी for बता them रहा to kind हूँ, of तुक्के में ही adjust जीते हैं. mentally to क्या these हुआ situations, पेन but जिम. the rest of नहीं them यार ये absolutely चेयर पे इतना बैठने को आ Yeah, रहा one है of the ना यार. biggest things is not only is Depp getting pushed out of position, but it's also the trades afterwards. Even if Depp is able to get a kill, Secret just hasn't let up. They haven't taken their foot off the gas. Anytime the first kill happens on either side, Team Secret will be pushing through. So now Uran tasked with supporting Depp. ब्रो He's चैंपियंस got a bulldog in लीग एंड hand. वीसीटी दोनों Not the आ गए. greatest of weapons, but one Comeback that होगा could Zeta get a का. multi-kill. टीम सीक्रेट Turret जीतेगी setup ये. here, expecting एफएनसी to push out, ऑफिशियली ready to कभी play एपेक में आ off. So पाएगी. difficult to, मतलब so difficult to deal with that. एफएनसी एपेक में क्यों खेलेंगे? Storm in hand. अपने अपने Can't, रीजन you में know, खेलते हैं clear लोग. that turret so मास्टर्स easily, में ही so they होंगे have एक to दूसरे step के up, use मैच. the bulldog to clear it. They're able to pick up क्रॉस the drone रीजन as तो well, so मास्टर्स में ही होता है. now बाकी तो सब Depp अपने just अपने gonna रीजन में ही fall back खेलेंगे. here as Zeta gonna have to reset. स्ट्रेचिंग करो Team थोड़ी Secret थोड़ी कुछ डेली beginning to make their march forward आगे a बढ़ little रहेगा. bit. स्ट्रेचिंग करता हूँ मैं तनु भाई. पुशअप्स भी करता हूँ और स्क्वाट्स भी करता हूँ और स्ट्रेचिंग भी करता हूँ. Cascade, but there's a resurrect, and that's a weapon not recovered. So the only thing Zeta really gains from that is the ult and the wall being taken out from Team Secret's arsenal. Depp still bouncing around, still looking to pick off another head of a Team Secret player. देखो अभी Jesse, एक though, पिक मिला था वो रिवाइव कर दिया. identify a lot of players of Zeta. ये लोग रेडी है पुश That के is लिए, a लेकिन फिर भी ये lot लोग of मरेंगे info देखना. gathered. You still have some Masters की control बात हो रही of थी mid भैया. as well. You've been keeping your eye on that as Borkum was on the lurk. Still have the तो nano वो मेरे को source चीज from समझ नहीं आया NVG, उनका just भाई. putting एफएनसी pressure down ऑफिशियली on कभी the एपेक में potential खेलेगी, वो rotate. चीज समझ नहीं आई मुझे. 30 seconds All left. this Veggie pressure भाई make भी it look like bulking. they might also have a नहीं pitch नहीं going इंडिया through की खुद mid. की That टीम really नहीं है slows ना down the वीसीटी में. rotate over है from ना Zeta ग्लोबल Division. स्पोर्ट्स. And Laz, he'll be watching under two, गुड but मोबिलिटी the site मस्ट giving है him आज for के free. दिन. Some अभी मैं shotguns to try जस्ट to do ये something about this. स्ट्रीम के Last पहले ही thinking स्ट्रेचिंग about करके the आया nano, भाई, but क्योंकि मुझे deciding इतना बॉडी better पेन of हो it. रहा था. Now, another tough तो मैं post स्ट्रेचिंग plan करके आया. for Zeta फ्राइडे to हैज try to break कॉन्फ्लिक्ट through. ऑफ I इंटरेस्ट mean, शी इज your अंडर doubts, you're away. You have आई नो ultimates, but बट वो there's ओपनली the सपोर्ट करती preemptive सेंटिनल्स को. lockdown, and it's going to draw out the Hunter's Fury, because if it's not for that, you absolutely are already giving up on this round, and Jeremy just pushes out मैं of बोल रहा हूँ भाई, ये लोग रेडी होंगे ना पुश के लिए, फिर भी ये मरेंगे. उसने 100 अल्टी उसकी फिर भी कुछ नहीं मिला और 3 5 के 5 मार दी. देखो Yeah, just phenomenal stuff here from Team जेटा Secret. कुछ नहीं कर पाओगे भाई आज तुम. They're not feeling it after that loss to Gen G. It turned them around a little bit. It feels like they are really और सीक्रेट dialed का in. आइस They बॉक्स are बहुत really अच्छा है. crisp, सीक्रेट का आइस really बॉक्स बहुत snappy, अच्छा है. making good decisions. Zeta left scratching their heads. You're going to be able to funnel another op into Depp's hands. You still have a Reckoning
For Sugar Zero. Overall, Zeta cannot get any data on Team Secret. Now, setting up for a lineup here with that slow or अगर डेप्थ को कंट्रोल में रखा तो a सेट आ little bit of pace to this one. Yeah, I mean exactly. गलत सोचते हो भाई तुम एक डुएलिस्ट अकेला पूरा मैच नहीं जिताता है भाई Zeta looked like they went back to 2023. I mean, I would say overall Zeta's movements themselves have still, had a little bit more oomph to it than compared to last year, as we've been praising them with the roster upgrades. But Secret has just pushed it up in relativity, and Zeta look like they are immobile. Now, perhaps a little bit of an overreach. SC Bash is trying to create another curveball. The Reckoning early, but it will not stop the plant. Envy
holding in the poison cloud while he gets that heal. Good awareness है from Get the Dep. positions. They find one. Dep will Dre eventually एक recover round दे onto दिया, the aim, but they 13-0 नहीं peek कर out one पाएंगे by अब। one into the operator. Will this finally be the round win? Borkum still trying his best to get यार the clutch. वाइपर बेस्ड He already वाइपर had पिट one भी in this इसको match, शायद but कर now लेना it's चाहिए था four इन्वेस्ट other यार, members, या भी आया and है he's been पहले था इसके surrounded. पास He's क्या aware पिट? of it. He picks off one. अगर The था defuse तो on मेरे the हिसाब way, से कर not लेना much चाहिए था time, यार, and क्योंकि अपना एक बंदा मर गया था ना ऊपर finally, जाके। a round win for Zeta ड्यूटिल Division. स्पैम पूरा। Yeah, it took What are the everything odds that seemingly this to get becomes one 30? in the books. The Reckoning able to help out a little bit, but Depp really clean with some of those op shots. Peeking some angles, we're Team Secret, and Depp instantly punishing them. अरे मतलब हमारा कोई एपेक रीजन से And it's बंदा a नहीं good होगा क्या rotation call एफएनसी early में here जैसे? for Zeta as वो well. लोग क्यों अपने यहाँ से You're the only इंपोर्ट one करेंगे? on उनके site यहाँ पे initially able to find a good first kill, but on their Maybe, horse अभी तो were three Fnatic का other members, पांचों- leaving just Fnatic last के पांचों behind प्लेयर at the A अलग-अलग site. The कंट्री other से हैं, three तो well on their पता way नहीं, OP अच्छा early ही to करता get है, there to ओवरऑल try अच्छा to ही punish खेलता है this. वो। So there was plenty of time on the clock there. वो You can अभी see भी they देखो were 14 comfortable किल थे, enough बाकी to, टीम of course, 5-5 swap 3 it 2। around a little bit, make sure everybody, or make sure they knew who they wanted to have their ult orbs and that kind of thing. And that's encouraging for Zeta, but is it too little, too late? And yeah, they are better on their, or at least they were better on their attacker side versus GE, but who knows if that's going to matter. The tailwind in from Zeta Jeremy. feels the Once again, karma. pace picked up. That's going to force step out, and Jeremy's waiting for a repick up high. Not बोल sure रहा how हूँ he catches भाई, that kill so कुछ भी करेंगे quickly, ये लोग, but sends him flying back down to the कुछ नहीं ground. हो पाएगा। And with that Sage Wall, once again, another easy plan for Team लैंग्वेज Secret. बैरियर नहीं होगा, I mean, नहीं this सब लोग इंग्लिश composition, फॉर्म्स it करते हैं has भाई। its very strict strengths. As Zero finally gets the long-range kill with the Mostly- Vandal. It's the Vandal for Hero this time, चलो getting that मैं headshot. They know he's close, बोलना नहीं but he's चाहता। not quite sure of that member in the Poison Cloud. The Shock Dart goes in, and it will find Jesse Vash. Thorough is Hero Ron, as he's clear to yellow, now wrapping निकलता है around क्या round? against the निकलता है enemies. क्या round? 2v2, NDG solo. He knows the location of Envy, but he doesn't have, he doesn't finish the kill, and it's just enough. I love it, ऐसे हारो, Envy तड़प will तड़प के swing हारो। around. Oh, that's क्राउड कोई That's टीम heartbreaking. Thought he had the spray and pulled off of it to check, knowing that there was going to be another player over in green, and just didn't actually quite have it. A little tough sometimes. आइस and बॉक्स ओनली मैप जिसमें yeah, सेज they इज got वायबल, the ऐसा नहीं thing है। still on depth. I think PRX maybe वाले he सनसेट thought it में was सेज already खेल रहे gonna थे be परसों। done, and he went and tried to go back up. I'm डिपेंड not करता है exactly टीम sure. पे, Might have स्प्लिट been पे that पहले time वायबल था, coming out. That है ना? actually, ऐसा नहीं है। you could be right. Yeah, Yeah, right above the screen. I Deb probably thought he was safe from the toxic screen. Yeah, because he got डिपेंड pinged by करता the है, drone कुछ earlier. टीम्स लोटस पे भी Backed खेलती off. हैं। Thought he would be safe, and he wasn't. Jesse's so smart with his utility. and- Don't cheer me. I mean, Team Secret at this point, the entirety of the squad on stage is just, they've built all the momentum, and they are letting it out in this fast-paced game of Valorant. Well, you're DG. seeing. Oh, I mean, surviving that alone. jeez, dude. I mean, that's huge. Keeps them tied up. They भाई, have to भाई, worry about भाई। NDG on the flank. Spike's been planted. They will all run out. And सपने में भी नहीं जीत सकते ये राउंड जेटा वाले, And he even सपने में भी catches the नहीं। tail end. Euron goes down, Pit is up, NDG still a menace in mid. Eventually gets taken down by Depp, but Depp's the only अंदर से one बहुत who's खुशी हो been रही putting जेटा को up आते these देख। kills for Zeta Division. 11-1 scoreline for Team Secret. An absolute dismantling on their first map so far. Once again, be unreal to think that there's any world where Zeta is going to be able to come back into this. Yeah, again, against GE, better on their attacker side than their defender side. But I'm not sure it's this good. I'm not sure it's, you know, potentially just rattling 12 rounds in a row off or something like that. But Yeah, I mean, it's भाई कोई this is a कैप्सूल big लेने वाला है part क्या? of- It's not even that they're getting trades back and forth, right? I mean, if you look at the overall KD, Secret's just surviving. I mean, they are able to just, after that initial trade, it's just one PG trade का भी back and अच्छा forth, है। and then Secret wins the rest of the duels. And it feels like Zeta is just not ever able to get into the positions that they're comfortable with. yeah, no doubt. They're not really winning any of अब their विराम opening कभी कभी क्या duels. होता है ना They're कि getting आपका beat, प्ले स्टाइल in open किसी टीम के trades. अगेंस्ट नहीं Often चलता है, they're या getting क्या read फिर like उनका प्ले books. स्टाइल आपके अगेंस्ट You know, अच्छा चल जाता NDG है, is समझ doing रहे a हो? great job controlling that middle part of the map, making sure that any lurks or any flanks from the side of Zeta were basically जैसे contained जी and dealt ब्लीड with. के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेली थी, Jesse अब ब्लीड stealing वाले some great नहीं util. कर पा रहे होंगे कोप अप उनके There's प्ले स्टाइल not a से, lot else to तो वो say other than कंसिस्टेंसी जब आती है ना कि आप हर Team टीम के अगेंस्ट Secret अच्छा is, परफॉर्म करते हो, तब आप a team आगे to be जाते feared हो। on जी this के map. दिखा दो There's a reason स्क्रीन, nobody एक मिनट wanted to दिखा play दो, him on this है ना? map so far until now, until आप today. जो भी टीम देख लो, Gen G was able मैं to लूंगा। just आप लेने वाले हो barely क्या beat PRX them. का? भाई But, अपने डॉक्टर की यूनिफॉर्म की Zeta पहनी is है, डॉक्टर हो क्योंकि मैं completely खेल जाए, befuddled right now. डॉक्टर हूँ मैं, Yeah, Warburg पागलों का slowed इलाज down a करता little हूँ। there as well, as it looked like करवाना है his monitor आपको? just flickered for a second, but looks like everything Play is back style in normal. makes And now, games. just 2 rounds away from the first map win,
जी का दिखा रहा हूँ मैच खत्म होने के बाद दिखाता हूँ खत्म होने वाला है बस तो कभी कभी होता है क्योंकि हम दोनों बार जेटा के अगेंस्ट नहीं जीत पाए तो जेटा का प्ले स्टाइल हम नहीं काउंटर कर पाए थे कुछ तो रीजन होगा वैसा है ना जो भी टीम मास्टर्स या फिर जो भी चैंपियंस टीम है ना वो कंसिस्टेंटली अच्छा खेलती तभी जीती फर्स्ट मास्टर से स्टार्ट करते फर्स्ट मास्टर जीती थी सेंटिनल्स हर टीम को वाइपर मॉली डाली थी क्या We saw the assist from Borkum. I mean, these lineups, see it on Breeze, Icebox, the Sneak Bite, Shock Dart combos are deadly. It's just ridiculous. भाई मेरे को एक बार 2 किल मिले थे शॉक डार्ट से राउंड के स्टार्ट होते ही उसमें स्नेक बाइट के अंदर भाई बहुत डेंजर होता है भाई स्नेक वल्नरेबल है यार बहुत भाई हटाओ यार वाइपर मॉली का वल्नरेबल हटाओ यार just dagger in you if you're Zeta, that's just going to be in your mind the rest of that round. Like, they're reading us so well right now. Exactly. What can we do? And the fact that you're buying that on the pistol round, you're committing the 200 creds just for that potential early kill. And it gets depth. Exactly. That's the biggest part, right? I mean, you can't really force your way into the site, especially on the pistol round. No cove available for Sugar Zero. So they're going to have to fight their way into the site. The question is... Yes, Abhiram. Let's not calculate that now. Let's watch the match. Let's enjoy the match, and we'll find out that later. Who's going through to the playoffs? Doesn't have enough bullets to finish the kill. Sugar Zero barely getting out with his life. Spike goes down long range for Jesse Vash. ये round भी गया. In time, Cascade comes out. He's ready. ये round भी गया. ये round भी गया. बोल रहा हूँ उसने सेज को कुछ करने भी नहीं दिया. IGL जेसी वैश है कि बोरकम है कौन है भाई? क्या बोलते रहते हैं भाई लोग बार-बार लगा. वाइपर इज गोना Didn't need much time to recover, to recuperate. That was वाइपर इतनी बार नर्फ हो चुका है ना फिर भी वो ओवर पावर्ड है भाई. पहले का वाइपर तो अनोइंग था भाई मतलब वाइपर ले लो लाइनअप कर दो रैंक अप. अब तो वाइपर फिर भी थोड़ा नर्फ करके ऐसा हुआ है. Yeah, just unreal from Jesse there. Really glad to see वाइपर ऑलरेडी काफी नर्फ है. नहीं उसको लेकिन प्रॉपर नर्फ नहीं करते हैं यार ये लोग. जो ढंग का नर्फ जो उसको देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं लोग. दूर रहो मेरी वाइपर से. जेसी वैश तो आपके जैसा सोवा खेलता है. जेसी वैश बहुत अच्छा सोवा खेलता है वैसे वो बहुत अच्छा सोवा खेलता है. Now that I think I don't like the agent bro. I mean I don't enjoy playing Viper. Such a boring agent. भाई ये प्लेन्स का फॉर्मेट समझा दो ना यार थोड़ा. प्लेन्स में जो भी टीम जीतेगी वो प्लेऑफ्स में जाएगी. अभी ये मैच है उसके बाद वाला एक और मैच है. वो सारे मैच देखो एंड में आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि कौन टीम प्लेऑफ्स में जा रही है. अब उसमें फॉर्मेट समझने की जरूरत नहीं है कुछ. राउंड रॉबिन हो रहा है. तीनों टीम एक दूसरे के सामने खेलेंगी बस. और हील भी कर दिया. और पिक करने की जरूरत नहीं जेरेमी. पर आपको क्या फर्क पड़ता है. ये तो ले गया इसको भी. एस एंड जीजी. Well, blink and you miss it map. I mean, just 13-1 doesn't get much more dominant than that. Team Secret, they are in control the whole darn way. जेरेमी की जर्सी पे GREME लिखा है पर इन गेम उसने GREMY लिखा है. टोटका करवाया. पंडित जी से पूछ के आया. पंडित जी से पूछ के आया होगा. पंडित जी मेरे से बंदे नहीं मरते मैं क्या करूं. कह रहा है अपने नाम में वाई हटा के ई कर दो. Just got to stay in the zone at this point for Team Secret. Meanwhile, for Zeta Division, Dep just try to keep up a smile, right? I mean, especially with maps like that, you just got to forget and move on, because what is there to break down other than we lost literally every single gunfight? Exactly, and you'll see all the time that teams will bounce back from rough games like this, all the time. Well, we'll see if Zeta can do it. They've been there before. See what the Dep thinks of this quick map on Icebox. What do we think? What do we think? I think like the pineapple power is back. Laban Piñas. Look at that insta heal. That is correct, bro. Every Sage player should do that. When I play Sky, when I play Sky, I immediately heal my teammates, even if they don't ask for it, because on top of your screen you can see how damaged your teammates are. You just go and heal them.
As a Sky, that is your job. Is what I feel. Finisher नहीं है. Bundle है 2K. कौन सी टीम की चाहिए? कौन सी मतलब क्या एक ही लेंगे भाई और कुछ नहीं, इतना पैसा नहीं डालना भाई गेम में. एक ले लेंगे मैक्स टू मैक्स, वो भी नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा. फनाटिक का एक लेंगे, वो नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा. सोच रहा हूँ इंस्टा पे एक रील डाल दूं. Will buy Fanatics capsule if their official play page comments on my reel. ऐसा कुछ डाल दो क्या? अभी क्या बोलते हो? एक रील बनाते हैं, एक रील बनाते हैं इंस्टा पे. आजकल ऐसी रील चल रही है कमेंट कराने वाली. Something's just doesn't feel right. Like everyone else can't follow in. बोलो अभी लाइव रिकॉर्ड करके डालूंगा अगर तुम लोग हाँ बोल दोगे तो. The world that they are dominant on Icebox, even though you haven't seen it for a while, but hey, it was really close against Genji just now, and now this is, I think, the biggest. We were talking about it, the biggest. अगर TS चाहती लोटस आराम से जीत सकती थी, लेकिन लास्ट में गंदा वाला थ्रो किया. वेट यार, मैं ना पहले वो करूँगा. मेरे को चेक करना पड़ेगा. मैं रिकॉर्ड करके मेरी आवाज़ चेक करूँगा क्योंकि मेरा गला ठीक नहीं है ना. डाल रहा हूँ. Indy wasn't able to really set up his walls as confidently as he was able to do in this one. Again, as Mark was mentioning, because of the चलो कोई बात नहीं. executions and stuff, the setups that Team Secret did, and because of that, Borgum's wall, yada yada yada, I know. Zeta was forced to push into the utilities of Secret every single time, never really having solid foothold to work with. And you saw that with the Viper pit that Borgum did, right? Depp was looking everywhere, hoping that maybe somebody from Secret peeks out, but no, Secret was just so contained in playing in their own zone that they couldn't really be bothered. If Fanatics official Valorant Instagram page comments on this reel, I will purchase the capsule immediately. ऐसा कुछ तो डाल सोच रहा हूँ. हेलो जी, हो गया फाइनली इंग्लिश का पेपर. नाउ 1 month फ्री टाइम. हेलो मानव भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम. एग्जाम खत्म होने की खुशी में एक मेंबरशिप गिफ्ट. Yes, that's right. I mean, I think they had a lot of problems, and the only time Zeta got that one win was when Team Secret overheated on round 10, and they just charged in. I think it was NDG who was just going up into up the ropes and just like he was there before Jeremy was even there, and that was the only time they lost. But I also remember this round following immediately after, like, okay, Zeta's got their momentum now. But no, Hiroran, he did a pretty cool shock dart on Jesse Bash of all people, which was kind of like, oh, kind of cool. But then he whiffs, and it's almost like he knows, and I think this is where inexperience comes in. He knows how important it is to get Envy, and he's got this perfect shot behind him, and Envy turns around and manages to kill the last two remaining Zeta players. Yeah, just to add to that as well, we're looking at Envy, sorry, not Envy, but Jeremy, that has got so much impact in this game. I'm looking at the stats real quick, and he's got 2 kills for the most part. So he's been able to string so many of these rounds to start with that, again, you just see it. How do you say this? कितने टेक लेने पड़ेंगे पता नहीं यार. मैंने तो बोला ही नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी. पहले प्रैक्टिस कर लो क्या. If Fanatics official Instagram page comments on this reel, I will buy VCT X Fanatic team capsule. ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा ना. वो करूँगा एक दिन. न्यूमा वेजी भाई टीम कैप्सूल खरीदेंगे. अभी खरीदा नहीं. आपकी फेवरेट वैंडल एंड फैंटम स्किन कौन सी है? कोई सी भी स्किन अच्छी नहीं लगती है भाई. डोंट से इट आउट लाउड. मतलब राइट इट एज एन ओवरले ऑन द वीडियो. वो भी करेंगे. मतलब रुको यार, फिर मैं देखता हूँ ऑलरेडी जो. अच्छा, सिर्फ ओवरले डालूँ क्या? रुको फिर मैं देख लेता हूँ बाकी लोग कैसे डालते हैं ये रील्स. हाँ, बोलना नहीं है. सिर्फ टेक्स्ट होगा, बोलना नहीं है. फनाटिक की लेगा ना. अगर लूंगा तो फनाटिक की, या एक भी नहीं लूंगा. ठीक है.
के लिए वीडियो बनाओ ना, स्प्लिट की बना दो क्या यार, डालनी है वीडियोस, पता है यार अभी मैंने कुछ एक हफ्ते से वीडियो पोस्ट नहीं करी है। पुट सम फनी बैकग्राउंड म्यूजिक गाइस, प्लीज सजेस्ट कर दो क्या म्यूजिक कौन सा डाले। रिकॉर्ड तो मैंने कर लिया है। कितना अच्छा आइडिया था ना ये। Playing the duelist at the time, he was on a Raze. Didn't work out too well. I guess we can see that. They did play Ascent again during kickoffs right now against T1, and they did win, but it was a 13-11. Yes, of course, it's the classic composition we all know. Sky is blue, nothing's new, but it feels a bit labored. And if Team Secret is prepared for that, if Team Secret knows how to work that defense against a team like Zeta Division, I don't feel good right now. I mean, if they go in with the same नेक्स्ट मैच कौन सा है? strategy, अभी सेकंड they मैप wouldn't होगा। buy आप skills वैलोरेंट usually पॉइंट्स किस stay वेबसाइट with, से लेते हैं या फिर contact इन-गेम place. लेकिन वेबसाइट? मैं यूनिबिन से लेता I हूं don't know भाई। how that's going to be working for them on Ascent. Zeta surely would be more prepared. Again, we do have a very different Zeta division this year. While both teams have their core there, their core like, lead two players, I would say Zeta is still adapted more. They've changed more coming into this kickoff, whereas Secret is still Secret. And Secret has always been strong. मैंने देखा है बाकी लोगों की रील्स देख रहा हूं मैं, वो लोग कैसे डालते हैं, surely तो at this point उनमें have क्या some बोलते हैं, ideas on how उसमें to ये नहीं होता, counter Team Secret. टेक्स्ट टू स्पीच नहीं करे वो लोग, सिर्फ एक म्यूजिक डालते हैं और टेक्स्ट डालते हैं बस। The rawness of some of the newer pickups for both of the teams. Again, I was mentioning how it just feels like maybe NDG is that player that's a bit too still, pink in the middle in a sense. But this game that he has, you look at the highlights here, he's been like out fragging. He looks a lot happier. Abhiram, Passion Fruit by Drake is my favorite Drake song, brother. I will never get bored of that song ever in my life. That is my favorite Drake song. Flying around इस बात पे सुन so लेते he हैं, just like कॉपीराइट तो नहीं लगेगा? immediately got his crosshair locked into where the audio cues were from that as Dem was coming into that Viper pit. But yeah, I think one of the things right now that we have to look at for Ascent मैं सोच रहा कोई आईडी बाय कर लो since this इंस्टाग्राम is के going to सेलर be से that ले लो mirror क्या? comp. यहाँ पे मत Unless पूछो there's like, अकाउंट बाय और I सेल don't think करने these का, two teams वो that are very मॉड much टाइम आउट set देता in है their भाई। ways and their strats will चैट change में up कोई भी comps. खरीदने बेचने की बातें नहीं मिल रही, अकाउंट सेलिंग और बाइंग। It's going to be a battle, I think, between of how efficient the Odin threats are between Euron and Jesse Bash. Both of them have really shown that in the matches that they played previously on Ascent here in Kickoff. अभिराम भाई, But, I mean, शायद पहली या would you दूसरी buy बार your आपने friend जिंदगी में an कोई Odin अच्छी बात because लिखी that's चैट में, asking for शायद friend? शायद दूसरी बार है, एक बार पहले भी कुछ ढंग का लिखा था About आपने। that. I mean, Look, I didn't make the questions it's for the not audience. just friend, it's teammate and pro. And चलो pro passion fruit डाल as a देते pro हैं। player, all right? भाई ने बोला करने Completely का तो करना। different, you know, sorry. situation. Sorry नहीं Secret, बोल रहा, they're all sorry friends नहीं with each other. I do want to say, right, although you could talk about the Odin plays, the bigger thing for me right now is just Team Secret's attack looks really good, but because this was Zeta's pick, they are starting out defense. All right. Thank you so much. We मुझे are पता going नहीं to था go कि एक into our फैनेटिक फैन भी second अच्छी बात game. एक Ascent is सेंटिनल going to फैन be भी अच्छी another बात कर, I love don't on know if you should Pinya's take that as a favorite thin compliment or and not. Will. मुझे नहीं पता था कि एक फैनेटिक सेंटिनल्स फैन भी सेंसिबल बात कर सकता है, अच्छी बात कर सकता है, उसकी चॉइस अच्छी भी हो सकती है क्या? That break probably just wasn't long enough for Zeta to wrap their mind around it. We were talking about it during the break, and it almost, T-Secret almost really made it look like Zeta was as slow as they were last year. No doubt. It didn't feel like the Zeta we've seen so far in 2024. So over to Ascent, a map where actually last year, believe it or not, a map that Zeta liked a lot last year and had some success on, that Team Secret beat them on both times they played. Backhanded so compliments. This is going to be असल में आपने सेम कॉम मैं तो for sure मेरा तो for मन ही Zeta उतर the गया rest of भाई, the way देखने का through मन ही नहीं today. कर रहा। And to make matters worse, like the desk was just mentioning, it is Zeta on the attacker side first, which is usually the harder side of this map. Yes, yeah, especially in pro play. I mean, it's one of the maps that's been as consistent as possible in terms of which side is slightly favored at the pro level. But like you said, it is a comfort pick for both Zeta and Team Secret. Now, Talon did defeat them, crushed them in the very first match, but of course, Secret bounced right back. So Zeta cannot underestimate their opponents as they get ready for a site execute. Recon going to go through the spam to keep him tied up on the site, right up on top of Quad. Has to drop down due to the paranoia, and the flash is perfect, but it's going to be the trade from Envy. Site still taken over by Zeta as they have a perfect swing out from main. Yeah, a great time push here out of the main door. NDG going to swap to that Ghost, has to clear the turret as well. Drone making it hard for him. He's just going to drop down, but he's taken out. Jesse, though, responds. Yeah,
Uran quite low, and Sugar Zero takes the first contact. It's going to be just enough health for Uran to also pop out. And it will be the spike planted as well as Zeta. I mean, as good of a start as you could hope for. Yeah, and seeing some things here that we didn't really see too much of on the previous map, where there's some teamwork here. I mean, everybody's kind of, look at that. They're all looking at different angles. They're all covering their bases where they need to be going. And that's good news here. Obviously, Zeta already picking up a win against T1, which is a very strong team already in the playoffs. So certainly a much-needed start. Some Bulldogs, a Vandal, and that Ghost for Laz. Yeah, and it's just going to be a bit of a shorty trap setup. No, eventually switch back to the classic actually for Jeremy. Over by Tree. And they will just wait. Has a fair good inkling that it's going to be that A hit, but Zeta, they have the weapon advantages. They don't want to rush anything. They're still waiting for any sort of lurk out of B at the same time. Wants this information. Depp, if he's tasked with having to go through on his own, this could be a rifle drop. Zeta has to be very cautious. I am a little concerned given their position because it looks like they do want to send him in on his own. He will get picked off, and now Zeta has to fight to keep control of that dropped rifle. Yeah, this is really, really tough. Jesse was also bouncing a shock dart and anticipating that timing so well. That knife gonna delay any more utility from Jesse, but Zeta doesn't really feel like they have any options to get through this site. They feel like there's too much pressure here, and they're gonna just have to let that rifle go, it looks like. Well, Team Secret just going to hold on to that position. Does look like Sugar Zero might have picked it up right on that shadow step. So just trying to make sure I get the weaponry, make sure we still have the firepower lead, and try to overpower where it should be weaker. Obviously, there could have been a gamble for Team Secret, but it doesn't look like it. It's just going to be a hold at mid doors of Market. Uran tasked with holding that site. Trying to make sure there's no early backup. The Nano Swarm gives him an idea that there is one member at Market. 10 seconds left. Spike Great planted. shock dart, so much damage done. Phenomenal. Yeah. Just swapping of a couple of those pistols, trying to get the best chance they can. Team Secret, they're just चलो gonna रील डाल रहा हूँ जरा उस पे कमेंट करके टैग कर देना फनाटिक के पेज को और स्टोरी भी डाल देना अगर कोई शेयर करना चाहता है तो A nice job there. रील पोस्ट हो रही है by रुक Zeta. जाओ 2 मिनट है Able ना to recover that rifle even. Looks like they might not be able to get it to it, but like you said, Sugar Zero stepping in and out. Gonna find the ability to keep things in check here for Zeta. So already finding more round wins here on Ascent than they did on Icebox. Our Zeta. Yeah. I mean, it just do be like that. Yeah, it's brutal, but it's a fact. Yep. But, I mean, things are looking a little bit better. It's a good read to pull off on that contact. You know, too much utility there. But Jesse there as well with that Sova. That gave them real problems on Icebox. So I imagine that's going to be something they want to try to avoid, is that impeccable timing of Jesse's Sova utility that he's so well known for, so renowned for. Now the one-way will be dissipating. And Zeta, once again, going to be seeing if they can find purchase on the A site. Yeah, and because they see no one working off of that one-way, Zeta just wants to what push a up the flash. tempo. They're doing the same thing Team Secret did to them, but Envy's ready for Will I it. do He block eventually if gets I traded tag- out. They haven't tag found Borkum, Sentinel? takes him No, down, no, left at 30 HP. भाई मैं फोर्स थोड़ी With करता the हूँ आपको ghost, सेंटिनल्स everybody picked down मतलब so कुछ और low करने as के Jeremy लिए gets the आपको spray अच्छी down. लगती He है आप cannot सपोर्ट करो stabilize यार for मैं the तो मस्ती third, करता हूँ but आपके साथ Jesse अभी Bash is already on the ground. Well, there it is again. Jesse finds the perfect timing on a recon dart, spots everybody that's left on Zeta. It's a great push there, great execute from Zeta to get some space. Sugar Zero able to clear that space. That's a really nice combo there. The flash lands right as the recon dart is, so it makes it hard for Borkum to clear it behind Dice. पोस्ट नहीं हुआ क्या बस But हो still, रहा है वो I mean, Jesse's just, he's on it right now. Yeah, He I is. mean, the backup was there. And Zeta, sure, they tried to push up the tempo, and yes, it was a bonus, so take out a couple weapons. Sure, maybe they could try to be happy about that, but given the round differential, I don't think Zeta's going to be satisfied with anything but a clean match win. Oh my God. It's going to be a fast push out, but it's not exactly a tower scorch, but Jeremy somehow gets to swing around with that extra flash coming in from Envy. The support is impeccable. Now stuck on an island. Team Secret has to choose to fight here. Jeremy is going to get surrounded. Depp trying to get the kill, but the parry Bro, is good. Jeremy's still alive Jeremy. for a second. And they just क्या cannot होल्ड कर रहा है clear इसमें him out अभी just तक yet. जिंदा है Sure, यार they take out the backup. ये जाएगा Now everybody out for B main. Jeremy's not the main बैकअप आया threat. था It's नाइस Jesse वन Bash from behind. Jeremy ओह fighting for his life. जैसी And नाइस somehow ट्रेड्स यार बट this यार round जेरेमी is को एक now किल a मिलना चाहिए था वहाँ पे 1v1 और in mid. Some great trades back and forth.
And Hiroron does get the last kill. I mean, barely scraping away the round win. Life in a slide, it doesn't, bro. But if you want to find your right sensitivity, start with the sensi, which is like in the middle, not very high, not very low. You go for either 0.35 on 800 DPI or 0.4 on 800 DPI. And if you feel that it is too high for your aiming style or very too low, then you shift around and then you find your sensi. Don't like give it some time. Don't rush into finding your sensitivity. Give it some time and then stick to it. No matter what, stick to it. There you will meet people who will say, "Oh, that's too high, bro. Switch to low sensi. It is for accuracy, low sensi is better." Don't listen to anyone. Don't change your crosshair. Don't change your sensi. It will not make your game better. चैतन्य हरामजादा आके ओके लिख रहा है, हंस रहा है. चैतन्य मेरी जल्दी से इंस्टाग्राम रील पे फनाटिक को टैग कर दे. मैंने एक रील डाली है. Yeah, Hiroron launching a flash into there even. Instagram might have helped him just a little bit in that fight. Oh, and a miss that chaos. Zeta, they've prepped all 5 members for a execute onto the B site. Still quite a bit of time left, so they can take it. I mean, sure, they don't have any information on A, but ऐसे हरामी दोस्त मत रखना भाई, ये चैतन्य जैसे. Oh lol, डेप भाई कल आना. Oh, NGD. Once again, a 1v1. There's just something about Team Secret's killjoys as they come out of market, getting these multi-kills. Borkum with a paranoia, just trying to cut that noise. Does have the Vandal, he hears the weapon swap. Laz has an idea, but he doesn't have the plant just yet, wants to stick it. Borkum going to peek out at the last second, he knows he's stuck, but Laz will swing out and win the 1v1. Wow, wow, wow. It's hard to play it much better. Hello, Enemy, welcome to the stream. Good afternoon, brother. कैसा हुआ पेपर आपका? They were so smart on that round. And again, it's concerning for Zeta because they don't seem to recognize quickly here. It seems like their comms are a little bit off today. You know, that hidden position of NDG. A lot of times it's Borkum lurking in that cubby. Team Secret really likes that spot. That's something that Zeta has to be aware of going forward. Now, Jeremy with the Blade Storm is going to cut funds, so just rely on that ult. Rifles otherwise. System hang कर दो भाई इस reel पे 1000 comment कर दो भाई. One away from the lockdown is Laz. This could play for an orb. Good play to try to get that to at least force out potentially that Hunter's Fury. Well, they're just gonna really bump it up. Zeta, again, just sticking with that same mantra. The Hunter's Fury tries to keep them tied up at market. He gets the first tag. They're barely surviving onto the sentry. Now on the site, but haven't quite cleared it just yet. Laz, meanwhile, keeping mid-control, but that's not an option to exit the site just yet. A 1-for-1 trade. NDG staying alive, Fragment a little bit off. And now we have backup from Jeremy. He's gonna rise up, but he gets gunned down by Hiroron from below. NDG cannot follow through on the spray. The tracking just not there to the wall. And of course the Odins, the desk mentioned it, and Euron's the first one to bring it out. And now Envy all alone. If he can find Laz, there might Hi David, buddy, welcome to the stream. Bye. Just a tip, you should spam more hashtags for reach on Instagram. Trying to take that कुछ नहीं advantage होता that they भाई. don't know his location. He finds Euron. Now prepared for the wraparound from Laz. Yeah, I mean Laz anticipating maybe he was in a different spot. Life in a slide, bro. मैंने इतना बड़ा lecture दिया अभी. अरे यार, मैंने इतना बड़ा explanation दिया था यार, आपने सुना नहीं क्या? थोड़ा सा पीछे करके देखो भाई. Okay. उतना बड़ा वापस नहीं बोल पाऊंगा मैं. मेरा गला ठीक नहीं आ जाता. Now they've built up a ton of ults in rotation, so they have a really good opportunity to steal another one away from Team Secret. You got the lockdown without the Hunter's Fury. It was drawn out there with that no command coming through. Jesse Vash felt like he had to pull the trigger Secret on निकाल it देगी ये मैप before ऐसा it लग रहा है got मुझे. close enough to him that he had no other options with his utility. Secret निकाल Trying देगी to भाई just ये buy मैप. some time and space, hoping that somehow ये तो आयर लैग हो रहा maybe है you भाई. can fish out a kill. He's good enough that he gets at least the tag. Depp has to use that dash. Try to get over it. I don't know how Depp got that one kill. He was already so beat up. He was at 45 health, took a shot of damage through the wall, still peeked out and got a kill before NDG got him. I mean, just knowing the mission, right? That you still have to just somehow break into the site, whether you're bait or whether you get the frag or not.
Depp continuing to smile again, something we're not quite used to seeing on stage here in Seoul. He's in a really good mood today. Yes, I mean overall throughout this kickoff, it just seems like whether it's मुझे तो ये their performance or कॉन्टेक्ट whether बोल it's होता the है, मुझे भी team होता है vibes यार, or पर क्या करें, communication, कोई टीम something एक्सपेरिमेंट ही has नहीं करना चाह रही revitalized है them. Same can't be said for Laz today though, as he एक्चुअली does feel the केओ के pressure of फ्लैशेस that बहुत अच्छे हैं just इस मैप पे, शायद crushing इसलिए लोग 13-1 स्टिक map करते loss हैं इस on कॉम्प Icebox. से. Yeah, we need some nices out of Laz. Yeah, we haven't heard a nice today. Exactly, we need that. And over the Nice. weaponry here for Team Okay. Secret, there is going to be the op. All in. Yeah, they've got enough cash for the next round that they can go for the half armor buys. So there's a Bucky in here as well. So somewhere. They are going for a hero operator. Well, it's worked on Achilles. Can it work on Zeta Division is a big question. It's going to be a setup for B main. Meanwhile, it's just default setup on A with the one-way. Now the op watching mid. We'll see if he finds any contact. This time Secret playing off of it. The paranoia, a little bit of a mismatch there from Borkum, and that means Secret will have to back अपनी off. पब्लिक किधर है भाई आज? सीक्रेट और जेटा का मैच देखने में इंटरेस्टेड नहीं है क्या लोग? It's not going to come to fruition. Zeta's still thinking about this. अरे even आज after all that EMA में क्या contact सीन है over यार? there. I mean, आज all और the कौन से utility मैचेस gone, हैं? right? Yeah. The paranoia not there to If, quite stop them. That's one of the heretics best are- ways to hold them up in the choke point. Of course, only one flash drive left. नावे for लिक्विड Envy. है, 6:30 बजे Zeta कल है seeming तो. to think that this is their chance to break open this A side. अरे अपना Obviously, इनकम मैच कब है? things can still go very sour, अमेरिका के as कॉस्ट we में do क्या have सीन है Borkum भाई? holding close with a stinger. मैचेस And now they haven't really given over much info, but now Jeremy मतलब आज is starting ठंडा to माहौल peek his है. way through mid. Hasn't यू की seen वॉच पार्टी anybody करोगे चैतन्य? crossing just yet. यू की Depp वॉच with the पार्टी blades, thinking about going somewhere, bouncing some utility. अच्छे into the मैचेस spawn. नहीं यार नमन, Might have been a अच्छे shocker मैचेस to है the नहीं. Yeah, alarm bot? the potential alarm bot. What I would like is they're just making noise. Stream right? like करो, Trying to कितने tell them likes that हुए they भाई? might have rotated, that they might pressure mid to make sure that they back away from the entrance of the 50 side. likes तो complete Borkum करा दो जल्दी somehow से. still staying alive, but he can't find the kill. The Hunter's Fury trying to find its target. Eventually it will, and that will be the site broken open. चलो जेटा अच्छा खेल रही है. trying their best to just avoid all casualties. Huron will go down, but that is भाई the जेटा spike रियली अच्छी planted. टीम है. अच्छी टीम में तभी वहाँ पे खेल रही है ना We'll भाई. stick it now. बिना अच्छे थोड़ी पहुँच जाते हैं I वहाँ पे. thought they were already singing it because you might as well have, but इमॉर्टल रैंक थोड़ी कोई पहुँच जाएगा. yes, I'm a little ahead of myself. ग्रुप स्टेज के बाद होंगे अच्छे मैचेस. हाँ. और वेज भाई We all कैसे know हो? it was हेलो आयुष, वेलकम टू द Let स्ट्रीम. me take मैं a अच्छा हूँ very दोस्त, आप bold कैसे हो? risk here and say they might even get the round win. Yeah, it's looking pretty good with a Bucky and an operator. I mean, the operator is just going to be saved, so NDG just going to go to try and do some damage. I mean, the thing डेप is, को मार दो, 6 there HP is उसको मार दो some एटलीस्ट. damage to Zeta's economy, so if you can get an extra kill here, Depp's only on 6 HP, so one pellet connects with him, and he's not feeling so good. But okay, well, Depp's just too good, too fast. Knives are stronger than guns. Everybody trusted the Valorant philosophy. Depp still on point. I mean, we got to remember, in that first map, I mean, seeing scores like that, right? Keeping up, competing for best ACS in a map where you only got one round win is absolutely nuts, regardless of impact of frags or not. I mean, Depp has been keeping up the energy here for Zeta Division. Yeah, throughout all year, he's been absolutely phenomenal. Just such a incredibly talented player across so many esports. He is truly कितने मैचेस तक मर्डर तो DRX the भी RX greatest जाएगी. from Japan to play FPS. I mean, he is out of this world. मैं यहाँ पे ऐसा बोल This सकता था year कि is भाई just another कुछ उल्टा सीधा. step in that direction. बट मैं खुद भी PRX DRX ही Love जाता the हूँ, way तो he's मैं played. चाहता नहीं हूँ कि मैं He's been कुछ one of my favorite, if not my favorite players to watch so far here in Pacific. Yeah, a lot of charm and कर्स aggression वर्स as well, लगा के something किसी that और obviously टीम was को always missing आगे from जाने के लिए Zeta बोलूँगी. Division. So now trying to back that up with the rookies Huron and Huron. We'll see if they can continue the lead. We see the buys on Team Secret. Operator, of course, saved over. Now Jesse will have to stick around with the Sheriff. But a couple else to play with. I mean, if there's a round that Team Secret can bounce back on, it has to be this one. But there is a risk taken. Borkum planted in wine, holding on to that paranoia, and Envy is ready to swing with it. How many teams? They 2 tried it teams last from each region qualify. Identified by Zeta and dealt with. Here again. another Teams to one-way get into smoke. grand Try finals to set up. from Teams are each coming down region From Zeta, they in flash right playoffs will underneath go it. to Nice Madrid. cute flash. Drone's still not used just yet, but Zeta's very wary of it. They want to just draw out all the utility. The 0 point pings 3, and that's the paranoia drawn out. That's exactly what Nice Zeta dodge, wanted. Now that utility's gone, they cannot use it to delay the push once again. And he has to from the shadows out as well. So much value lost. Backup has arrived though. Envy now watching Tree alongside Jesse Bash. It's going to be the null command, trying to make sure that the entry is just a tad bit slower through that smoke. NN EMA 3 teams. 9 Have सब जगह से 2 हैं. lockdown in play as well for NDG. He's China, starting to slide Pacific, over towards this EMEA side. Two और members of APAC Zeta सब trying to flank
through short A, 20 set up seconds. for the hit. Yeah, it's got to be fast. Yeah, now that the no command has ended, this is the moment. If they don't get the initial frags, it's going to be rough, and Envy gets the first kill. It's going to be the hold from NDG on Tree as well, and that is Finally more a good round from house. TS. Let's go. Zeta, the plague of the timer, catches them once again as they give the second round to Team Secret. South Asia Yeah, this is a great adjustment South here Asia from तो Team Apex Center आ Secret. गया भाई सब. A very similar look at the beginning of the round, but the follow-up this time is a heavier rotation towards A, expecting that. We showed the exact same thing. Paranoia flashes used early, and we're just gonna send Borkum back early, you know, right behind Dice. He's able to. Whoa, Borkum! All right. That is some fancy shooting there. Oh. And you're able to keep the lockdown as well. Exactly. Very important round. You have the lockdown. You now have the Odin in hand as well. You've basically got the full arsenal that you would want. Jeremy does have to give up mid position, but Alarm Bot's still there. It's pushed up a little bit, so Tep will have to shoot it out, giving away his position. Team Secret sending an aggressive drone, trying to regain control of mid. And during all of that, a push out of B main as well. Secret, now they are the aggressors, taking over so much map control in the first 30 seconds of this round. Yeah, let's see if Laz is ready for this. He's tucked himself behind the corner. Turret is cleared. He doesn't push off of that. And with Jeremy with an op, and he's got him! The timing, and you saw the ping as well. He was ready to swing. It's always just a little weird that a Phantom would solo push out of B main. And Laz has the read, the experience coming through, but the push not stopping for Zeta. Envy will cut off the backup with that fragment. They did hear the jet go through, though. I don't know if he has, and now he does. He's watching for Evan, trying to plant himself over in hell. Jesse Vash will hold on Tree, so keeping his teammate alive. KO hiding in the site. They haven't quite identified it. Dev finds him. He's low, but he finds one more kill. Another pop flash trying to land. The spike is now down. Laz tries to push him out, but he's already repositioned Laz with a nice flick around, but it's just not good enough. Sugar Zero, can you be the hero? Not this round. अगर डिसाइडर गया तो Zeta will win from surely. Team Secret. Envy winning such a ये लोग crucial Phantom battle. क्यों खेलते हैं? Depend करता है सबके Just अपने-अपने play waiting for style. Depth to drop down the whole time. सबका अपना-अपना play style होता है. Depth, when he drops, it's just a great re-peek. Jiggle there initially from Envy. Depth kind of pre-fires and isn't ready for the follow-up. Jesse there. Johnny on the spot with the Odin. Oh, and he catches the feed as the door is closing. That's rough. I mean, even after that, sure, the angles looks great. आयुष भाई exclamation mark CC डालोगे तो मेरा crosshair code ही मिल जाएगा. ये first map कब जीते TS वाले? 13-1 कर दिया गनर भाई, 13-1. You know, 6 rounds, Zeta already feeling like they had a decent start. They had such momentum, so it's going to be a timeout called as now Secret has stabilized everything from, you know, gun economy all the way to ult economy. Yeah, I think now you've got to start working a little bit towards the center of the map here for Zeta. They started out that round, but because they missed the initial clear on the alarm bot, it forced a dash out of Dep where he had to leave those stairs right in mid. And then they were kind of scratching their heads a little bit, thought, okay, well, Dep got so deep there that we got to try to go to A. We've got this great angle for him to set us up. But Team Secret was fine with it. They were prepared for it. They mentally had players ready, and that was able to be dealt with rather quickly. So nicely handled by Team Secret. Zeta now finally not able to come through with a full buy. Just sheriffs in hand. मैंने इंस्टा रील डाली, उस पे कमेंट कर दो सब लोग. पिन कर दो क्या कमेंट? मैं उसका लिंक. Fire back. It looks like they are just set for a B hit right off the rip. Ready for the spam through as well. You're at a bit of a different angle here for Jesse Vash, just trying to catch them off guard, trying to catch the bulk of them if it was a rush. So Secret seems to have a read. I mean, 3-man stack on B as well. The Nano Swarms to make sure they can't get in. The recon is on point and he's spraying down. Yeah, you can't come through here. This is way too risky, Deb. You might be the child of God, but you eventually are mortal here in Valorant. Good shock dart. That's going to be the shock dart. Pushes them away. And that's the कर दिया Hail Mary comment. shut down. अरे Fnatic Valorant को tag करना, Fnatic को मत करना सिर्फ. He's been spotted, but he gets one, gets two. And that will dwindle the numbers. Envy is ready. The Vandal's still in the hand of Dep. This crossfire. Envy's ready for it. He's able to stabilize, and that's just a round cleaned up. 4-6, good round. And what looked like a one-sided first half, no longer. Yeah, it's really good reads now. Good communication from Team Secret, anticipating the way that Zeta wants to work the map, the way that they want to अभिराम भाई इतना पर्सनल और हर्टफुल कमेंट करना जरूरी था क्या? नो ऑफेंस बोल के कुछ भी बोल दोगे क्या भाई? मुझे तो हर्ट हो गया ना. Exactly where they're going.
I am sad At now. that moment, you saw them crossing mid, and you can just line it up. Not much left for Zeta to do there. No, well, it's looking like a potential another crunch here, or at least faking it out for it. It's going to be the Odin, and that is so many people bunched up, not finding a kill, has to back out of the Nano Swarm. Thought he had a little bit room behind him, but now he's stuck. They know he's here. The smoke to try to survive, but Depp will just get the peak. An unfortunate death for Jesse Vash, but he did sprinkle a lot of damage onto Zeta Division Borkum. How much can he do? They're trying to find him, and Uran's ready for it. They heard the shadow step. It was a 50-50 already. Cross angles covered. Now you got to worry Guys, about like the stream 50 like complete karna jaldi se. NDG still sitting on this lockdown. He's had it for quite some time. Uran just got to pick Envy off, getting a little bit ahead of things. Well, surely the retake not able to find success. I mean, especially with the Jet being spotted. NDG will pick up the Odin. Now, they do have the creds to go for it, so we'll see. You gotta imagine that the lockdown will be saved up by NDG, but any damage you can do, Zeta very low on credits. Take away a couple guns, and that might be a weak last round of the first half. Jeremy's gonna go for the drop, and he finds the flick onto one, clears the other with the shorty. That allows NDG to enter into the site. Spike already ticking down, so Jeremy preparing to exit, but damage still trying to be done by NDG, and they'll find two more as well. That's already 3 weapons fraud for a Zeta Division. And Uran, can he get out in time? Jeremy's trying to run away with the op. Everyone will get home safely. And Jeremy, his back exposed. Eventually, he almost got the swing around there at the end. Jeez. Yeah, some nice attempts here from Jeremy and NDG. Put a lot of damage in. You saw the creds on Zeta not looking so good coming into this last round. I still think they'll be able to scrape together most of a buy, but it was a little bit dicey there towards the end. And yeah, you have to cut one gun away from Sugar Zero with just the Sheriff. Yeah, mostly still favoring the armors as well, so just going for that. Of course, half armor on Hero Run, but he's not the first line of entry. Lots of util. Trade right off the bat, and the pings are so good for Jeremy. The spray, double-edged shot. Now that wasn't the main force, but it's already 2 members down. No smokes for Zeta to defend on the post plan. They're going to activate the null command. They need to find whatever kills they can, but the KO goes down. Depp, 37 HP alone on the site, gets picked off. It's all down to Laz against 5 members. He finds the first, 4 more to go. The count is going. He's aware of the flank, but Jesse Vash wins it. And it will be a 5-7 stabilized half for Team Secret. Yeah, again, a great bounce back here for Team Secret once they started to kind of figure out and keep Zeta at bay and really mirror their movements, cut them off in rotation, things like that. Really started to turn this half around for them. Some great play calling, some great utility usage again from Jesse. I mean, that last round there is another Jesse special with that recon dart coming out into Gelato. The players out there are just stuck trying to dodge Jeremy. There's nothing they can do. It's being seen through those smokes. Hello. Well, the official broadcast here, the viewing party for Zeta Division. Regaining some joy, it looks like. Can't imagine it looked similar to that during the first map, but now in the lead in the first half. On Ascent, 7-5. Not the lead they were hoping for, given the dominant 6-1 lead they had, but they'll take whatever they can get at this point. Yeah, I mean, you'll always take a positive score coming off of your attacker's side. Now we got to see if Team Secret get some of those classic executes set up. I mean, again, my eyes are on that Sova of Jesse. He's having a ton of impact with his utility here. Is the rest of the team going to be able to get going behind him? Seen some good moments from Envy. Yeah, they're Orcum spray firing today. And like you said, I mean, a lot more utility impact today than some of the previous matches for Jesse Vash. Zeta Division also. खेलना चाहिए साइफर यार, बट वो किल जाएगी अल्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ना इसलिए. हाल तो मैं 9 पॉइंट के अल्ट के लिए पूरा 1-2 राउंड तो निकलते हैं उस अल्ट पे. साइफर की अल्ट 4 बार आ जाती है उतने में. ट्रैप्स भी इतने सेक्सी हैं. I'm wondering if this is like a fake towards long A, and maybe they cut through short, or excuse me, cut through mid and go maybe towards market or something. Could be trying to be aware of that potential mid push too, I would assume. So common for a lot of teams towards the end of last year. Pop flash into B main, they'll only find the turret, eventually clears it.
But that gives notice to Team मैं Secret that it's कॉलेज a में नहीं heavy भाई stack कॉलेज ARGB. खत्म हो You गई 3 heard the साल हो गए flash, you 4 heard the साल हो ghost, you heard the footsteps, and now it's the entirety of Team Secret entering onto the A site. They 5 stop साल to हो pop गए the nano swarms, waiting on tree, seeing if they can cut off the reinforcements. Main still smoked off. They have jumped up. It's just a matter of Zeta. Are you aware of it at the timing? Huron swings back around, but he cannot clean the main forces. And now, two members of Zeta hidden in L. They've been surrounded. They're going for the drop, and it's going to be Sugar Zero with a double. He has to go for the reload. भाई वो अकेला क्यों फाइट लिया? Reload on reverse. Borkum gets taken down much lower with the shock dart. Just trying to keep him stressed up. He's looking at the wrong angle. 22 HP versus 56. Just one right click is all it's going to take. Bro, Zeta, Uran, what are you doing? And Team Secret get the pistol. Oh boy. That was so close. Sugar Zero doing everything he can from hell to get Zeta back into that round. And I like the way that Uran uses his shock darts, never over peaking to give Borkum a chance to finish him off. Then it's just bring around the rosy trying to guess where players are. And Zeta kind of realizes it might be window. Zeta क्यों सपोर्ट कर रहा है भाई? सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा क्या इतना गंदा प्ले थोड़ी बनाने दूंगा भाई किसी को. क्या वो कहाँ देख के जा रहा है भाई ऐसे? तो जॉब करते हो? हाँ जी हाँ जी. हेलो मयंक राठी, वेलकम टू द स्ट्रीम. प्रथम भाई अभी मैच देखो, वो बाद में बात करेंगे. इंग्लिश बोर्ड सीरीज. He has to look forward as Zeta working with an eco, 2 sheriffs. They have been favoring a lot of these sheriff buys, whereas many of the teams have now kind of regressed back into just classics only to save up those creds. No doubt. And I think for Zeta, especially in the hands of a player like Depp, you're willing to give him a little bit of extra comfort, a little bit of extra room to pick up some kills, get some alt orbs flowing, get that incredible duelist potential he has going. Now, drone to check here for Team Secret, but all of Zeta is here. Maybe they can get something done. They're ready for it. Can they get a nice little peek out of the smoke, though? Trying to make sure they have an entryway, but the paranoia is going to keep them at bay. Now, there's still 2 members in the site. One waiting on market, trying for the reposition. Borkum gets 1. Huron staying alive in the back of sight. That should buy enough time. The paranoia for support, but NDG will clear him out. The remaining members of Zeta, they haven't quite gotten into the site yet. They have been spotted. The sprayed out gets 1. It's a trade for trade as Jeremy swings out, brings Depp down to 25, and that should... Okay, Jeremy. Hello, are you? A little bit of a performance, trying to let Depp know. Well, the 360. Oh boy. You don't see that every day in Valorant. That's a little trickier to pull off than in some other games. Wow. I mean, today was the battle of all the duelists who have been topping the power rankings with all the stats and all of our own votes as well. And, you know, Jeremy just says... Hello, Yokai bhai. Welcome back. Doesn't matter what experience you have Stream on like here. कर दो सब लोग. Yeah, it's just... What a show. So funny. I love it. I just love that stuff. That's just phenomenal from Jeremy. You can see the confidence now for Team Secret. Right back in it. Dart to check. The rest of Team Secret is going to be playing back. So Euron going to see if he can maybe get somebody towards the edge of the door with the shock dart. Not going to be home. And now that Outlaw beginning to maneuver its way in towards market to keep track of it. मैं लूंगा तो फनाटिक का लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा प्रथम भाई. इंस्टाग्राम पे रील डालिए कभी जल्दी, उस पे कमेंट करके आओ सब लोग. मयंक भाई एग्जॉस्टेड हूँ थोड़ा सा और गला भी ठीक नहीं है. बॉडी पेन हो रहा है. अभिराम भाई पता नहीं, अभी कल परसों से चालू कर देंगे या तो शायद उनके अपडेट में तो आ गई होगी स्किन्स, बट पता नहीं. शायद उनमें पैच अपडेट आया नहीं होगा, अभी हो सकता है क्योंकि चेंबर में चेंजेस हो गए ना अभी. वो चेंबर के चेंजेस शायद अभी अलाउड नहीं होंगे इसमें, ऐसा कुछ तो हो सकता है. रीजन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता. Keeps Euron alive, the fragment, gives away his position just a bit, so he's going to have to reposition with a flash drive, trying to swing a bit wider. Wants that first contact. Euron will swing out on a timing from B as well. That's already forced TS. Ooh. Oh, it's forced their hand, absolutely, as they try to rush in. They haven't quite cleared the KO. Eventually, he goes down. 3 versus 2. Last kick it down. NDG, he's been quick with it. Sugar Zero shows himself with low HP. Another 1v1 here for Euron. This time it's against Envy. A long bounce. आगे देखा देखना ये यूरान फिर से आगेगा देखना अभी. Spike will go down. Euron's trying to hold the spray. He knows the exact location. He's trying to bait out the peak, and Envy's just too quick with the swing.
gets the edge shot, and Team Secret will overtake Zeta 8-7. Oh, well, this looked like it was going to be a solid round here for Zeta. Getting a lot of good reads on different parts of the map. I mean, Euron finding Jesse. You know, Hiroron doing his best here to get out of danger, get to a spot where he can pick up a good double. Let's fucking go, Jigs. But it's, yeah, they're ready, man. I mean, is Team Secret starting to feel that energy underneath them, starting to get their aim well established. It saw it on Icebox and it is right back in form after some rough rounds to begin, and it's Sheriff's Abound for Zeta Division here. Full Sheriff buy, and these, I mean, they haven't really been bringing home the results. Right, sure, their creds, you know, when you consider the half armors and everything and the loss streak, yeah, they can still buy up, but at a certain point, you have to wonder if you'd rather just have more powerful rounds come through, just not finding success. Stream like करो 50 lakhs complete करने जल्दी से. Yeah, it's a hard thing to gamble here, especially on a defender side. On Ascent, you're thinking, well, okay, we can sneak अभी मैं कॉफी बनाऊंगा ना, एकदम गरम hot coffee. We trust in our players to be able to pull off those snappy sheriff shots. We see it typically, but today so far, Zeta has looked a little bit off overall. Yeah, Depp is still Depp, but outside of that, we haven't seen the typical Laz, the typical Sugar Zero maybe we were hoping for. Well, we'll have to see it here as it is just going to be a आजू इतना बैठ के ना यार बॉडी दर्द करने लगती है. delay with the paranoia, but they do dodge it perfectly, and Jeremy's going to get the first dash in. He does find the target onto Hiroron. That's the switch cleared. One way to make sure they can all funnel in, and that smoke just about to pop open. भाई मैंने डेप के चेहरे पे एक एक्सप्रेशन नहीं देखा है 4 दिन से. वो ऐसे ही बैठा रहता है, जैसा बैठता है ना ऐसा ही रहता है पूरे टाइम भाई. NDG picks up yet another 9-7 lead, and Zeta Division, they're starting to run out of time. No doubt. And एक दिन ब्रेक लेकर स्ट्रीम an even better start than Zeta Division had. 4 in a row. इसीलिए खेलता नहीं हूं आजकल, सिर्फ वॉच पार्टी कर रहा हूं ना. Zeta got 2, वॉच पार्टी में मजा आता है यार देखने में. 4 in a row. Already 4 in a row now. लोग कम आ रहे हैं क्योंकि पता नहीं apparently लोगों को इंटरेस्ट नहीं बाकी टीम्स के मैच देखने में. वैसा होना नहीं चाहिए ऐसा, बट ठीक है क्या कर सकते हैं. He did in the last half. Love that null command. Both sides of the coin. Depp's going to be grabbing that operator. Yeah, the op is kind of the big part, but you have to imagine Team Secret probably just looking to avoid it as well with the ults you mentioned. You have to lock down the null command. Find side of Depp. Obviously, he's the superstar of Zeta Division. Just flip around to the other side of the map. Take flight. Right now, they're just doing a little bit of exploring of B main. That ball will way over on the other side. Expect the Sova to be over here. Laz trying to punish that a little bit, but only gets a little bit of damage into Jeremy. Shock dart to follow. अब इन्हें भाई delete कर दो message वो. That's going to slow down the entry just a bit. They do still have the lockdown. They're going to activate the null command as well. Make sure there's just no chance that the lockdown gets taken out by any other utility. Now the operator has arrived, and the spray comes through from Hiroron, but it's going to be a shot back from Jesse Vash. But Depp lined up on the cross angle. He gets chased down, but Borkum can't finish the kill. Only 2 members left for Team Secret. Make that one, and Borkum gets the spray on one. He dodges the pop flash, but Hiroron will swing out for 4. Yeah, so the setup here initially for Team Secret, popping both ults, gives you some space, but it doesn't clear that alley corner. And they don't use any utility to cover it. There's no smoke there, there's no flashes there, there's no mollies there, and that just turns it into a shooting gallery here for Zeta. It's either right on the outside of it. Sure, they use smokes to cover their side, but it's a lot more effective. The paranoia is a little bit late there. Borkum manages to squeak his way through, sure, but at that point it's basically round over. And that's just a little bit of a kind of leaves you wanting for Team Secret. How about that? Look at Depp. He's like, yeah, you're gonna jump up and over, aren't you? Yeah. Go ahead. I mean, if he does try for it, he'll be very well prepared. Now, didn't see it at the start of the round, so Depp starting to have his doubts. He'll change his sight lines down to the main entrance, repositions to make sure he's not taken out too easily. Of course, Odin on the other side as well, so Zeta Division just holding true with a 3-2 split. Alarmbot watching mid. And Team Secret trying to perhaps send this fake as the spike still awaiting right outside B, trying to hide from that drone. Yeah, this has gotten even Hiroron to shift over to the other side. And it's going to be, I think, just Jeremy going in off these flashes, trying to really sell it, like you said. And then see if they can maybe, oh, no. They're going to come back. Yeah, they're just going to back out. I mean, it does seem like the Odin spam just really shutting down any potential ideas. Now, they're still going to send the smoke into mid, but again, the alarm bot just not triggered. It will pull Hiroron back just a slight bit, especially with no one getting hit by the 0 point. Is that going to be enough
for Team Secret. 4 rifles and a blade storm. Jeremy, he makes his way in. The op doesn't find the first kill. Jeremy into paranoia, but he gets out just in time, and he's going to take out Huron. He's trying to going for the pop flash. NDG now on the site alongside his teammate Borkum. No, Sugar Zero with a quick swing around. Spike being held, and GG कर दिया will भाई ये answer round को. back. PS is back, baby. Shot to both sides, 2v1. What is that bounce? Well, I mean, it got the damage they needed. Laz wasn't quite ready for it, but he's been in this position before. Just waiting for the peek out, waiting for the impatience from Team Secret. You never know when a timing swing might happen. Tries to check for the jiggle. Holds close, but he's not going to get the kill onto Jesse Vash, who will bring Team Secret the 10th round win. What a push here for Team Secret. मेरे को लग रहा है मैं भी जेंजी सपोर्ट कर रहा हूँ. मैं भी चाहता हूँ जेंजी जीते. अच्छी टीम है This बहुत. is a team that used to scrim a lot against Korean squads. Did Team Secret back in the day, and that's got them kind of built into this team that can really dial up these phenomenal executes when they need to. I mean, Hirodon getting a little ambitious there, trying to go in for the big play. Sugar Zero. भाई इसने क्या पिक निकाला भाई सेकंड पिक. बहुत crucial pick. 3 big kills. But at the end of the day, Hello Govinda, it's welcome to the not stream. nearly enough. The combined firepower, Envy, Crisp to hold that short A angle, that makes it all but impossible for Laz unless he can pull off the artist there and go for that big play at the end. But not to be for Zeta Division, down 2 rounds and out of timeouts after this one. It took me a split second to understand what you said there about The pulling an artist? artist, and Yeah. then I realized it's because I wiped it from my memory with all the trauma that it caused. Yeah, us Pacific fans try not to remember that moment. Yeah, there are some great memories for Pacific, and then there are some traumatizing ones. But for now, Zeta, the future itself is looking bleak as well, as they might Is it to bait out staring util, get potential picks, 2-0 get information, loss, everything. which would really dwindle, if not completely snuff out their chance for play-ins just because of the potential for map differentials and round differentials as well. Yeah, But of course, this is a must-win for both teams. Yeah. It's crazy how close it is already, and I mean we knew it would be coming into today for sure. Zeta Japanese, yes. But the options start to dwindle here. Guys, Instagram reel पे for comment Zeta कर दो. Division. It makes it all that harder. योकाई भाई जल्दी से For Instagram Gen G reel and पे their comment कर next दो. match. Fnatic Valorant को You know, tag कर if देना. this is a 2-0, then they have And to it go looking yes good for as Team well. Secret. yeah, to make it even somewhat comparable, of course, the round differential, we won't even get to that, but a ये different बंदा setup here for तो Zeta. full The Killjoy patriotic हो रहा है भाई. पूरा coming over to Sakura, A to help buy some time. The turret will get first Vandal, contact. Sakura, Will Sheriff cause use कर रहा है. both nanoswarms to be popped, and then the 0 point to shut down the Blade Storm as well. Team Secret, they think they have a timing here, but it's only Jeremy in the site for now. They're funneling through. Uran comes up with the stinger, but it's just too long range. Step, can he get more than one? No. He will have to stop. 2v3. Oh gets the bro, second Depp is shot so on brave yaar. Jesse Bash. Now Blade Storm and a Sheriff 2v2. It's against the Vandals, but the spike is down. So Depp buys time for his teammate to regroup onto tree. Door was closed. So Huron's gonna have to reconsider that. I mean, this is this puts the fear into you, no matter who you are. When Depth starts hitting blades like that, with the speed and tenacity that he can go. I mean, if they start the stick and suddenly turns into a 2v1, he He avoids still the 0 has point as dash well. and He just wants to updraft. find a timing on the stick, but he won't get it. Now split Turret positions. बहुत बीटी देगा It's going to be NDG Depp going को. all the way far out, but the turret, yeah, you have छोड़ to take it दिया. out with the Sheriff, and now they know the positions of both members. The turret lets you know about that heaven position, and it's just a crossfire setup from Team Secret. I mean, this is all up to Depp. He has to fly high and find a kill. The fragment onto below on Hell, but he's not on that side. They're gonna have to dash in. Depp trying to create a wider angle. Time ticking down. He just does not. Spike find ढूंढ Team रहा है उधर Secret भाई. is Spike just वहाँ so प्लान नहीं patient किया. on this hold. They find one position. He needs to find whichever kill he can first, and NDG is just not letting go of it. The Vandal pickup, though, not something Secret expected. Time, he doesn't have it. He's just waiting for the last kill, and NDG will not give him that joy. Good round. Yeah, it's just, you could never find the comfort there to make that retake work, and that turret positioning really is what does it. It makes it so uncomfortable. The turret, the ultimate enemy of the blades. I mean, if knives beat guns, then turrets beat knives. Yeah, robots beat knives. Yeah, robots beat knives. It's a little rock, paper, scissors here in the Valorant universe, because guns will take down robots. Exactly, but I mean, I mean, a Team Secret Depp अच्छा खेलता potentially है. here अच्छा मारता closing है. out their day on a very high note after such अच्छा a खेलते difficult तो loss against Gen as a G. team हो आप. The unbelievable mentality
they have to be able to come back after that and just really take it to Zeta Division. You know, take a rough first half and turn it right on its head on their attacker side and make it just look so good, so clean here. Oh, and Secret are just using Zeta's habits against them. They know that Zeta now has to play with a little less confidence, and they will just wait for the 5-man push into B. And it's going to be that null command coming out as well. Already onto the site, Jeremy finds Zero Run from behind. He's waiting for the up-peak depth. Gets one, he's held these positions before. Backup has arrived, can he get a second? He's holding on to Boathouse, but he's starting to get surrounded. The jump peek, the shorty, it's not enough to clean it up. And it comes down to Laz once again. Meteor बहुत मस्त खेलता है वो भाई, योका में बहुत मस्त खेलता है. Meteor texture और वो क्या नाम है उसका, वो भी अच्छा खेलता है. You have to imagine this one's not impossible once again. Sakura Vandal in hand, but it's not going to save them this time as Team Secret will rise to match point. सिर्फ एक राउंड दिया डिफेंस में. Just dismantling Zeta right now. You know, Depp, he's stuck there. He can get that first one, but then he needs someone to bail him out. He needs someone else to find another kill to create an सबसे consistent तो आप इसमें कह सकते हो अपने. It just didn't happen. I mean, Jesse Bash tucked himself right around the door. How many times have we seen that here in kickoff where you don't check a corner, you get punished instantly, and Team Secret loves to be a team that hides in those nooks and crannies. Have to be so aware of it. So everything in the kitchen sink here for the side of Zeta. Zeta का GG हो गया. मैंने तो 2-0 पहले ही बोल दिया था भाई. मुझे लग रहा था असेंट फिर भी शायद निकाल लेंगे, बट इन्होंने तो टेल दिया टीम से. कमबैक टर्न अराउंड कर दिया. कमबैक तो नहीं बोलूँगा, पूरा ही टर्न अराउंड कर दिया. अटैक में बिल्कुल ही कितना अच्छा अटैक कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा अटैक कर रहे हैं. पिछला ही राउंड देख लो. I mean, not just kind of timing based on luck, but really just forcing Zeta's hand. And again, somehow Team Secret has hit Zeta so hard that they flew all the way back to 2023, just playing so passively, not able to find that first contact that they've been digging for throughout this kickoff. And perhaps they're just going to need another month or two to regroup, because after this, their chances looking nigh impossible. Of course, we'll have to run the simulations, but I wonder if there's going to be a recon to check for Depp's position, because he's been up here a couple times, and if Jesse's got it on download. I mean, they've punished it a couple times as well. Maybe not always with a kill, but they have pushed him away from it. Now Fragment onto the site at the ready. It's going to be a perfect set execute coming in, Jeremy. They hear the outlaw once, and there's Huntress Furious just trying to clear things out. Uran will get that kill for himself, trying to keep them at bay, but the forces have still come through. And now site taken over, 2v4. Huntress Fury still alive for Jesse Vash, mind you. Team Secret will play this patiently, a little bit lax on that door closing, but still numbers advantage and the post plant available for the Team Secret squad. Door broken, and NDG so snappy with it, and Jesse Vash will get the last headshot. A 2-0 victory, bounce back from Team Secret, will keep them in contention for playoffs. Unbelievable. And so for Zeta, now you're looking into that next match. Next game. To get the win is already seemingly going to be very difficult with Zeta Genji. Tough Genji was. Yeah, I mean, and even then, I do believe Zeta's chances snuffed out. Not even getting a map win here, as Secret already has 3 maps to their name. Of course, we'll let the desk break down the possibilities there. I'm sure they've been running through it. It's not possible. Yeah, I believe Zeta's out. Of course, obviously that third match, it still decides the fate between Genji and Team Secret, but I mean, both teams looking a lot stronger today, or overall in kickoff rather, but Zeta, the upgrade, not coming through on stage today for the play-ins. I mean, I'm just so impressed with the way that Team Secret came into this. It looked like they were just going to just not have a good time, and they came through and got business done. Yeah, they treated it like a warm-up, and they have that 2-0 victory. We'll send it to the desk to break down all the possible scenarios before match 3. Yes, let's go. And Team Secret have definitely won. Match found. अगर ज़ेटा जीती तो टीएस क्वालिफाई देखना पड़ेगा, राउंड डिफरेंस पे होगा फिर वो. रोहित भाई इंस्टा पे रील डाली, कमेंट करो उस पे.
training. It's time. Sorry, I was AFK. I'm good. How are you? Why are you not talking? Oh. Look at opponent Jet's name. The enemy sky is here. Oh I God. never liked to see it. Get over it. Drink kadha. You're not at home now. Cook, make some kadha and drink it. I'm going to have coffee. Hmm? I'm going to have coffee. अजय इधर तो बात कर रहे हो लेकिन इससे भी तो कर रहे हो. On my mark. I got eyes here. Here. Focusing. I'll give you the context. So, Kashish, she tells me one day that I am dating this guy who's friend, and his name is Alex. Okay. Okay. So, then randomly, the next game when she leaves, there's this guy who comes up. His name is Alex, and I trolled the fuck out of him, saying that he's dating the girl named Kashish and this and that. And that enemy remaining. Actually bought it. That fucker actually Back to me. Bought the thing that I said ki how I'm dating her and everything. Enemy spotted A. Kon hai bliss. I am live by the way. Don't worry, friends. It hurts, but I'm good. Now it doesn't surprise me. Let's keep a good thing going. लोग पूछ रहे कौन है bliss. क्या जवाब दूँ? Bliss एक आत्मा है. Just an online. आपके घर को haunted. Just an online Valorant friend. Yes. Friend, is that the right term? Yeah, friend, random, stranger. Let's go. भाई जॉब छोड़ दिया. नहीं जेड भाई. हेलो क्यूटी. अरे मानो भाई क्यूटी बोल रहे हैं आप. Yeah, I'm sorry. Enemy spotted A. समझ नहीं क्या बोला. नहीं मानो कह रही थी कितनी जल्दी क्यूटी. Cute. मतलब. Here. One enemy remaining. Got 3. My ult is ready. कह रही आप तो मुझे आदत हो चुकी है. No distractions. What? अरे किसकी साउंड आई फिर? मैंने अल्ट कर दिया. Don't worry, friends. Reloading. It hurts, but I'm good. मुझे क्यों नहीं मिलते ऐसे फ्रेंड्स ऑनलाइन? I'll पता fix नहीं them क्यों up. You clean up whatever's left. लिस एक दिन तन्मय को भी मिल जाओ. Can someone buy me, बहुत है. please? क्या बात कर रहे हो?
अरे मेरा गला खराब है तो मैं बहुत धीरे Shreyas saying I give head. Appreciate it. Bro, you know, honestly speaking, we need to have a conversation on it. You'll laugh so hard. I want to know, but because of the last interaction, let's have Focusing. that conversation someday. Yeah. We need to plan because I Go don't. get him, buddy. I honestly Enemy don't get spotted time. A. You and me. बचाओ मुझे. Spike down, C. Reloading. Last player standing. इतनी जल्दी क्या 500 हैं? मानव भाई Last थोड़ा हिंदी round में लिखो in यार, the मुझे half. बाकी लैंग्वेजेस We आती नहीं हैं. cannot keep our group after this. Spend all. गुजराती आती है प्लीज. मैंने गुजराती बो साરું આવે છે. મને પણ. સારું. Look at this, look at this. Here. Come here. On my mark. This is my masterpiece. Our spike is down. Spike down A. और लेके उसको रिवाइव कर दो ना हमारे Q2 को. नहीं. And hello smart hunter, welcome back to the. How are you? Here. Anyone who wants revive can thank me, please. One enemy remaining. मुझे करो ना रिवाइव. Beg. Your duty is not over. Not this time. Show me a target. इसका माइक अब ऑन हो गया. किसका? योरू का. इतनी देर से nobody was talking. Destabilizing. Now they know. Breaking them. अरे और बेटी क्या करोगे अब लास्ट My राउंड है. ult's ready. खुशी नहीं. यार मेरा bliss ना है, bliss. मशीन वो हो गया. क्या? Making मशीन वो cover. हो गया मतलब. हेलो. मेरी मसल मेमोरी हो गई यार. ओह. आज ये इतना संस्कारी कैसे हो गई? Bro, I have no energy to have unnecessary quarrel here and there इसीलिए. Does Bliss also have a cold? She is also exhausted, I feel. Switching And sides. so am I. Not Let exhausted. them try to The get weather is so cozy. It's just making me calm for some reason. Correct. You are in Pune. You won't know. That is also correct. Veggie DM देखो क्या आपका. पीछू टैग भी कर दिया फनाटिक को स्टोरी में. Gecko. Crazy हो गया थोड़ा. Gecko. Can you bend over? ये फनाटिक वालों ने कर दिया क्या Bend. रिप्लाई मुझे? क्या? Really? कर दिया. Oh no! Focusing. Bro. They actually. Hey, time to buy! Time to buy. Oh, it's so cute. What? Cutting through. Last player standing. Flawless. Don't stop fighting. You must keep going, even if it's the only one. Gecko. Be a good boy and crouch. Chalo. Be good boy.
Come on, crowds. क्रेडिट हॉकी लेवल में Yeah. Let's go. It's time to buy the classic. will do मुझे इग्नोर नहीं कर रहा पीछे गला ठीक नहीं है यार Spike down A. Destabilizing. One enemy remaining. Last player standing. who wins it Of course, did. who No, you bitch! Look behind. What the Match point. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. क्या वो मेनू ही बताओ बाजी यार इस रील पे तो व्यूज ही नहीं आए इससे पहले ही कमेंट कर दिया उन्होंने तो बड़े तेज निकले थोड़े व्यूज भी मिल के जाते तो चलो अच्छा है पर Come on, little homies. Let's get it. Focusing. Spike down C. It's you and me. The hunt begins. Last player standing. Spike planted. Instinct only goes so far. Skill covers the rest. what Crouch? No. Crouch. Look here and tell me if it's a guy or a girl. I can't see it is not visible मानव भाई देख सुन ली बातें इसकी मानव भाई को सीधी ब्लिस देखना रास नहीं आ रहा No distractions. And that's the end. Spike planted. सी प्लांट हुआ है चलो दोस्त उधर कहाँ जा रहे हो Breaking them. Breaking them. Stopping fire. One enemy remaining. Got it. We're clear. Defenders win. Nai, I did this to make you proud. कितना टाइम बचा है मैच शुरू होने में As well. टाइम है भी तो कोई चैट में से मुझे बता देगा क्या अगर मैच स्टार्ट होने वाला होगा तो तब तक हम आप खेल रहे हो अभी थोड़ी देर तब तक मैं ब्लिस के साथ थोड़ी सी स्विफ्ट पे खेल लेता हूँ वैभव ओपी वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर थैंक यू फॉर जॉइनिंग प्लीज लाइक द स्ट्रीम लेट्स हिट 50 लाइक्स as soon as possible Match found. 7 more likes ब्लिस आपने स्ट्रीम लाइक करी अरे hold up.
enough training. My lifestyle has been very ऐड आ रही है अरे आवाज बहुत तेज है ऐड तो आती है मोनेटाइज है ना लड़का क्या करें कैसे पता मोनेटाइज्ड है सुपर चैट करके देखा था ऐड क्या क्यों आ रही है ऐड तो आ जाती है आजकल कभी भी सुपर चैट करके देखो तो पता लगेगा मोनेटाइज्ड है कि नहीं This guy. No shame, no shame. यार आप तो अपने हो ना आपके सामने क्या चाहिए यार सही बात है सही बात है ना दूर के म्यूचुअल Bro, yaar, you can't imagine how funny it is for me to find out your brothers with him. मैंने तो मतलब जब भी पता नहीं कितने दिन हुए थे कुछ मतलब 3-4 दिन बाद मतलब जब हमने एक्सचेंज किया था ना जब तो उसके बाद तो मैंने एक दिन ऐसे ही हम बात कर रहे थे कुछ तो मैंने प्रोफाइल चेक किया तो मैंने देखा अरे मैंने उस दिन ही फिगर आउट कर लिया था कि पता तो होगा ही The other account and I saw the picture and I was skeptical to even talk anymore. I was like, you fucking idiot! Why did you kill him? Quiet now. Why did you kill him, you bitch? There. भाई ये अभी लो फील कर रही थी मेरे से 5 मिनट बात करती एनर्जी आ जाती है इसमें भाई अरे bro, I love snow man. Focusing. Gone here. Enemy spotted A. और मैंने वो भेजा था ना आपको कि मैंने पहले ही टाइप करके रखा था द मोमेंट यू सेड फक मुझे पता Last player standing. Spike down A. ओ टाइपराइटर Grenade. One enemy remaining. Spike. Thirty seconds left. Spike planted. Satchel up. Bro is trying to cook. Against the world. Grenade. A good fight is like a dance, and no one dances harder than क्यों बनाया Raze. यार सब लोग मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो कितनी अच्छी शर्ट है यार ऐसा मत बोलो एक बंदा थोड़ी देर पहले आके बोल के गया भाई आप डॉक्टर क्यों भाई आप डॉक्टर हो क्या मैंने बोला हाँ पागलों का इलाज करता हूँ आपको कराना है क्या भाई यार मैंने कुछ दिन पहले स्ट्रीम देखी थी love that you gave the reference it makes sense नर्स लगी Enemy spotted A. नर्स रोल प्ले डाटा खाया भाई Destabilizing. One enemy remaining. व्हाट अरे यार मेरे प्लांट कितना मेरी अच्छा नस हो रहा काट है। लो Grenade. नहीं यार Do not worry, my radiant friends. I will unplug your talking toaster. आपकी नस काट लेंगे तो हमारी जान का क्या होगा फिर हॉस्पिटल का वार्ड बॉय अरे यार
Here. Here. Thanks. Here. This is gonna be fun. आपने हमसे हमारी जान मांगी होती, हम खुशी खुशी दे देते. Reloading. Focusing. Enemies me. जाओ पेशेंस के लिए. मैं खुद के लिए कॉफी बनाऊंगा अभी यार. अरे प्लीज कोई ये बताओ ना. रुको मैं खोल के रखता हूँ. तुम लोग तो सारे यूजलेस Our हो spike carrier is killed. Spike down A. अरे यार वो सब. Blocking sight. Bye. Reloading. Blocking sight. Get out of my way. Last player standing. Last round before the switch. We cannot keep our goods up. Bend ball. Thanks. Gun here. Gun here. आपको बोल रहे हैं प्लीज को. I'm busy banging your mom, you fucking whore. Shut your fucking mouth. Yeah, she likes getting dick by strap-ons. Spike down B. Last player standing. You should run. I think it's time for you to mute me. I'm gonna get married. Switching sides. As if I don't know or the chat doesn't know. that place I want. Let's go. एक लड़का चैट में क्रश कर रहा है आपसे. उसको आपका इंस्टाग्राम दे दूं? नहीं, मैं इंस्टा चलाती नहीं हूँ. नंबर भेज दो. नंबर दे. चुप बच्चे. मैं बच्चा हूँ वो नहीं है लेकिन बोल दिया मैंने सहता. अच्छा किसी और को बोला क्या? चेंबर ये तो देख ले भाई. मैं ना सहता. भाई अपनी मैस्कुलिनिटी प्रूव करो अब चेंबर भाई. थोड़ा एक मिसोजिनिस्टिक कमेंट तो मैं भी डिजर्व करता हूँ. एक मिसोजिनिस्टिक कमेंट तो ये लड़की भी डिजर्व. ब्रो हाउ द फक यू ब्रो. हाउ भाई कैसे? बताओ यार Spike down B. अरे यार के भाई ये स्लोमो की बात कर रही है. स्लोमो में नहीं बात कर रही है, वो पार्टी वाला. पार्टी में वो एको आ रहा है ना थोड़ा, उससे ऐसा लगता है. और वो बात ऐसी करती है, ऐसा बोल रही है. पता नहीं. Spike planted. चेंबर भाई बोल. एक तरफ नारी शक्ति मर्द शक्ति भाई. हो जा. अंडी मंडी संडी चेंबर नहीं बोला तो वो तो है ही. चेंबर भाई अब तो तीनों आपके ले रहे हैं भाई. कब खोलेगा रे तेरा खून मेरा फैजल? See the whore guy is trying to do something filthy. यार एकदम मुझे असेंडेंट वाली लॉबी में ले आते हो. किल तो होते हैं मुझसे यहाँ पे. असेंडेंट हेलो. आई फील इंसल्टेड. You are immortal, but you won't be ranked immortal all the time, right? No, I do. Okay, so you getting me into more higher lobbies. कर दिया. As if you kill people in your lobby. अभी तो content. Yeah, I do. Okay, I aced last yesterday. I believe. नहीं Discord पे लाइव कर रहा हूँ. 5 जने बैठ के देख रहे. Discord. Focusing. सारे कह रहे हैं बोल. Destabilizing. चेंबर भाई थोड़ी मर्दानगी दिखाओ भाई. एस बंदे मार के दिखा देती. मारो
चेंबर एक मिसोजिनिस्टिक कमेंट तो बनता है अर्पित बाला की रील्स तो तू भी देखता है भाई। अर्पित बाला की रील्स तो तू भी देखता है चेंबर। अर्पित बाला की रील्स और एंड्रू टेट भी देखता था 1 साल पहले। तू भाई थोड़ा तो बोलना पड़ेगा कुछ। भाई हमको कस्टम चाहिए अब तो। भाई कस्टम चाहिए भाई 1v1। हाँ भाई 1v1 कस्टम। आओ मैं होस्ट करता हूँ। आ जाओ मैं होस्ट करता हूँ, सबको ऐड कर रहा हूँ ठीक है। सब पार्टी में आ जाओ। मेरा अकाउंट ले लेना ठीक है, मेरे अकाउंट से ऑन लेना सर। नहीं क्यों आऊँ मैं? अरे इतने अच्छे दोस्त नहीं है कि मैं आपको हर जगह डिफेंड करता रहूँ। You never defend me, okay? Don't even try. Ulti कर देता था। My ult is ready. One enemy remaining. Spike down A. जेट कहाँ है? हमारे साथ होता तो चेंबर तो खत्म था। Exactly. Say no to say no. इसको डिफ करने वाली नहीं खुश ब्लिस और हमारे चेंबर की फाइट होने वाली है। चेंबर भाई आप क्या आपको ये 1v1 मंजूर है? हेलो थोड़ी तो मर्दान की दिखाइए भाईजान। चैट में लिख दो उसका माइक म्यूट हो जाएगा। म्यूट कर जाएगा। चलो छोड़ो उसको और बुली ना करो भाई छोड़ो। अरे सही बात है जब वो इंटरेस्टेड नहीं है 1v1 वे कॉन्वर्सेशन करके क्या मतलब वो जब रिप्लाई नहीं दे रहा हमें। क्या हम लाइफ में इतने लोनली हैं? No distraction. Well fought. Over there. Get out of my way. Liz, time to open your account. I'm watching. Show me your skills. Last player standing. देखना आया हूँ। अरे आप आ गए का भाई? Spike planted. चेंबर का भाई कैसे आ सकता है इस लॉबी में? हमने तो इनवाइट You should run. भाई मैं तो लाइव देख रहा था ना, बस मैं आ गया यहाँ पे देखने। Sudden death. कौन है यूट्यूबर यहाँ पे? अरे कोई नहीं बोला तो डिस्कॉर्ड में वही ना भाई डिस्कॉर्ड पे बैठे हम तो। यूट्यूबर क्या होता है भाई? वही तो भाई हर दल्ला यूट्यूबर है आजकल तो भाई यही काम रहता है। हर दूसरा दल्ला यूट्यूबर है आज की डेट में भाई। क्या है यूट्यूबर भाई? यूट्यूबर उनके भीख मांगते रहो। वही ना थैंक यू फॉर द 40 Over there. प्लीज लाइक कर दो भाई सब्सक्राइब कर दो भाई। भाई ना भाई क्या वही तो भाई यूट्यूबर से बड़ा चूतिया कोई नहीं है भाई सही में। Does anyone have funds? Who will I spot first? बट भाई कैमरा को मत यूज कर भाई दर्द दिया उसने। जेट ने मार दी भाई। अभी मारता हूँ मेरे को। रुक मेरे अंदर का इमॉर्टल बाहर आ गया। Last player standing. 120 dead. Enemy killed. आया और चला गया। Attackers win. तो 1 सेकंड के लिए आया था बस। देख भाई है यूट्यूबर इमॉर्टल। अरे चैम्बर को बुलाओ, कस्टम लगा के चैम्बर को बुलाओ। नहीं मैं क्या करूं? भाई सब्सक्राइब कर देना और थैंक यू फॉर द 40। अभी बोलता हूं यार थैंक यू फॉर द 40। अभी बोल क्या है? This is very personal for Abhinav 3 years later. Match found. भाई पीची चल रहा है क्या तुम्हारा? तुमने भी दोस्ती कर ली क्या आपस में? क्या? कुछ नहीं चैट पढ़ रहा हूँ ना भाई। थैंक यू फॉर द 40 का वेट कर रहा हूँ। हाँ वो बोल क्या है चैनल नेम? ऐसा दल्ला है भाई चैट में आधे घंटे से डाल रहा हूँ भाई। अरे भाई सीधा भी तो बोल सकता था मेरा इन गेम नेम है वही मेरा चैनल नेम है।
बट आप पढ़ भी तो सकते थे, कोई कॉम्प्लेक्स थोड़ी लिखा है वहाँ पे, थोड़ी ना इक्वेशन सॉल्व करने बोलती थी नीचे। भाई इक्वेशन तो वैसे भी सॉल्व नहीं होती उससे। हाँ हाँ लग भी रहा है बातों से। मैं तो चौथी फेल हूँ, ऐसी बीटेक कर रहा हूँ। आप भी बीटेक कर रहे हो क्या? ये अपनी सेज भी इंजीनियर है। कुछ पूछना हो तो पूछ लेना उसे, स्कॉलर है भाई। ओ भाई स्कॉलर नैना। तो भाई जॉब ऑफ कर रखी है, सेज प्लेसमेंट कर रखी है। एंटरप्रेन्योर है भाई, एंटरप्रेन्योर है भाई। शार्क टैंक की पिच रेडी कर रही है अपनी। आई कैन आल्सो वर्क एज अ असिस्टेंट, यू नो। यस। अच्छा बस सैलरी दे देना अच्छी सी। वही दैट इज द शो। वही तो बीटेक करके भी आप गायनेक हो। अच्छा तो ही ना देगा। Who's your गायनेक? वैसे मतलब क्या है, बीटेक चाय वाली है कि मोमोज वाले हैं? यार नहीं, छोले भटूरे। छोले कुलचे। ऐसे भाई मजा आएगा। पंजाबी भाई। मैं रेडी हूँ भाई, मैं रेडी हूँ। छोले कुलचे। ठीक मैं रेडी हूँ। छोटू सुबह रेडी लगा देना, ठीक है? ओके, बट मेरी इनकम कितनी होगी ये बताइए। इनकम कितनी होगी ये बताइए पहले। रोहिणी सेक्टर 1% मिलेगा तो रोहिणी सेक्टर 4 के बाहर लगा देना भाई, प्रॉफिट का। रोहिणी सेक्टर 4 के बाहर। तो आपका पर डे प्रॉफिट मतलब कितना हो जाएगा भाई? यूनिट इकोनॉमिक्स बता दो भाई, यूनिट इकोनॉमिक्स बता दो जल्दी से। अरे मैं वो चैट क्यों नहीं कर पा रहा? हेलो, सब्सक्राइबर ओनली मोड है। अच्छा 1 मिनट बात कर पाओगे भाई? वो जरा यूनिट इकोनॉमिक्स बता देते तो थोड़ा पता लग जाता आपका बिजनेस के बारे में, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती। यार मैं ऐसे छोटे यूट्यूबर से बात नहीं करती, ठीक है ना? सेम यूट्यूबर। अरे वो ठीक है, बट आपकी पर डे का मतलब कितना प्रॉफिट है? 1% तभी तो मैं देखूं। 10 रुपीज पर डे प्रॉफिट एंड उसमें से 1 रुपी फॉर यू। 30 रुपीज यू विल गेन अ मंथ। एक्चुअली मैं आपको 11 रुपए देता हूँ, आप आ जाओ जॉब करने। थैंक यू फॉर द 29 खुशी भाई। इनके लिए तो मैं भी कर लूंगा काम अच्छे से। आयुष भाई भी कह रहे हैं भाई, बहुत सारे एम्प्लॉइज है। ल्यूनाटिक वेलकम टू द स्ट्रीम। का कैप्टन ले लिया मैंने। देव यो माय चैट इज क्यूट यार, मोर क्यूटर देन यू। और मोर क्यूटर मतलब मैं तो बिल्कुल भी क्यूट नहीं हूँ। यू आर नॉट एट ऑल। हाँ वही तो फिर ये तो 0 से तो 0.1 भी फिर मेरे से ज्यादा ही हुआ। अच्छा सिला दिया तूने Show me a target. जब से खुशी आने लगी ना, चैट की क्यूटनेस थोड़ी बढ़ी। Spike planted. Breaking them. Enemy B. Stand aside. कैसे मर जाते हैं? खुद भी खुद पे हंसने लगी हूँ, इतनी बॉट हो गई हूँ। Last player standing. Damn. अच्छा था। मूवमेंट अच्छी थी, नाइफ करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। क्या बात है मेरे फोन आए। डार्क फ्रिंज आप डिस्कॉर्ड तक ही ठीक थे, सही बताऊं तो। इन गेम नहीं भी आते तो चल जाता। क्या चाहिए भाई? क्या you guys playing comp or what? Just अभी बोल रहा था यूट्यूबर से बात नहीं करता, आपको वो कर रहा है। मैं तो उससे कर रहा हूँ यार। डीडी से रॉकी, my brother। जेट ब्रो। Did she say रॉकी? है ना? Yes यार। और बताओ एक क्या प्लान? Focusing. कुछ नहीं भाई, सो जाऊंगा। सो जाओ। कोई तो टाइम हो रहा है भाई, कसम से 2 दिन से नहीं सोया हूँ मैं। टीम भाई 8 बजे तक गेम खेलो, 2 बजे उसका कॉल आ जाता है, ना उठाओ तो इग्नोर कर रहा हूँ। अरे भाई खुशी बस अभिनव बंधन कराओगी? नहीं भाई, मैं खुशी को किसी और के साथ बंधन करके देख नहीं सकता। जल रही है मेरी। असली मर्द है तो क्लच करेगा। क्लच भाई। क्या क्लच? बट यहाँ पे नहीं होता ना। एलटी यार।
भाई क्लच तो क्या बट मर्द तो हूँ हाँ भाई नहीं पूरा हूँ मर्द है भाई क्योंकि मर्द का प्यार तो अधूरा ही रहता है भाई। अरे भाई सब कबीर सिंह बनना चाहते हैं यहाँ पे। क्या बनना चाहते हैं? कबीर सिंह तो ऐसा थोड़ी था भाई, वो तो इसका ऑपोजिट था बिल्कुल। मैच स्टार्ट होने वाला है, हम लोग को वॉच पार्टी करनी, लास्ट पे प्ले। ठीक है फोकसिंग। अरे ये लोग यहाँ तो आते ही नहीं है भाई, बिल्कुल ही बेशर्म है। खुशी बहन को बोलो मेरे साथ भी वैलो खेल ले कभी। यार आयुष आप बात करो ना उससे। First rule of YouTube: do not use push to talk. Use push to talk. First rule of YouTube. No distraction. Neon yaar. Knife. Contract complete. No knife. बेचारे खाता खोलने में लगी थी, तुमने नाइफ कर दिया। नाइफ किस इसके मुंह पे मारती क्या? मार देते, फेंक के मार देते। Last player standing. ऐसे भाई कुछ करोगे? तेरे पास ही आएगी, दही होता। ज्ञान मत दे, चुप। ज्ञान तो तेरे को देना भी नहीं है। 30 seconds left. सॉरी यार, मस्ती कर रहा था। चढ़े गए। म्यूट कर रहा हूँ भाई। तुम लोगों भाई तुम एक मजाक नहीं सह पाते इतनी देर से मेरी। डैम भाई। भाई किधर घूम रहा है ये? मैं गेको आप विंग। 10 seconds left. अच्छा तो स्पाइक लेके चला गया। Spike planted. मेरा भी तो प्यार अधूरा है ना भाई। In the half. You have. We lose it anyway. By the way, ice what's your rank? I'm out of here. इससे पूछ रहे हैं क्या? आइसो कह रहा हूँ यार। आइसो जेट है नहीं। एस्केप दबाओ और उसमें जाके देख लो ना। राइट साइड में आपको दिखेगा ऊपर। Damn bro, immortal win. Do they think we heal? Doesn't seem though, but okay. क्या? ये जजमेंटल गाइस। हाँ अभी स्विफ्टली में ट्राई हार्ड करूँगा मैं तुम्हारे लिए। स्विफ्टली में तुम्हें गेम प्ले दिखाऊंगा मेरा अपना। Spike down A. अब जो बैक में मारूंगा इन्हें, रुको। ये नियॉन रैंडम है क्या? पता नहीं, दूसरे किसी का दोस्त है। मैप पीटो हो रहा है। आइस बॉक्स। One enemy remaining. गेंजी ने आइस बॉक्स सेलेक्ट किया है। अच्छा जेटा से मैच है ना। जेटा ने असेंट लिया है। Go go go. और डिसाइडर देखते हैं। आ जाओ। हेलो ईशान भाई, वेलकम। Running low. Last map is Lotus. Let's go. Last player standing. 100 लो। भाई क्या हम राउंड हार सकते हैं क्या? जल्दी खत्म करना है यार, मुझे थोड़ा सा जाना होगा। Spike planted. सरेंडर भी कर सकते हैं क्या? मैंने वोट तो डाला है। मत करो डिफेंस। अरे कर दो, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा उसमें और सरेंडर कर दूँगा। सरेंडर होता है? वोट तो किया मैंने। You're welcome. Go go go. क्या? नियॉन के हाथ इतने गंदे हैं ना। एकदम मेरे जैसे। Switching sides. Gotta go. हैं? आपने क्या चाहते हैं? एडिटर पैरों का नहीं होता।
अबे नहीं नेल पॉलिश बचा नहीं Defenders win. चलो बॉस बाय बाय गुड गेम Trying to be funny or what? What is your name? Trying to be funny or what? इग्नोर करो इग्नोर। अच्छा सारे एक दूसरे को इग्नोर कर दो, वैसे भी जाना है, अभी गाली देके जाओगे इससे। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सेम कॉपी पेस्ट। बाय ब्रदर, बाय पुडिंग, बाय ब्लिस। भाई ऐसा क्यों लग रहा है कि फीवर होने वाला है? मैं कॉफी बना के आ जाऊं तब तक, लेकिन मैप स्टार्ट हो रहा है यार। ठीक है, वॉशरूम जाके आया, कॉफी भी बना ही दूंगा यार, 2 मिनट लगते हैं कॉफी बनने। To get the job done, to secure their position, destiny, their fate in their own hands. Will it be Gen.G able to best Zeta in a similar fashion to what we just saw from Team Secret, handling them incredibly well on this map in particular? This time around, a very different look on this pistol here from Zeta, pushing right down mid heavily, but it's an A hit from Gen.G, just completely sidestepping this crunch towards attacker spawn that Zeta has set up. Yeah, I mean, Gen.G doesn't have much information about it, but they won't care one bit. Now, the big question for Zeta is, do you split back and try to wrap around to make sure that they don't push entirely out into the defender spawn? It does look like that's up to Huron to make sure screens doesn't get overtaken by Gen.G. The remaining forces of Zeta now looking for the wraparound. With the site empty, Gen.G very well aware of this. Oh, whoever comes up on belt might catch somebody completely off guard here. Huron getting pushed back a little bit. That's going to be the first contact. Meteor gets taken out from above, and Gen.G has to back out, and they will correctly push right back out to secure a little bit more space against this retake. Now the spike planted above, I believe, right onto that nest. So we'll see if they can get in there. Gen.G Texture trying to find a timing, but he's not going to get it. Huron will hold true. Still 3 members left alive for Gen.G. It's only 1 left for the side of Zeta Division. Last 2 low, she gets shot through the wall, and Lakia will kick things off with a triple. I really like that Zeta's showing a very different look, a very unique approach to this round. They're able to catch Gen.G enough off guard that they get the first kill, but the reactions are really, really good on the other side of the map. A quick 2-kill that shuts down any sort of flank angle to be created from the side of Zeta. And then the rest of everybody doing their jobs on site, making sure that they're covering the angles, covering the positions, and man, oh man, they're already fired up. चैट में बताओगे किसको सपोर्ट कर रहे हो? जिंजर टीएसबी आज ही होगा क्या? ये लास्ट मैच है योकाई भाई, ये लास्ट मैच है। इसमें जो भी जीतेगा उसके बाद डिसाइड हो जाएगा कि प्लेऑफ्स में कौन जा रहा है। 24 से प्लेऑफ्स है। And now a fast push onto green. The high tide will keep them at bay, but not much else other than the stack here from Zeta Division, and it is going to be a heavy one. 4 members right on the site on B side. Yeah, they've read this correctly so far. We'll see if Gen.G's just going to try to test their mettle here against the defense that they've set up. 0 point, I don't think finds anybody. I'm pretty sure Zeta dodged it all. Poison Cloud right up close and personal. Trying to find a pick right above the screen, and they're not going to find it right away. Karon gets the first pick, and Texture saw most members, gets 1 kill, gets traded, but it's set up for Lakia once again. Another double for the initiator of Gen.G, and it's just Laz left once again. And one of the reasons he just hasn't had much impact today is he just never could be part of the fights. Yeah, I mean, it's a lot of times some gamble hits, and yeah, there's a dink, but Karon going to find the headshot with that Guardian to take Laz down. And only losing 1 member in the fray is Gen.G. Just Texture going to fall. So plenty of options and already a thrash online for Lakia. I mean, that did not take long, and that is super scary here for Zeta going up against the bonus. Such a powerful ult. I mean, one thing I'm really trying to key in on here is the harbor. For the side of Zeta, because with all of these initiators in there, it's going to be really important that those cascades and other things. अरे यार सत्यम देखो ना, ये लोग चैट में मुझे क्या बोल रहे हैं पता है इतनी देर से? नर्स लग रहे हो भाई, डॉक्टर हो क्या, हॉस्पिटल से आए हो क्या, ऐसे बात कर रहे हैं। देखो ना यार, सत्यम एक पुणे की ब्रांड है, वहाँ की शर्ट है, मतलब बहुत अच्छी ब्रांड है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे बताता हूँ। इसके बाद मेन आईडी क्यों करोगे? सोच तो रहा हूँ कैसे हैं सब लोग। हेलो ट्रायो भाई, आप अकेले रहते हो, डर नहीं लगता? मेरे को तो बहुत लगता है।
Now with the gecko, I mean, you can still see परिंदे को अपनी माँ की याद आए, लेकिन परिंदे को आती है शर्म। तो हंस के बता देना इन लोगों को। हाँ ना सत्यम, वही किया मैंने भी। I'm being such a sport यार। अभी ये लोग गेम में भी मुझे ट्रोल कर रहे थे, मैं कितना अच्छे से ट्रोल्स रिसीव करता हूँ। खादी के बनाते हैं क्या ये लोग कपड़े? यार ये कौन सा मटेरियल है पता नहीं यार, कॉटन तो नहीं है शायद से। Yeah, can't let this one happen, and that's the Thrash just keep them at bay as well, trying to see if there's any more of a stack here. They're not going to find it, but Wingman does get taken down and miss that, so not enough members trying to watch out for the little bro, and Spike stranded, 25 seconds left. It is the bonus for Gen G, so any more damage they can do against Zeta, they'll be happy about it, but a round win seems possible as we go for the flash into Snowman. Texture will get the double. Before he's flashed, he's still holding control as Laz jumps down for 2. He's now been part of the fight. Lakia holding true on the site. Meteor with an outlaw. Both of them below full health. Could be one shot, one kill on both. अगर डिजाइन ना देखो तो नर्स। Two in the chamber. यार इतना अच्छा शर्ट यार, ऐसा ना बोलो भाई। मैं हाँ भेजता हूँ सच में। Spots one on wide, so he has his suspicions, trying to close the gap. He scoped in, he finds one, and he finds the second. भाई मीटियोर, भाई जेनजी तो मीटियोर आज फॉर्म में है भाई, अलग ही फॉर्म में मीटियोर भाई। Cheers guys. To make sure that one side is covered, he can focus on the other. Recognizes the double stack and is able to wrap around to the other side to give himself just enough time to isolate those two fights. Brilliant stuff from Meteor. What a push here from Texture to find those first two kills. Catches Zeta way off guard. Laz tries to respond, finds two of his own from up in kitchen, but it is just not enough. Meteor just too darn good with the sniper rifle. And using that turret as well, somewhat as a shield, and the angle he's holding, not one you'd expect, especially not with that weapon. Just way too close for them to even suspect it with the outlaw. पर डॉक्टर को मेरा ब्लड चेकअप वीकेंड इज अराउंड, यू कैन विजिट द हॉस्पिटल। खुशी No doubt he had some really impactful rounds. He's been so valuable. Why just blood checkup and not full body checkup? अरे आउटलॉ जेटा आउट हो गया ना। गाइज ये मैच देखते हैं, इसके बाद हम वो देखेंगे पॉइंट्स टेबल, तो हमें पता लग जाएगा। अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हम लोग, आराम से मैच देखते हैं। क्या बोलते हो? Controlling sites, doing those kind of things that you expect out of a Sentinel player, and oftentimes you see this where a duelist, when they're called upon to fill in another role, the Sentinel role is something that they often can really dive into, really pick up quickly, due to some of the similarities in the play styles, and that outlaw will continue, of course, as Zeta is going to be onto an eco Marshall for Hirodon. It's the only thing outside of the Sheriffs. Yeah, and of course barely any armor, let alone half armor, so just trying to set up for some sort of a trap play. भाई अभी तो बहुत मैचेस पड़ी हुई है, लास्ट मैच है भाई, लास्ट मैच है। They haven't spotted him on the exit just yet. Could have made it through yellow, but Texture is keeping क्रेजी ब्रांड है, सब लोग नहीं कर सकते कैरी। हाँ सही बोला सत्यम। इनका एक और शर्ट है यार, बहुत अच्छा लगता है मुझे। थोड़ा सा वैसा है ग्रीनिश, आप देखो ना उनके उसमें जाके, ग्रीनिश है और ऐसा वैसा है फॉरेस्ट टाइप सा कुछ, तो पेड़ वेड़ बने हुए, तो बहुत अच्छा डिजाइन है वो, देखो ना यार। मैं बट वो लेस इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि एक दो बार पहनने में आएगा यार, उससे ज़्यादा पहन नहीं पाऊंगा उसको, वैसा है, पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। to get the frags halfway towards another Thrash. That's just heartbreaking now for Zeta to have a flawless come through like that. This is going to be already, it feels like a crucial round. TS का रोस्टर क्या है अभी भाई? मतलब ये दिख तो रहा है यहाँ पे। अच्छा TS का टीम सीक्रेट का। On the previous icebox where they just cannot get anything going, where they're just being read on the map much better. Texture just finds that nice angle. You can spray through. Lakia holding it. And let's go Texture. Lakia भाई, Lakia बेस्ट है भाई, Lakia बेस्ट है भाई।
पता है पहले मैच में लाके इतना बुरा परफॉर्म कर रहा था ना, मतलब लास्ट आइस बॉक्स में जब वो लोग इनके सामने थे, सीक्रेट के सामने, मैं इधर से प्रे कर रहा था भाई कि लाके यार अभी तो कोई बात नहीं, तो मार नहीं पा रहा, कुछ 7-8 किल पे था भाई और लास्ट राउंड तक आ गया था। मैंने कहा भाई जरूरत पड़ेगी तो क्लच कर दियो भाई, इधर से प्रे कर रहा था। लाके ने लास्ट राउंड निकाल दिया, 9 HP पे निकाल दिया भाई। लाके अब बेस्ट है भाई। And I was about to say, I mean, obviously none of the ults coming online yet either, all the way into the 5th round for Zeta. So a bit of a mismatch in the economy that they would hope for, where you would like to have the ults alongside the firepower to overcome the round differential, but right now that's not happening. Yeah, for sure. There's not a lot of options. बहुत गर्म है यार, outside of good gunplay, बट मुझे पीनी है गर्म, थोड़ा सा गला तभी ठीक होगा। Throughout the day so far, yes, of course, there's still some utility to play with. You're on. Just gonna have to back right off. The 0 point comes in, the Dizzy as well, but it's all looking like just a bit of a fake to draw some attention over. Meteor has information on the other side. Him and Laz in a bit of a India battle. हाँ जी भाई। Meteor knows there's not much going on over on this A site, so he's calling in the rest of Gen G to come in. मुझे एक बात नहीं समझ आती, बहुत सारे इंडियंस आके चैट में ऐसा क्यों पूछ रहे कि चैट की VCT में कोई इंडियन टीम है क्या, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स कहाँ की टीम है? उनको सेंटिनल्स का बराबर पता है, आप लोगों को पता कैसे नहीं कि ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स इंडियन टीम है भाई? एक ही तो टीम है अपनी, उनके बारे में भी तुम्हें पता नहीं है भाई, क्या देखते हो फिर तुम लोग? Sending 3 Blaze just in case for a repeat, but he still has a weapon, so Texture still deadly as ever with that Phantom. Everyone able to back out comfortably, even have the leisure to watch their flank. So 0 point is actually going to catch Huron, just nothing going Zeta's way. They will just have to push in and clear out this site man for man. 4v5, Fragment already on the way. पता है लेकिन प्लेयर्स को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑर्ग इंडियन है, प्लेयर्स 4 इंपोर्ट है, 1 इंडियन है। पॉपुलैरिटी नहीं है, पॉपुलैरिटी अपन फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो वैसे ही पॉपुलर हो जाएगी। And that's not something you want to see there at the end of that round, where you lose a couple players. So okay, now the ults do find their way into Zeta's hands, and maybe they could start stringing some rounds together. It's great you get the Bladestorm as well for depth. Depends so if you want to buy. Funds isn't the end of the world for this round. Going forward, it could be a problem, but who am I to decide if it's worth it or not? With lacking so much utility, getting caught, you know, with those 0 points and things like that. फॉलो मत करो, बट थोड़ा सा ओवरव्यू रखना चाहिए ना सत्य में। और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स तो रीजनल भी नहीं रही अब तो इंटरनेशनल और गए। ग्लोबल ऑर्ग, as the name suggests. Deelcool जी के टाइम में ठीक था, सही में भाई, सही में। He was on the receiving end of in that previous round. Meanwhile, Huron now a little bit more focused on mid. They do. तभी मैं रीजनल भी एक भी मैच मिस नहीं करता था, रीजनल भी एक भी मैच मिस नहीं करता था वो टाइम पे। Eye on that potential window in the tube. So Zeta trying to slow things down. They don't want to get that early contact. They just want to play with the safer defaults, especially with the slew of ultimates they have available. Retakes are on the board for the Japanese squad. मंचकिन के बारे में बोल रहा, मंचकिन बहुत अच्छा खेलता है। अरे नहीं, लेकिन ये मुझे तो मजा आता है अपने टूर्नामेंट्स पे। Knives taken away temporarily, so he's gonna have to back out. Flashed up his Lakia, chewing through just a little bit of damage. Can't find his way out amidst all the colors floating around, but yeah, it doesn't take too much, thankfully, on his end. Could have been a lot worse, and now they'll just leave Munchkin. Anjali, welcome to the stream. Thank you for joining. So well, again, like they know that they've gotten Zeta to bite, and this has been Zeta's MO so far today. Yuron's gonna see that dash from the Jet, and immediately everybody else, and he pops the pit. This is pretty smart, I think, if he can hold on here. Yeah, he's just trying to make it so that the plant is just ever so more difficult. The high tide signifies his backup is here, but Meteors finds him. He's just waiting for more. The trigger discipline is impeccable. He finds one. Not quite sure where he was. Sugar Zero, the comms maybe not just there, or the audio just too muffled as Meteor will go through the pit and clear it out. But the timing, can you get the plant in time? It just starts, and I'm not quite sure on the A side amidst all this chaos, and it will not go through. Oh my. And somehow Zeta will get away with the win amidst all this nonsense. But even Division, these round global esports would love to have 5 Indian players. Right now we are not skilled enough. Maybe in some time we'll have a full 5-man Indian roster. Till then, let's support one player who is Indian. Let's support Lightning first till then. Sends everybody scrambling from Zeta.
And yeah, somehow Sugar Zero just not responding to Texture's position there. Just walks right जैसे आप लोग देखते हो कि कबड्डी में इंडियन टीम्स डोमिनेट करती हैं क्योंकि कबड्डी अपना स्पोर्ट है, वैसे ई स्पोर्ट अपना उतना अभी नहीं है, थोड़े टाइम में हो जाएगा, है ना? तो ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री, ऐसे तो यूएसए में क्रिकेट चलता ही नहीं है, यूएसए वालों ने सारे इंडियंस ले रखे हैं अभी, उन्मुख चंद वगैरह से। रस भी तो इंडियन है, नहीं कोई बता रहा था कि रस का ओरिजिन श्रीलंकन है बट वो है वैसे यूके का, तो इंडियन तो नहीं है। उस हिसाब से तो फिर हम एफएनएस को भी इंडियन कंसिडर कर सकते हैं। आई बिलीव जी प्लेड कैजुअली यस्टरडे, नो डिसिप्लिन एट ऑल। यू कांट से दैट, यू कांट से दैट ब्रदर। वी लॉस्ट टू जेटा, जेटा लॉस्ट 113 अगेंस्ट टीम सीक्रेट लास्ट गेम। डज दैट मीन जेटा प्लेड कैजुअली? 113. G was not even that bad. What is your opinion on that now? Let's watch the match and debate over it later after the game ends. How about that? और जो भी कहो ये भी सब वाला एशिया वाला dual controller is good in current meta. Guys, they are professionals. They have a coach. They have an analyst. They have an IGL. They all understand the game better than us. Even I was not happy with the comp, but they have worked it out. They have practiced. They have practiced on that comp. So let's not question too much. I was like looking at their money, and I'm like, why aren't we buying rifles? I mean, they did enough damage to bring out this. 3 days back, PRX played Sunset without Duelist. They won the map. Depends on how they want to play. We don't decide if they are going to pick double initiator, double controller, or double Duelist. But then it just continues into a second and a third, and Gen G starting to feel that they're just missing something here in these rounds. Yeah. You are right, dude. I'm always right. I am the best. I know everything. Some of these retakes for Zeta have just been a little bit strong at times. Like Gen G hasn't भाई वो सभी के पास तो बहुत अच्छे tactics होते हैं. They didn't have a ton of util to work with because their Sova got caught. You know, मैं वही समझाने का ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को कि अभी देखते चलो इधर आओ बताता हूँ. ठीक है. ये मैप में जेटा अच्छा खेली अगेंस्ट जी. यहाँ पर आपको लग रहा था कि जी बहुत वीक है, जेटा बहुत अच्छा खेलती है. यहाँ पे आइस बॉक्स 113, तो इमीडिएटली आप एक मोमेंट में ये नहीं बोलोगे अगले मोमेंट में कि अरे भाई जेटा को तो आता नहीं है ना. किसी टीम के आगे आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो. ब्लीड के अगेंस्ट अपन जब जीते तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि अपन ने ब्लीड को हरा दिया तो अपन बेस्ट है भाई. कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ता है. जो टीम कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेगी वो बेटर हो जाएगी भाई. जेटा भी नहीं कर पाई है, ना जी कर पाई है, अभी जेन जी और ये लोग भी नहीं कर पाए, इसीलिए ये लोग प्लेन्स खेल रहे हैं, है ना. PRX हमेशा जाती है मेन स्टेज के भी फाइनल सेमीफाइनल तक क्योंकि वो कंसिस्टेंट है. ठीक है. तो अभी जब ये टीम्स कल परसों PRX के अगेंस्ट खेलेंगी तो ये टीम्स भी हमको वीक लगेंगी क्योंकि PRX का लेवल फिर और अलग है ना. तो ये तो चलते रहेगा भाई. कोई टीम आती नहीं है इस इंटेंशन से खेलने की चलो जाते हार के आ जाते हैं, है ना. सब कंपेटिटर से सबको जीतना है भाई. किसी को हारना अच्छा थोड़ी लगता है. They kind of overdid it and it got shut down pretty quick. So that aggressive positioning from Zeta's Killjoy utility does cost them. अब ना मैंने बहुत wisdom. I missed G match. Tell me what happened. That toxic screen in the way. I'd rather not tell you. It was not very good. Oh, did it go? Does not hit him. Reload versus Raxus में कौन सी बेटर रहेगी? जो आपको अच्छी लगती है वो बेटर है. Good round. Recover this round. The lockdown now goes down. Of course, with the harbor down, that means no reckoning for Zeta Division, but they do have a pinch. 2v2. बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया मैंने. अब आप चुपचाप मैच देखेंगे, ठीक है? Will get spotted by the turret. They are aware of one. Now Laz, it's up to him. He needs to push the timing back in Zeta's favor. And Gen G will correctly try to make sure that they're covering each other's backs. But they are separated into 1v1s and Urim finds it. आज डेप बहुत लग रहा है. बस वही बात हो गई ना भाई. इतना तो अच्छा खेल रहा है बेचारा वो. Can he be as clean against the veteran, the IGL of Zeta Division? He's approaching on a timer and Carol will find the headshot. 5th round win for Gen G. That is snappy from Karon. He has been really impactful with some of these clutches he's had so far today. He had a couple big ones against Team Secret earlier today. And now, coming up huge once again.
वेजीबॉय ओपी एज ए टीम वो लोग खराब खेले जेटा वाले एक प्लेयर से टीम नहीं चलती है और एक प्लेयर से टीम जीतती भी नहीं है ना एक प्लेयर से हारती है Yeah, I mean, very calm as well. I mean, you can see why they were praising his aim. Sure, he's not putting up the greatest of numbers compared to some other rookies, but he's doing the job he needs. Meanwhile, same can't be said for Sugar Zero, someone who once gained the nickname of Sugar Hero, now with 0 kills so far in these beginning 8 rounds. It's not what you want to see from one of your older brothers on Zeta Division. And that aggression from B, they're trying to remedy that, but Genji not there. The Reckoning still available, so Zeta. Let's hope this game goes to the third map. It's a I want retake to with the see Reckoning in store. all 3 maps. Nanoswarm trying to buy a little क्योंकि bit of अगर time along. लोटस तक जाएगा ना लोटस में डेप और टेक्सचर दोनों बहुत अच्छा रेस खेलते हैं बहुत मजा आएगा अगर लोटस तक गया ना बहुत मजा आएगा देखने में Ultimately it's a team game and you need good teamwork to win matches. Bhai, want to watch you in VCT. Not happening. Just to gain some space to push them back. The pit will be used to delay the approach. Ult for ult. Zeta, they will still have to find the frags, and Depp only has a sheriff. Guys, एक तरफ लोग बोलते हैं कि वी सपोर्ट यू और एक तरफ ऐसे मेरा मोरल डाउन करते हैं ओनली सेनो नाम से जो है ना इनको मॉड इनको चैनल का मॉड दे रखा आउट ऑफ रेस्पेक्ट और ये लोग मुझे ऐसे इंसल्ट और मुझे मेरा मोरल डाउन करते हैं यार मैं क्या पता खेल गया होता VCT पता है अब तक बट मेरी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे मुझे ऐसे इंसान मिलते गए जिन्होंने मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं करके मुझे हमेशा ऐसा मेरा मोरल डाउन किया है ई स्पोर्ट्स भाई अलग ही होता है लाइक कोई भी ऊपर आ सकता है अनलाइक अदर्स starting to get back into it now. Heron helping lead the way. Meteor, of course, still just himself. Texture finding 2. And Genji right back in the driver's seat, and that forces a timeout right away from Zeta. They don't want to see these rounds start to slip. They don't want to see these rounds cascade like they did against Team Secret. Yeah, I mean, you really think about it, they maybe only really had one round that they won on their own terms. The other 2, things just happening to line up perfectly in favor of Zeta Division. And while that did give them enough breathing room, the coaching staff now saying this is when we have to put the stop. Got to kind of pump the brakes against Genji's momentum and see if we can claw back to a 6-6 for Zeta. You can see on the right side, I mean, Carlisle just looking a bit concerned, but trusting in Junior's comms here to the rest of the team. Meanwhile, HSK pointing out a lot of things on the side. Hello Imperial, welcome to the stream. Thank you for joining. पर सर वो चेकअप बोला तो मैंने वीकेंड इज अराउंड यू कैन विजिट द हॉस्पिटल और क्लिनिक और व्हाटएवर किसने मोरल डाउन किया भाई अच्छे से खेलो एंड बढ़िया खेलो दोस्त भी खेला मोबा गेम्स एट ई स्पोर्ट लेवल लैंड का पता नहीं competition Ayush bhai I already have played esports you can check the description for more details but of course at any point you get content it will be a very valuable weapon given the situation. Another B stack for Zeta Division. But this time just hello Arshid bhai, welcome to the stream. Thank you for joining. Just only showing one guys, please like the stream. Let's hit 75 likes. Only an alarm bot as well. I mean, they're not trying to preset comparatively आज बहुत audience कम है. This round to be a tough one. They don't want those creds to go to waste too easily. They'll use it for the retakes. That's an instant cascade to try to push them back. And I mean, this should work to push them into A site. The real question is, what does your retake look like with this weaponry? Yeah, I mean, you've thwarted their attempt at B, but is that really what you wanted? I mean, like, there's not much going on here. Like you said, the alarm bot only, and that's just basically to give them a little bit of extra time to call in the rotation. So even then, they're just starting to make their way through. Hiroron going to try to do what he can with the shot. I came across your new Razer Mouse video yesterday. Oh. So he's going to be able to dodge. उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. Did you rage back then with the team? I don't rage when I'm playing in a team environment. I don't rage in team games. They will once again just have to push through. The flashes are flying out. We would have disagreements, we would have arguments, we would fight after the game, but not during the game. I don't like to rage during a team game. It puts everyone down. Don't ask how that mouse is still now. What is it? It is very good. In the back, caused some confusion, and Texture was just chomping at the bit to get behind the backside of Zeta and strike, and he certainly did. और YT तो मुझे Discord join कर लो अर्शित भाई. Discord पे हमेशा आता है notification. You do have a lockdown for Laz for the retake potentially, but I
mean, again, most of these retakes just really haven't been able to go for the side of Zeta. It's just walking into the open arms of Gen G. And they're fantastic riflers, even shutting them down. And Lakia's just gonna sit with the outlaw. टेक्सचर को जगह दिया. मैं तो चाहता हूँ 5th मैप 3rd मैप तक जाए यार. 3rd मैप पे बहुत मजा आएगा भाई. But he has plenty of money. Guys, let me know if the volume is too loud. True. There's only 2 rounds left in the half. I कर do रखा है join पहले. understand. तो उसके नोटिफिकेशन ऑन कर लो ना फोन में, वहाँ पे आ जाएगा आपको. स्ट्रीम का वीडियो का हर सकता है वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको आएगा. Meteor gets spotted, but there is backup, and Laz is ready for it. A good read coming out from the Zeta Good division pick, IGL. good pick और ट्रेड भी नहीं हुआ. But it's still only one. Now, it is a very important one. Bro, my throat. And the flash drives eliminated from Gen G will make their approach a lot harder, but they've now snuck around this cascade. Of course, Euron's well aware of it. It's his own teammate Smoke, but that puts a lot of pressure for this double angle that he has to be afraid of if there's an approach onto the B site. सोच रहा हूँ मैच के बाद जाऊँ तो कुछ स्नैक्स खा के आऊँ और पनीर लेके आ जाऊँ डिनर के लिए. क्या बोलते हो? Towards them. Lakia is going to try to buy some attention with this thrash even. He's investing hard in this fake. It is going to get shut down, and then everybody on Zeta, other than Euron, has stuck at A, and finally they're coming over realizing, yeah, this ain't it. Yeah, and I'm curious if Lakia is going to find a kill onto Laz, and he does. He's already switched out to the Vandal as well. Texture with a quick follow through. Good one, good one, good one. Gets it, but Depth's there for the cover. Gets traded out by Charon. Euron will push him out. Rookie v rookie on the Vipers. But the spike already ticking down. Now 3 versus 2. Numbers advantage for Zeta Division. They will all enter from the defender's spot. खाना बनाने भैया आते हैं. That calls for the early utility. Sugar Zero gets a nice spam, and Charon just thinks Nice that try. he has a timing to push through. But that will not be it, as that gives Zeta a 4th round. इसके बाद main ID grind. I'll call that ambitious. That's, I mean, it's unexpected. I'll say that if you're popping out through your opponent's high tide and through some nanos, that's it. It's unexpected. One thing we can gather from that is that kid is damn sure of his aim. That's true. Because he thought if he pops out and they don't see him first, he will get the triple 1 by 1. But obviously, quite a bit of damage taken as well. The slow from the high tide, and they swing right on to the spike. Well, might as well try it. It's going to be a desperate situation no matter what in that 1v3. Texture sneaking in and out for this final round of the half. Again, lockdown, Hunter's Fury. Yeah, they've got, of course, the Blade Storms for both jets as well. So that long range availability, but can really push up the tempo. Now another split, 2-3 from Gen G. It's been working wonders for them, except for that one round where the timer just ran too low. But they have been quick to react to initial contact. Laz thinking better of that deep alarm bot. Doesn't want to give away his position too much. They will trust Valorant timing पे कितना डिपेंड करता है. हाँ. Team environment में comms, timing, execution, brain ये सब काम आता है. Aim नहीं काम आता भाई. जैसे आपके साथ timing हो गया, आपका कितना भी अच्छा aim हो, आप aim ही नहीं कर पाओगे जब बंदे पे. आपको timing का sense नहीं, आपको rotation का sense नहीं, आपको game sense नहीं है तो aim करने का मौका भी नहीं मिलता है भाई. You gotta suspect there's at least 2, of course, with the high tide, and you just know that Euron's feet are firmly planted onto this B site. Toxic screen gonna come up, and they might be able to set up a pretty big execute, and no one else from Zeta is here to contest this. Not that I expected them to, the way they've been playing. And they will send out the cascade, but the thing is, again, when you have a Gekko and a KO on the other side, you're just not Then winning that war of attrition. They will still make it all the way onto the site, and Texture's gonna push all the way through again with a nice flash drive. He's set up for it. Fine step, he's ready for it. The op at the ready. He wants that opponent jet to peek out. Get the double scope नहीं. The enemy superstar and Texture. अब तो एक kill ले जाएगा ये. Contact for his teammate. He's waiting for the wide swing out, but Depp will get a nice shot peek, a second headshot as well. 2 members left for Zeta Division against the 3 of Gen G, trying to clear out the site. They just don't have a range. He finds one, but that distracts him away from Charon. Utility combo, agent, different agent compositions. अभी जब Valorant में 35 to 40 agents हो जाएंगे ना, फिर Dota की तरह इसमें agent ban भी आएगा. आप agents ban कर पाओगे. बहुत कुछ है भाई Valorant में. Valorant बहुत अलग है भाई CS से. बहुत अलग है भाई. Set up his utility really nicely to give them good opportunities to react to a lot of this aggressive flank pressure that Zeta tried to apply. Imperial 100%.
this time around just set up waiting for these retakes. Love the texture gets aggressive there at the end because what we've been seeing is that the retakes have been attempted by them. So one way to kind of make that more difficult is just disrupt them at the point of attack when they're setting up to use their utility and do all that stuff. Just make it so they can't even get to that stage of the battle. Exactly. I mean, of course, again, with the ultimates as well, perhaps Gen G just had a read. Perhaps it's just you kind of expect it when it's that last round when the site's been emptied up that much. You saw the cascade coming up so far. Expect things like the Hunter's Fury. You've got that Dota खेला किसी ने that they've shown off before. Dota का मैच स्टार्ट होता है ना, उसके पहले आप to show why they've tried this एजेंट्स पिक करने के लिए और वो their own interpretation on this मतलब Icebox सामने वाले competition, the double initiators, जैसे अगर आपने जेट बैन कर दिया तो सामने वाला जेट नहीं ले पाएगा उस पर्टिकुलर मैच के लिए, तो वो जब इंट्रोड्यूस हो जाएगा ना वो वाला सीन, गेम बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो भाई एड्रेस दे दो थोड़ा एग्जैक्ट। मेरा एड्रेस क्यों दूं आपको? डोटा तो नहीं खेला। We see on a couple of different maps from Gen G has really shown that it has value, and we've seen it throughout the other regions, of course, as well. A lot of teams are really starting to lean into that Gecko, realizing that the ability to, throw out abilities and then pick them back up. इसमें क्या फ़ायदा? इसमें फ़ायदा है कंपटीशन अलग हो जाएगा। आपको अगर एक मैप खेल रहे हैं हम लोग, अगर आइसबॉक्स खेल रहे हैं, आपने प्रैक्टिस किया है किसी 5 एजेंट से, तो वो चीज़ होने से आप रेस्ट्रिक्ट नहीं हो जाओगे वो 5 एजेंट पे। आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी। ऑन द फ्लाई आपको कुछ इनोवेट करना पड़ सकता है। क्या पता आपने जेट से प्रैक्टिस कर, आपने किलजॉय से प्रैक्टिस कर रखी कुछ सेट प्लेस, किलजॉय बैन हो गया है, आपको ऑन द फ्लाई यू हैव टू रीथिंक ऑल योर स्ट्रेटजीज, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इंस्टॉलर की बुंड मर जाएगी, दैट टू वो भी है। डोटा में इंस्टा लॉक नहीं होता है शायद, मैंने तो उतना भूल गया हूँ यार उसमें कैसे होता था, तो मुझे याद नहीं आ रहा है। बहुत कम टाइम के लिए और थोड़ा ही खेला मैं डोटा, ज़्यादा खेला नहीं, तो उससे बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएंगी चीज़ें। टीम्स को बहुत वर्सेटाइल होना पड़ेगा, आईजीएल को बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा, प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा लगेगी। Did he expect it to be so easy? हाँ ना, मैं बहुत जल्दी कर दिया। I was not expecting them to comment that quickly. I mean, not even an hour. They didn't even wait for an hour. But I'm happy, bro. They did. Rogue company जिसमें बैन वाला चीज़ है। has a good idea because his turret hasn't spawned any. The question is, does he expect Huron? Not quite the right angle, but Huron not quick enough on the trigger. Yeah, that's a nice piece of awareness there from Meteor. Not overextending himself, not giving a free kill. Oh, and Huron tries to find a timing on it. He will survive with 35 HP, and that might be just what they need as Charon sitting dangerously low at 24 as well. Now grouped up on this retake alongside Meteor. 2v2. They've hidden Huron into a corner. Uran with full health will be the point of first contact. I will. Before this stream ends, I will buy the but it's just a one-shot, one kill on either side with the sheriffs. Overwatch और Rainbow Six कैसी लगती है आपको? Rainbow Six अच्छा है, Overwatch I haven't played. Rainbow Six भी खेला नहीं, but मेरे कुछ friends थे। बट मेरे कुछ फ्रेंड्स थे कॉलेज में। मतलब कॉलेज में कैसा था पता है, मेरा एक ग्रुप था समझ लो, कुछ 12-13 लोगों का, और एक थोड़ा एक्सटेंडेड ग्रुप और था। तो हम लोग ऑलमोस्ट हम सारे स्पोर्ट्स और ई स्पोर्ट्स में एक्टिव लोग थे। मतलब आपको फुटबॉल टीम में मिल जाएंगे बंदे, हमारे क्रिकेट टीम में मिल जाएंगे, काउंटर स्ट्राइक, फीफा, डोटा सब डोमिनेट करते थे कॉलेज में। तो और मैंने कॉलेज में जाके सीखा है, और मेरे कुछ दोस्त जो बने ना वहाँ पे, वो लोग बहुत पहले से काउंटर स्ट्राइक खेलते थे, उन्होंने मुझे सिखाया गेम खेलना। मेरे कॉलेज के दोस्तों ने ही सिखाया मुझे खेलना, मुझे कुछ नहीं आता था, जीरो। मतलब आज की डेट में तो तुम्हें 1000 टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो मिल जाएंगी, कुछ मिल जाएगा। मैं तो सीधा पहली बार खेला था लैन पे डायरेक्ट, पहली बार ही लैन पे खेलने गया था 5v5।
does let them know that there is this martial purchase, and we've seen several. और उनमें से 3-4 लोग ऐसे थे जो 4-5 साल से ज़्यादा खेल रखे थे 1.6 काउंटर स्ट्राइक 1.6 की बात होती है। तो उन्होंने जिस तरीके से सिखाया ना, तो उस वजह से मेरा थोड़ा सा गेम सेंस अच्छा है, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया बहुत अच्छे से और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है गेम की, मतलब फंडामेंटल्स मुझे समझ आते हैं गेम के। भले मैं खेलता बुरा हूँगा, बट फंडामेंटली मुझे गेम समझ आती है। All because of 3-4 college mates. और हम हारो जेंजी हारो। हेलो शीशा भाई। और मेरे वो जो दोस्त थे ना, वो सारे मतलब कोई भी कैजुअली नहीं खेलता था, सब लोग टूर्नामेंट्स के लिए कम्पीट करते थे। मुझे सिखाया ही उन लोगों ने, इसलिए थोड़ा सा मुझे इनकी समझ है बस, है ना। मेरी ग्राउंड लेवल से मेरी ट्रेनिंग ऐसे हुई है कि टीम गेम कैसे खेला जाता है। मैं कभी भी, मैंने रैंक्ड गेम, मतलब मैंने गेमिंग स्टार्ट की, मैंने 1 साल तक तो रैंक खेला ही नहीं था। ऑनलाइन मैंने खेले नहीं थे, हम लोग खेलते ही डायरेक्ट लैंड पे थे जाके। ये कैसे? हेलो शीशा भाई, कैसे हो? कुछ नहीं, मैच देख रहे हैं। आप जेंजी को हरा रहे हो क्या? मैं तो जेंजी के सपोर्ट में हूँ भाई, मुझे अच्छी लगती टीम। मेरी पहली मल्टीप्लेयर गेम वॉरज़ोन थी एंड फिर वैलोरेंट पे स्विच करने में बहुत टाइम लग गया। Push out onto pipes. 2 members to make sure they've got all their angles covered as What they game we often talking? do. Even have Munchkin on the side. ऐसे ही कुछ बात करते लीड कर गया उस बात पे कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था खेलना, वो बता रहा था। 1.6 से काउंटर स्ट्राइक गो, फिर काउंटर स्ट्राइक सोर्स तो नहीं खेला, डाउनलोड किया था बस, ऐसे ही खेला नहीं कभी। और फिर अभी वैलोरेंट और CS2 तो मैं खेलूंगा नहीं, क्योंकि गेम उतनी अच्छी है ही नहीं। जो भी हार्डकोर CSGO प्लेयर है ना, उनको नहीं पसंद आएगी CS2, ऑनेस्टली पूछोगे तो। उतना मजा नहीं है CS2 में। हाय यू नो हु, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। भाई स्ट्रीम लाइक कर दो। शीशा भाई कहाँ थे पिछले 2-3 दिन से? बाय द वे टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है। आज तो हैमिल्टन फुल ट्रैक पे पूरा दिन के लिए। मैंने हेलो से शुरू किया था, लमा हेलो से किया था क्या? मैं चाहता हूँ मैप 3 जाए यार, मैप 3 चाहता हूँ मैं। मैप 3 में बहुत मजा आएगा, डेप और टेक्सचर दोनों का रेस देखने में। ऋषा भाई इंस्टा पे रील डाली मैंने, देखा हो फनाटिक वालों ने कमेंट किया है। बिजी, ओह ऐसा है क्या? मैं खरीदने वाला हूँ फनाटिक की कैप्सूल। That was not easy by any stretch of the imagination. It looked like Zeta was going to rip that round right underneath Genji's feet. Not quite. Not quite, says Genji. Lakia had something to say about that. That's a nice spray through that smoke as it's coming up. A Texture able to find value there. Even with that late lurk by Hyoron, that's something that Genji's going to have to be aware of. Is this Zeta looking way different than we saw against Team Secret? They are really pressing angles. They are not I don't know why I'm content to just ascending sit back stuck. and No, play because of defense. aim, but because Or, game I watched excuse a me, lot not of just sit frozen back and tournaments, play but I still post plant can't this time around. They are up my game really, sense. really wanting to make things How to much more improve difficult game for Genji sense? in terms of map awareness. Yeah, really working the entire Interesting map. question. The Zeta I don't division. know how Once to again, answer that. Laz now on the lurk on A side and trying to put some early pressure. I've played R6 for an unhealthy amount of hours. A very addictive game and also fun with a stack. मेरे कॉलेज में थे हमारे R6 वाले भी। क्या नाम है उसका? G2 पिंगू, क्या नाम है उसका? G2 में एक बंदा है ना, बहुत क्रेजी खेलता था। देखा, मुझे सब पता है भाई। ई स्पोर्ट्स तो भले ही मैं गेम खेलता नहीं हूँ ना, फिर भी एक बेसिक नॉलेज तो मुझे ऑलमोस्ट सबकी रहेगी। भले ही वो डोटा तो चलो खेला भी है मैंने, भले वो लीग ऑफ लेजेंड्स पूछ लो आप, डोटा का भी पूछ लो, डोटा को तो काफ़ी कुछ पता है। ई स्पोर्ट्स का भी R6 खेला नहीं मैंने कभी, पर वो दोस्त लोग जो खेलते हैं ना, तो हमेशा इंटरेस्टेड रहता था कि ई स्पोर्ट्स सीन में क्या होता है। तो जब कॉलेज में था मैं तब फॉलो करता था। पेंगू, यस हाँ पेंगू ना, पेंगू बहुत क्रेजी खेल। तो मेरे दोस्त जो थे जो R6 खेलते थे, वो मुझे R6 की वीडियोस दिखाते थे, मैं उन्हें CSGO की दिखाता था। फिर डोटा के तो बहुत देखते थे, क्योंकि काउंटर स्ट्राइक के ही टीम में 2-3 लॉन्डे ऐसे थे जो डोटा और CSGO इक्वली एडिक्टेड थे। डोटा भाई बहुत मुश्किल गेम है भाई, बहुत मुश्किल गेम है मास्टर करना। डोटा मास्टर करना बहुत मुश्किल गेम है, क्योंकि इतने 150 के पास आसपास तो हीरोज है उसमें, और आपको हर हीरो आना चाहिए। भले आपको खेलना नहीं आता हो, बट काउंटर करना तो आना ही पड़ेगा ना। अभी आपके अगेंस्ट कोई लेके आ गया तो पता होना चाहिए ना हाउ टू काउंटर दैट हीरो। सेम इन वैलोरेंट,
इसलिए बोलता हूँ सारे एजेंट्स खेला करो। कभी कभी क्या होता है आप सिर्फ एक ही एजेंट खेलते हो ना तो आपका गेम सेंस ओवरऑल डेवलप नहीं होता है। वो एजेंट आपने मास्टर कर लिया, वो एजेंट पे आप फ्रैक्स कर लोगे, बट अब आपके अगेंस्ट कोई अच्छा दूसरा एजेंट वाला प्लेयर आएगा ना तो आपको समझना चाहिए कि वो क्या सोच रहा होगा, उसके मन में क्या टाइमिंग चल रही है, उसके मन में क्या यूटिलिटी प्ले चल रहा होगा, वो सब समझ आता है बाकी एजेंट्स खेलने में। थोड़े टाइम बाद वैलोरेंट भी ऐसे हो जाएगा जब उसमें बहुत सारे एजेंट आ जाएंगे। जैसे मैं बता रहा था कि 35-40 एजेंट होने के बाद वैलोरेंट में बैन सिस्टम आएगा डोटा की तरह। तो बैन सिस्टम तो मैं चाहता हूँ जल्दी आ जाए भाई, ताकि सब लोग दूसरे एजेंट भी खेलना स्टार्ट करें। चोमू लोग जो है ना जो जिंदगी भर रेना और जेट इंस्टॉल करते हैं उनको पता चलेगा फिर। वेल तो स्टार्टिंग से यू गेट यूज्ड टू थिंक, बट डोटा में इन्फ्लक्स ऑफ नॉलेज है बहुत ज़्यादा। डोटा मोबाइल लेजेंड जैसा गेम है क्या वैसे? मोबाइल लेजेंड डोटा जैसा गेम है। एक कैटेगरी होती है मोबा, मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल अरीना। मोबा कैटेगरी होती है जिसमें लीग ऑफ लेजेंड्स, डोटा, डोटा 2, आपके ये मोबाइल लेजेंड्स और ये सब जो आ गए वो सब मोबा कैटेगरी के गेम है। उन गेम्स में इसी तरीके का होता है ये सारे गेम्स। लीग ऑफ लेजेंड्स भी इक्वली क्रेजी और एडिक्टिव है। लीग ऑफ लेजेंड्स की फैनेटिक की बहुत टीम अच्छी है। Just a guy who wants to win so much, and he's been so hyped for his team. Meteor, on the other hand, he's much more good advice, but दर्द है इनिशिएटिव्स फॉर मी। अरे ऑनलाइन आपको पता है श्रीशा भाई, रैंक मैच में कोई एजेंट खेलना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं। मैं तो सारे एजेंट खेलता हूँ भाई, सारे एजेंट खेलता हूँ और इतनी श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि जो एजेंट खेलता हूँ ना इतना कन्विक्शन के साथ खेलता हूँ कि गेम प्ले में और यूटिलिटी यूजेज में मेरे को ऐसा नहीं बोलता है कोई कि अरे भाई आपने एज ए सोवा आप अच्छे नहीं खेले, एज ए किलजोय आप अच्छा नहीं खेले। मैं जो एजेंट खेलता हूँ उस एजेंट का रोल मैं अच्छे से करता हूँ, भले फिर उस मैच में मार नहीं पाऊँ या वो बात अलग हो जाएगी। पर पता है ये चीज़ बुरी भी है भाई, जब जैसे अगर मैं असेंट खेल रहा हूँ और किसी और ने सोवा ले लिया ना तो पूरे मैच मेरा ध्यान उसी पे रहता है कि क्या ये सोवा का यूटिल अच्छे से यूज़ कर रहा है, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं खेलूंगा तो सोवा बहुत अच्छा खेलूंगा। ऐसा ही होता है। फिर मैं बीच में साइफर बहुत खेलना स्टार्ट कर देता। अभी किसी दूसरे साइफर को देखता हूँ ना ऐसा लगता है कि भाई तू गलत खेल रहा है यार, और आप रैंक में बोल नहीं सकते किसी को, कुछ बोल दिया तो फिर रोने लगता है। हेलो प्रेम भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। Look, this guy can do it. There's no doubt about it. Nobody has any idea where he is, really. Yeah, just sneaks on right by Karan as well, but a little late on the swing, and Karan not one to miss the second time. Well, picking off right around the corner. 11-6 score line for Gen G. Starting to get scary again for Zeta. Still just आजकल बहुत डेडलॉक खेल रहा हूँ मैं भी शीशा भाई, एडिक्शन हो गया डेडलॉक का। ऑल टाइडी पे तो डेडलॉक स्पैम कर रहा हूँ, बहुत क्रेजी एजेंट है भाई। मैं तो वेट कर रहा हूँ यार वीसीटी में क्यों नहीं खेल रहे हैं। मुझे 2-3 टीम से उम्मीद है भाई जो एक्सपेरिमेंट कर सकती है। पीआरएक्स वाले किसी मैप में डेडलॉक खेल लेना, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी भाई। हार जाए भले, मेरा तो मैप्स के अकॉर्डिंग कर रहा है। हाँ मेरा भी ऐसे ही डेडलॉक गोट। Yep, I was Cypher main for 2x and I know the feeling. Exactly, bro. भाई जेनजी भी इंडिया की है क्या? नहीं जेनजी साउथ कोरियन है शायद, और कुछ टाइम के लिए वो लोग नॉर्थ अमेरिकन रीजन में भी खेलते थे जब उनका स्क्वाड एनए का था पूरा, और अभी वापस वो आ गए हैं इस रीजन में। पीपल वर स्लीपिंग ऑन हर। स्लीपिंग का तो उतना इशू नहीं, अगर लोग डबल सेंटिनल खेलना स्टार्ट कर देना तो डेडलॉक बहुत अच्छा है, क्योंकि डेडलॉक अटैक में भी आपको हेल्प करता है एंट्रीज के लिए बहुत, क्योंकि आप उसका रैंक में पीपल आर नॉट एग्जैक्टली भाई। मेरे को तो मैं मतलब 1v4 भी ऐसे हो जाता है भाई डेडलॉक में। तो अगर आपके पास अल्ट है तो वो राउंड 1v4 बहुत ही। कल मैंने इको राउंड में 1v4 किया मार्शल से, एक मार्शल से मारा, फिर दूसरे को अल्ट कर दिया, वैंडल उठाई, बाकी दोनों को फेल दिया। ऐसा बोल के क्लच किया कि देख अभी क्लच करने वाला हूं। भले ही असेंडेंट 1 रैंक था वो का, मैं मतलब ऑल टाइडी भी था अपने, फिर भी मैं वीडियो डालने वाला हूं अभी एक जिसमें सिर्फ डेडलॉक के क्लचेस होंगे। मैंने बहुत प्लेस बनाए डेडलॉक से, बहुत प्लेस। कभी कभी मेरा थ्रो भी हो जाता है क्योंकि मैं और जानबूझ के सीज करके मारने जाता हूं ना, वो बंदे मार देते हैं कभी कभी। बहुत मजा आता है भाई सीज करके मारने में, अच्छी फीलिंग आती है सीज करने के बाद जब मारते हो ना। असेंडेंट में प्रीटी मच सेम ही है, बट वो चैट में आगे लोग ऐसा बकबक करते हैं ना भाई, यार स्मर्फ क्यों कर रहे हो।
where the final member of Gen G was. I'm sure I'm a huge fan of that crossfire. Gen G इंडिया की है। 1v2 for Gen G, अब भी but बताया you know, मैंने, इंडियन नहीं है भाई। भाई लोगों, ये एक वेबसाइट है, ये VLR.gg, अगर थोड़ा कुछ डाउट हो ना, इस पे जाके आप लोग देख सकते हो। अभी मैचेस में जाओगे, अभी का मैच दिख जाएंगे आपको, फिर आप इस पे जाओगे, Gen G पे क्लिक करोगे और यहाँ पे दिख जाएगा साउथ कोरियन है। फिर ट्रांजैक्शन में जाओगे तो आपको पता लगेगा पहले कौन से प्लेयर थे, तो फिर आप देखोगे इसमें तो ये जेसी सनी, नेचर, ये सब तो नॉर्थ अमेरिकन है, तो तब ये एनिमे खेलते थे, ठीक है। थोड़ा बहुत रिसर्च करने की आदत डाला करो। But they don't have a choice. Texture's already cleared out the entirety of the A side. They've pushed out. They have the operator for the long range. Zeta, this is no longer a fake or rotation. This is a commit to that B site. Now Uran on the lurk will find one. He's gonna try to escape. Really gets into two before the push out happens, and Depp will regroup. You know what I mean. I know. Over a little bit more space. He's a little late on the weapon switch. Meteor still alive on here. They get the spam through the box as well. Karon must have seen his elbow going through, and they're ready for Lakia's swing, but no, Lakia picks up the kill. Spike ticking down. Hunter's Fury at the ready. And Sugar Zero and Hero just need to buy just enough time for that ultimate to matter, but they swing out a little too far. And the Wingman, that's not what you want to use the Hunter's Fury on. He's just sticking on to it. They get the kill. It doesn't matter for the shock darts, but the Wingman will finish the defuse anyway as Gen G will take map 1. Well, certainly Icebox not quite where it needed to be for Zeta coming in to these two teams. मेरे साथ करेगा Certainly a map that I think they had to expect. पता नहीं यार, आज बॉडी एक बहुत ज़्यादा बॉडी हो रहा है, तो मैं एक दो मैच मेन पे खेलूंगा। लीड ये के बारे में क्या बोलोगे? लीड ये के बारे में क्या बोलोगे? अच्छा प्लेयर है। वेट अ सेकंड, थोड़ा इस मॉनिटर पे स्विच कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर। Oftentimes they were able to play off the cascades as well as you would like. That was one thing that kind of concerned me here for Zeta. I mean, obviously there's a lot to be concerned about. Another very tough time they had going up against Gen G. When out teammate doesn't fill the agent fully and you main it, that instinct that tells us that he isn't using the utility fully, just can't get over it. Must player है, chamber main था। I know Maskman, I know. ये वो श्रीशा भाई ने ये हो लिखा है, वो sarcastically लिखा है, वो ऐसा नहीं पूछ रहे हैं कि सच में बताओ कौन है। भाई 1-1 है क्या? 1-0 है अभी। मैं चाहता हूँ थर्ड मैप जाए यार। सेकंड मैप कौन सा है? सेकंड इज असेंट। असेंट काश जेटा जीत जाए, क्योंकि जेटा का अच्छा है असेंट। मैं चाहता हूँ जेटा ये मैप जीते ताकि थर्ड मैप देखने मिले, और थर्ड मैप में हाँ, थर्ड मैप लोटस तक जाए, और लोटस में भी एकदम इंटेंस ओटी तक जाए भाई। ओटी तक जाए तो मजा आएगा। आओ दोस्तों, मैच तो खत्म हो गया है, तब तक हम लोग थोड़ा सा ये करते हैं, स्विफ्ट प्ले खेलते हैं। किसी को खेलना है मेरे साथ? अगर आप लोग को खेलना है तो मैं पार्टी कोड दे सकता हूँ। आप लोग किसके साइड हो? भाई मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है। अच्छा लगेगा अगर जेनजी जीतेगी, जेटा भी जीती तो चलेगा, बट इंटेंस मैच देखना चाहता हूँ। एनए वॉच पार्टी भी कर रहे हो? श्रीशा भाई पॉसिबल नहीं यार, नींद मेरी पूरी नहीं हो पाती है अभी भी। जैसे कम नींद की वजह से पूरा बॉडी पेन हो रहा है और गला भी दर्द कर रहा है, तो उतनी रात तक जाग नहीं पाऊंगा। अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ तो कर लेंगे किसी दिन, जैसे सेंटिनल्स और लाउड का हमने किया था, क्योंकि मैं चाहता था सेंटिनल्स को हारता हुआ देखने के लिए, तो उस दिन पूरी रात जागे थे हम। और मैं जो खुश हुआ था ना श्रीशा भाई, जो खुश हुआ था मैं, जी के जीतने पे उतना खुश नहीं होता हूँ जितना मैं सेंटिनल्स के हारने पे होता हूँ। इतना बड़ा हेटर हूँ भाई, लेकिन सेंटिनल्स को तो तुझसे फर्क भी नहीं पड़ता। पार्टी कोड है ये, राइट? हेल्थ इज ग्रेटर देन कंटेंट। हाँ अरे 100 टी वजह सेंड का भी मजेदार था। मजेदार तो नहीं था, दोनों दोनों नूब टीम्स एक दूसरे के सामने खेल रही थी। व्हाई डू यू हेट सेंटिनल्स? बिकॉज दे आर नॉट जस्ट एट गुड एज अ टीम एंड दे आर वेरी हाइप्ड अप, सो दैट इज माई मेन रीजन। Otherwise, no personal grudge, or I don't hate them for any other reason, but just because they have this huge fan following, I don't know for what reason. भाई अब तो ठंड खत्म हो गई, अब क्यों हीटर चाहिए? हीटर? तो मैं आऊँ क्या? कोई भी आ सकता है भाई, कोई भी आ सकता है।
आ जाओ बग्गा, आ जाओ. Guys, this is the party code. Wait, I'll paste it in the chat as well. Only because of tens. Yeah, we need to end the tens hype. To be fair, FNS made them look good, and they have been playing well too. FNC का ले लिया, लूंगा. By the way, guys, I posted a reel on Instagram, and Fnatic's official page actually commented on my reel. So after the watch party, I will be purchasing the VCT X Fnatic capsule. If you want to contribute, !G you can sponsor the capsule. Thank you. Lol. FNC commented yes. फॉलो बैक भी कर लेते तो मजा आ जाता. अरे इन गेम स्पॉन्सर ये नया आया है ना अभी. हर टीम का एक कैप्सूल आया है, मतलब एक बंडल छोटा सा. एफएनसी ने किधर कमेंट किया है? मेरा इंस्टाग्राम चेकआउट करो, ! इंस्टाग्राम. मॉड्स, एनी मॉड्स इन द चैट who can enter the command please. By mod I mean yes you, exactly you. Who are you looking at? Yes you, I'm telling. भाई मेरा तो गला ही निपट गया है भाई. तो ये मैं खरीदने वाला हूँ. We have a Fnatic buddy, a classic spray and the banner card whatever. भाई बताओ यार, गैंग इंडिया की टीम है, जेंजी इंडिया की टीम है क्या? भाई सब लोग क्यों पूछ रहे हैं मुझे? साउथ कोरियन टीम है भाई, साउथ कोरियन. गाइस प्लीज लाइक द स्ट्रीम एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट येट. कॉस्टली नहीं है भाई अब तो, लेकिन वादा कर लिया है ना फनाटिक वालों से हमने, तो खरीदना तो पड़ेगा. साउथ कोरियन टीम है, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स इन. शो मी कैप्सूल. अरे कोई आया ही नहीं भाई, तुम लोग क्या पार्टी कोड दूं मैं तुम्हें? पार्टी कोड देखो ऊपर चैट में एंटर किया, LUH480. ओपा गंगनम स्टाइल. कौन सी टीम का देखना है बताओ कैप्सूल? सेंटिनल्स का देखना होगा शायद आपको, तो ये है सेंटिनल्स का. मॉड्स चैट में क्या प्लीज वो भी डाल दोगे क्या? पार्टी कोड जो मैंने ऊपर एंटर किया, प्लीज आप 2-3 बार स्पैम कर दो उसको चैट में. ये है क्लासिक, ये है सेंटिनल्स का बड़ी जो ट्रांस. ये है कार्ड और ये है स्प्रे. एफएनसी का लेव एंड कोई लेव का भी अच्छा है. लेव का बड़ी देखो, बड़ी तो मुझे फनाटिक का अच्छा लगा और बीबीएल का भी अच्छा लगा. देखो येलो बड़ी कितना अच्छा लग रहा है. कलरफुल बड़ी है ना, वो सारे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. DRX ऑल्सो अच्छा है वैसे. गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी. CSGO में तो आते हैं स्टिकर्स, अभी इन्होंने भी इंट्रोड्यूस कर दिया, अच्छा किया. PRX इज हियर, लुक एट दैट. PRX बड़ी. और फिर NRG का देखो, ब्लैक स्किन. और ये बड़ी RRQ देखो, RRQ का लोगो कितना अच्छा है यार. ये सब क्या है? पैसे खर्च करने की बकचोदी है और कुछ नहीं. कोई का देखना था ना, कोई का. ये देखो खरीद लूंगा स्ट्रीम एंड होने से पहले, टेंशन ना करो. PRX का दिखाया तो PRX का भी ठीक ठाक है. ये रहा पिंक लिप्स. यागामी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ब्रदर, हाउ आर यू? प्रॉब्लम PRX और 100 T लूंगी. ओह मुझे कौन सा गिफ्ट कर रही है? 100 T ये रहा देखो. रेनबो 6 सीज में और क्रेजी प्रो स्किन में फुल एजेंट अलॉन्ग विद गन मिलता है फॉर डिसेंट प्राइस. चलो स्टार्ट कर दो, अगर कोई आ नहीं रहा है तो. खुशी आप नहीं आ रहे क्या? चलो हम एक खेलते हैं तब तक, अगले में आ जाना. ओ भाई इंडिया वाले आ गए. वेरी भाई मैं ज्वाइन हुआ हूँ. जाकर हर्ष भाई कैसे हो? तो इन गेम बात कर लो ना, शर्म आती है क्या? वेजी भाई 100 नहीं लगा रहे क्या? 100 नहीं सुट यार, अभी वॉच पार्टी चल रही है ना भाई. अच्छा ठीक है. नॉट एट होम ना. ओह बट होम इज वेयर द हार्ट इज.
Match found. वॉच पार्टी कब करें? वॉच पार्टी चल रही, मैच अभी, मैच के बीच दोनों मैप्स के बीच का ब्रेक हुआ है। ओह अच्छा नहीं, रिप्ले चल रहा है, हाईलाइट चल रही है उसकी आइस बॉक्स की। मुझे लगा स्टार्ट हो गया भाई, थोड़ा सा बीटी हो गया था। दिल तो उसके पास है, मैंने उसे दिल दिया, लेकिन उसे तो दिमाग की जरूरत थी। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। क्या मुझे बैकग्राउंड में गाना भी चला देना चाहिए? डाइज ऑफ क्रिंज। मैं तो हुई क्रिंज यार, और मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, लेजिट हूँ भाई। देवदास मेरी याद जदों आओगी तब पता लगूगा। मेरे को भी खेलना है, बट लाइन नहीं है, चार्जर कनेक्ट नहीं होगा, लाइट नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, लाइट आ जाए तो आप आ जाना। हेलो शिवम भाई, कैसे हो? भाई नहीं अभी तक कि खेल रहा हूँ आपके साथ में। क्या हुआ भाई? Time to jump. भाई भाई वो लाइव कर रहा हूँ, उनका डील है। ये तो हाई पे। Show me a target. Reloading. Hawk out. Spike is down. Spike down B. श्रीचा भाई, मैं यूजुअली वही करता हूँ, गेस द रैंक ही करता हूँ। Last player standing. हरामी भी बहुत मैं, फॉर रियल। अपना ही अलग वाइब है, अपना ही अलग जोन है। बोलू छाती ठोक के तू बस भोग पे। Bro, can I come please? Sure bro, sure. After भाई लोग मैच स्टार्ट हो गया, ठीक है। मैं एफ के हूँ अब। हाँ ठीक है। Let's go guys, let's get back to the game. All alone like that. Yeah, I think that's why Euron's taking a moment to pause here. He's just like, wait a minute, fool me once. I'm not gonna fall for this again. Oh. Yeah, the question is, do they think a flood's gonna be enough? Spike down. There is a rifle here in the hands of Munchkin. My bad then. अरे कोई बात नहीं, आपको क्या पता? But usually हम करते हैं guess the rank, मजा आता है। Crosshairs, jumps out, gets to 0 point. That allows Sextures to cover his back as well. And that's going to be 2 kills for Gen G. Guys, let's support Zeta for this map. Just so impeccable. Yeah, really difficult to get through. Laz is going to try to sneak around this corner. Can't even pull the trigger. Oh, Munchkin. Yeah, the Guardian. बस Munchkin अभी और push ना करो. Throughout this entire match. And that's a 4th as well. He is just nasty with the Guardian. भाई बैकग्राउंड वालों की साउंड कर दो क्या बंद? It is incredible. I mean, it's hard to like just articulate how good he is. एक दो राउंड की बात है, फिर अपन गेम बंद कर देंगे. So devastating, especially on these anti-eco rounds, to make sure that Munchkin बहुत अच्छा KO खेलता है, देखना प्लेस बनाएगा वो.
Texture that wallbang sheriff shot. बहुत अच्छा KO खेलता है around the corner trying to see if he can catch him a little bit off guard. भाई मीडिया is gonna do Zeta. थर्ड मैप में कर लो, अभी जीत जाओ भाई, अभी प्लीज Zeta जीत जाओ यार, तीसरा मैप देखना है यार प्लीज. Yeah, 1 point away from the no command, carrying forward with that Guardian. It's been trustworthy all today. Now, an early drone to try to take some mid-control on this buy round. And Zeta, usually on the buy rounds, a lot of teams, they kind of want to wait for that aggression. Guys, sorry, जिनको भी खेलना था अभी तो नहीं खेल पाएंगे क्योंकि मैच स्टार्ट हो गया, फिर कभी खेलेंगे. Pressure mid as early as possible. Whenever we have this firepower advantage, full armor as well, we'll push into it. A lot of information gained by Gen G out towards Gelato. They were able to peek through for quite a while. 2 मिनट के लिए distraction हो रहा है, फिर अपन कर लेंगे. Allowing them to fall back and really start covering this mid angle. You can see You either get 25 plus की और या 5 रैंक मैच के लिए मुझे उतना अच्छा लगता नहीं KO वैसे, क्योंकि अगर आप KO ले रहे हो तो फिर आपको डबल इनिशिएटर जाना पड़ेगा, फिर वो KO को थोड़ा एग्रेसिव खेलना होता है और डुएलिस्ट को सेटअप करके देने होते हैं फ्लैशेस, जो सेल्फिश प्लेयर्स रैंक वाले करते नहीं, क्योंकि अकेला डुएलिस्ट सारा काम तो नहीं कर पाएगा. तो अगर आपका KO एज अ प्राइमरी एज अ सेकेंडरी डुएलिस्ट एंड अ गुड सपोर्ट खेलना चाहता है, go for it. Real and 5 kills. All members nearby for Gen G, but they will reset for a 3-man retake. Still a lot of damage. इस लेवल पे प्ले बनाना needs so much confidence. Yeah, that's one member down. Just so good, man. Yeah, can they? Oh, एक पे लगा यार. He doesn't even need it. That's another third kill with the sheriff. And now utility being dumped into the site. His only hero run. He can't finish the kill either. Gen G got the bonus round as well. Not done, yeah. And it will be the bonus win for Gen G. I mean, just filthy stuff from Texture with that sheriff. And now they're going to be able to go around, upgrade guns before they finish the defuse. Just so smart right now is Gen G. I mean, they were reading that round really, really well. Able to again push out, get information early, utilize that to their advantage. लाकिया सोवा खेल रहा है, let's go भाई. Used to be one of the best Sovas in the world 2 years back. Lakia is back on Sova. अरे तो कितने नहीं Zeta will make a comeback bro. All right. Zeta करेगी भाई. Oh, maybe he's mimicking Munchkin a little bit. I'm not quite sure. So funny. Poking a little fun at his own IGL. That's so funny, man. I mean, oh man. Munchkin is 6-0. G just feels like the win's already in their hands. Yeah. I mean, the momentum fully in their favor. No, don't save it. A lot of people were Good one. having high expectations over the course of the year for this roster, and then they came out with some nice ideas, at least stylistic changes. Round जीतो मत है ना, People were हार जाओ. excited to see, and it just gets shut down by Team Secret, and they haven't bounced back against Gen G. I'm shocked. I mean, I predicted Zeta to win both their matches today. I really देखा यार, thought thank you बग्गा यार, love you this brother. new look that they're showing was going to be able to get them over the line. Not that I thought poorly of the other two teams at all. I mean, obviously they're great. Good anti-flash from Lakia, and he will find the kill. He even survives long enough. Backup now arrived at the market door. Lakia still holding. Timing. Good one. Good trades. Clean round. Good trade set up for Clean round. Clean round. Clean round. And Sugar Zero goes down. 4th round for Gen G. I mean, you just gotta love seeing Lakia back on Ascent. The guy is just at home here on Sova. The Classico for him back on New Turn. Of course, we all know about his tremendous play at Reykjavik, but this right now is just him just farming on the back alley. Hey, round जीतो मत. So nicely handled, so nicely maneuvered. That initial turn on the flash just follows into him being able to shut that push down. FF to save mental. Munchkin also Risha bhai being very harsh. Some of these great plays. I mean, this is something that also is so powerful for Gen G, is Munchkin popping on these anti-eco rounds is getting him these ults so quickly that it makes it so much difficult. The no command is Primo so जिम कब powerful. जाओगे या जाके आ गए या शाम को जाते हो? आज कितने मैच हैं? ये लास्ट मैच है. अगर Gen G जीत गए तो Gen G प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई होगी. Zeta जीती तो फिर वो राउंड डिफरेंस और मैप डिफरेंस देखना पड़ेगा. देखते हैं एक बार, है ना, मैच हो जाएगा. चलो बॉयज, बाय. I have to leave the game right. Okay. And it has been fairly successful. So he's happy to hold that in his arsenal.
No flash drives available left for this round though, so it's just a 0 point at the आज प्रीमियर है मेरा. We need 1 W to qualify for playoff. Nice. for his teammates, waiting for a timing. Zeta का पूरा मोरल डाउन हो गया. इतनी जल्दी मोरल डाउन नहीं होता यार. ये लोग एक्सपीरियंस और ई-स्पोर्ट्स प्लेयर है, इनको ही पता है ना कि ऊपर नीचे होता रहता है किसी मैप में. मोरल तो डाउन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप जेनजी का फर्स्ट मैप देखोगे ना, आपको पता लगेगा उन्होंने क्या जीता है भाई. Good one, Deb. We need you to perform. We need you to perform, bro. Please. Get ace after ace after ace. Laz, you too. Laz का नाम लेती डबल किल. देख रहे हो? More power to you, Deb. Let's go, Deb. Get him. ईशा कहना चाहे भाई रिक्वेस्ट भेजिए, एक्सेप्ट कर लेना प्लीज इंडिया वाले. ओके युग भाई. But the paranoia is going to land right where Meteor was standing in the previous round. Please मत बोलो युग भाई, प्लीज मत बोलो, कर लूंगा है ना. To fall back to Boathouse. Depp is disgustingly fast. Wow. It's just not even fair how good he is sometimes. And then they're able to get into this nice post plant setup and just make this retake unassailable for the side of Gen G. So a nice adjustment here from Zeta, learning from mistakes that occurred on their last B hit. Very much so. Laz also getting some early kills on the board. That's got to feel good, but this is going to be that fast no command, but it gets shut down as Lakia just sends a perfect recon dart and follows them all the way through. The spam coming out for the Phantoms as well. They do not want this KO to get back up, and he saves the Tracers. Zeta Division, I know you want to save your teammate, but this just seems like disaster waiting to happen. 0 point ties them up as well. They know they're still around. Meteor hunting for a couple more kills. Will eventually get taken down. Firing off the op. I mean, Zeta just trapped. They will get Bro, out your with ID. the spike, and that's the Exclamation mark ID. Mods. They're all beat up. थोड़ा mod duty करोगे क्या please? HP, Sugar Zero on 39, Neuron only on 79 with 7 armor left. That was क्या मिरर कर लो, मेरा भी Zeta. उसी की ट्रिगर होती. Lakia there with the timely recon dart, getting it out ahead of that no command, gives him the ability to lay down a ton of firepower. Saw it or heard the dash from Depp, able to trap him in the corner. Yeah. Now, I mean, this is so difficult. But the they have Larbot used, at least won't catch him out in mid here because Meteor's dead. And they have spent enough time to disrupt the stack a little bit from Gen G. Gen G will play it a little bit wiser and safer. They kind of predict the rotate over to A. They've put a stack on there, and they're just watching for the flank. So Lakia on a timer, wrapping around. However, this will allow Zeta to at least get into the site. But as you mentioned, just so low. सीबर्ट वाला एमवाईएम अलग है. हम वो मैं बताया ना, जैसे कि 2015 में जब चालू किया था 1.6 खेलना, तो हमारी टीम का नाम एमवाईएम था. तो तब से मैं हर गेम जो भी गेम खेलता हूं उसमें टीम का नाम एमवाईएम ही लिखता हूं. ये स्पैमर्स हैं. यू रेड फ्लैग. शट द फक अप. Iron player. Doesn't want to use the lockdown, doesn't have real good way to defend it. That's a pop flash coming out. He can't swing away from it. Sugar Zero, he's caught in the back. That's going to be the Odin just pressuring him, but that's going to be Lakia swinging out. The defuse is held. He finds a kill and swing out to absolutely guarantee the round. 1 second here and there. To a Sugar Hero moment. So close there. I mean, as close as we got all day. Yeah. एक मेल आया important, थोड़ा सा It's रिप्लाई a करना. little bit awkward here from Gen G. I don't think you need to have that first player swing out while the defuse is happening. I think you can just hold those dice, wait for the shots to come out, see if they spam the box, get them to reveal their position that way, and then tighten the noose around them from there. But it works out anyway. Karan has had some amazing clutches for Gen G so far today. In fact, pretty sure it was like a 1v5 against Team Secret earlier, something like that. It was on the score line that I saw when I was checking my notes, so I was like, whoa. It almost feels like he performs a little better when he's left alone, right? Because all you got to do is really focus on your aim. No teamwork, nothing else. That's what he's used to. Yeah. And there's a couple players that are still getting used to the pro settings, and when left to their own devices, they'll really pull up their entire potential. But this is enough to call for that timeout from Zeta Division. Now, as we heard, Zeta Division, this is their last match here in kickoff, no matter how you do it. But obviously, they would like to spend just a little bit more on stage, show off just a little bit more to have a good start and good expectations, preparing for stage 1 later. And of course, somewhere, whether it's backstage or back at their team house, 25 people watching, please like the rooting stream. for Zeta to try to claw their way Let's back in this hit best of 100 three. likes. Oh, no doubt. I mean, every one of these rounds that Gen G get just hurts a little bit more. It's
you know, death by 1,000 cuts right now for Team Secret, sitting watching this match, just hoping that Zeta can bounce back, that we can see that Zeta. कौन जीता पहला मैच? देखो यहाँ पे दिखता है and they have so many ults for this Gen round. G जीता Depp has पहला the मैच Blade Storm. You've got the lockdown. और स्कोर देखना है तो लेफ्ट टॉप में देखो यहाँ स्कोर भी दिखेगा ऊपर ये करंट मैप भी दिखेगा कौन सी टीम का मैप है वो भी दिखेगा अगला मैप का नाम भी दिखेगा Okay, Depp opens things up in Depp style, and that's the entire Killjoy setup on A, all broken Bro, down. Depp is just way too crazy on the jet knives. All alone on site. Depp's just buying time. मैंने नहीं देखा इसको बिना किल किए कभी मरा हो ये जेट नाइफ्स में But Sugar Zero will stabilize the kill feed. Texture now going for the speed with the blade sword, but here ऐसा कभी नहीं होता डेप्थ के साथ एक तो मारता ही है and that's a quick round in favor of Zeta. लेट्स गो जेटा तीसरा मैप देखना है मैं जीतो भाई to try here with pushing the pace on this retake because they know that a lockdown and a Hunter's Fury are potentially going to be in place. So if you can just rush them down, take those ults potentially out of the equation, you can give yourself maybe a little bit of easier time to win that round, because once that spike goes down and if you give Zeta Division the time to get into their post plants, this is going to be basically an impossible round anyway. You've got the Blade Storm, you might as well go for it. It doesn't work out, but I appreciate the attempt. But on the other hand, Zeta, आयुष भाई बाय बाय अच्छे से पढ़ाई करना और बहुत सारे नंबर लेके आना targets, knocking them down and getting that much needed round win. The great जेटा की अरे भाई एक मैप जीतने दो अगला मैप हार पाएंगे टेंशन मत लो तीसरा मैप देखना है हमें प्रतीक भाई Exactly. Ult economy still healthy for Zeta, and so is the credit economy. कौन सी दो टीम जाएंगी मर्डेड और प्रेडिक्शंस मतलब एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के हिसाब से तो PRX और DRX बाकी तो हमने देखने के बाद ही पता चलेगा भाई देखो मुझे एक्सेप्ट कर लेना प्लीज क्यों करूं कल तो जी विल लूज स्पैम कर रहे थे कल जी विल लूज स्पैम कर रहे थे ना भाई तू तो वही है ना जो जी विल लूज स्पैम कर रहा था स्टिल दिस टाइम आज थोड़ी देर पहले तो आप जेनजी हारो बोल रहे थे अभी जेटा हारवा रहे हो यार शीशा भाई आप तो दोगले निकले Crossfire still available for Gen G. Zeta scared of the ghosts on the B site, and that might be what hurts them. In a round they were looking to win against this broken buy of Gen G. The alarm bot chases him through. He's been tagged up. Depp with a nice run out. That's an instant trade for Karen as well. 2v2. मस्ती कर रहा हूँ भाई मैं तो मस्ती कर रहा हूँ क्राउन भाई मस्ती कर रहा हूँ ना गेम चालू करूँगा तो कर लूँगा एक्सेप्ट Does not get hit by the paranoia. Only 20 seconds on the clock. He has to get in. He's got to get this down, and this is going to give Karon an opportunity to upgrade his gun as well off of that Bucky. So the teamwork could be good. Just gotta. I was just kidding. This right to just play Slaz. I mean, you imagine that he is a boathouse, so it's going to be Karon who I want TS to qualify. Creeps up close. Going to be the smoke Lol, to not isolate happening. it, and another one-way as well. Laz just does not have an angle. Now they're prepared to swing out together. Karon first at low health, and he just gets the headshot on the slow peek out. My word. Reverse jinxing at its best. I want to irritate you for fun. In these late games, मेरी girlfriend हो क्या? It's been so impactful for Gen G today, and it's a thrifty. Even, but what really hurt Zeta in this round is they take so long after this lockdown comes down. फिर तो आपको भी आज मैं लग रहा हूँ कि भाई नर्स वाले कपड़े क्यों पहन के आए हो? क्राउन भाई। Going to be able to make it out because he was trying to head back towards spawn, towards the alley. क्या आपके हिसाब से भी मैं He gets out there and then Meteor बॉर्ड बॉय लग रहा हूँ आज? It's like waiting with a sheriff with open arms. Gotta imagine. पहला मैप का स्कोर क्या था? They were a little bit इधर दिखता है देखो ऊपर टॉप लेफ्ट में दिखता है सब थोड़ी नजर घुमाओ इधर भी क्रॉसहेयर भी सिर्फ क्रॉसहेयर मत देखा करो रडार भी देखो टीममेट का यूटिल कैसे हेल्प कर रहा है वो भी देखो सिर्फ अच्छा शॉट मारा वो मत देखो वो शॉट के पीछे का 10 सेकंड्स का प्ले देखो एग्जीक्यूशन देखो कैसे टीममेट हेल्प करते हैं सब कुछ देखो Yeah, and if you can find a pick onto him, then that's going to make Meteor's life all that more easier. Flashed. Our couple members have to use the smoke and What the fuck? I didn't know that. Nobody is You don't know a lot of things, Abhiram. And I'm here to teach you. भाई आया सब बता के जाएगा. Zeta now grouped up on the A मेरी लाइफ का एक ही तो मोटिव है सबको ई स्पोर्ट्स का 14 बना के छोड़ूंगा इंडिया में. Get this operator all the way over. Texture has his sights lined up. The only thing he's really concerned about also भाई when you buy the capsule tag Fnatic 100% यार. But that allows his teammate Karon to be stable on site. The flash comes through, but Munchkin and Meteor cleaning house, and that gives time for Karon to start firing once again. यार ये लोग बहुत अच्छा होल्ड कर रहे हैं भाई. They just can't break the crossfire. Into the smoke. Without really a clear Teacher, intention gets sprayed APAC mostly on down. Vandal, but NA देखिए Phantom only करने का मन करता है.
That's my boy using the K-Tech Vandal. और भाई आप कब खेलोगे? भाई जो ज्ञान देते हैं वो खेलते नहीं, वो इससे बैठे-बैठे ज्ञान ही देते हैं. He already has his ult. Yeah, so this is just, I mean, extra creds is nice at this point for the team. Zeta doesn't look like what it was versus G. He'll just do whatever damage he can. He finds a target, but he won't land the kill. G also didn't look like how they were against Bleed. Not having an inch of trouble in this round as they pick up a 7th win. पहले वाली अच्छी G थी, अभी वाली. Again, दोनों ही यार, कुछ दोनों ने कुछ एक्सेप्शनली बहुत अच्छा नहीं किया, तो ऐसा जज नहीं कर सकते. बट अभी वाली जी, जैसे कल 1-2 मैच देखे मैंने परसों ब्लीड के अगेंस्ट जैसा खेली, अगर कंसिस्टेंटली वैसा परफॉर्मेंस देगी तो बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूट हैवी एंड स्ट्रक्चर्ड गेम प्ले लगा था मुझे ब्लीड के अगेंस्ट. बाकी प्रोफेशनल वॉच पार्टी है. the operator of texture from doing too much damage. Coach spin packs. Vandal spray में भी मार लेते हैं लोग. भाई उसका काम धंधा है भाई ये. उसका ब्रेड बटर उठते से बाद सोने से पहले उसका यही काम है भाई. तो अपन में और इसमें डिफरेंस है भाई. तभी तो उसको किसी दिन गेम खेलने का मन नहीं भी करता होगा ना तो भी खेलना पड़ता है भाई इसको, क्योंकि इसका काम है ये. तो मैकेनिक्स तो ऑब्वियसली मास्टर करके ही रखते हैं सब लोग. बाकी तो टाइमिंग्स और रीड्स का गेम है. गन तो आपके पास भी वैंडल ही है, मेरे पास भी वैंडल ही है. वो भी 160 डैमेज देती है और उसकी भी 160 डैमेज देती है. अब वो वैंडल आप चलाते कैसे हो, कब पीक करना है, कब हाइड करना है, कभी यूटिलिटी बाहर निकालनी है, सब टाइमिंग का खेल है भाई. बाकी तो I did अभिराम. और क्या खेली है जनजी भाई. नो नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ खेले और क्या निकाला है मैच भाई. लोटस में तो ऑर्गेज़म आ गया था. ओह सॉरी, गंदी बातें नहीं करनी है. Genji was amazing in the second half. भाई टेक्सचर के 2 किल थे फर्स्ट हाफ में. सेकंड हाफ में तो उसने डीमन बोला ना, मंचकिन का केओ बहुत क्रेजी है भाई. लाके आप विद द टाइमिंग. शुगर जीरो तो गया और ये डेप भी गया. फैमिली फ्रेंडली कब बन गया? तो हेलो, what do you mean bro? You all are my family yaar. Abhiram, you also. Even if you are a Sentinel fan, you are also a part of family. Phenomenal. That is so difficult to do. It is interesting. Okay, here's my hot take. I want Deluxe Insert to just stay there, just like Cyber Tribune are tracking once. But unless broken by. नहीं यार, नहीं. सबसे strong चीज क्या है पता है? Sonic sensor की. कि आप अगर आपने Sonic sensor spot कर लिया है, आप चाह रहे हो कि उसको ब्रेक ना करो और आप स्नीक इन कर लो, उतने में आपको ओपोनेंट देख लेता है और आप फायर करना स्टार्ट करते हो, वो सेंसर एक्टिवेट हो जाता है भाई. जो बीटी होती है ना उस मोमेंट पे, नहीं, सोनिक सेंसर इज वे टू स्ट्रांग ब्रदर. नो मोर बफ्स टू सोनिक सेंसर और द सीज और द अल्टी. नो भाई, वो जो बीटी देता है ना सोनिक सेंसर, he has been at the center of it to bring Gen G those victories. Now it's a switch up on the setup once again. The Nano Swarms on B to defend against the dash in onto the switch. Take flight. They clear the bot, but this time around they're not making any pressure towards B. In fact, they're shifting over towards No. कोई सोनिक सेंसर है भाई. कोई भी साउंड वेव आई उसके पास तो वो एक्टिवेट हो जाता है ना. बॉम्ब टैप करो तो भी. A man only can dream. Gives him the idea though, right? Only seeing that killjoy, seeing that turret, seemingly should have been the lurk. अगर सोनिक सेंसर में वैसा हो गया ना जैसा साइफर ट्रैप की तरह कि आपको तोड़े बिना आप उसको मतलब ऐसा वॉक करके डॉज नहीं कर सकते, फिर तो साइफर का मेटा बंद हो जाएगा भाई. फिर तो सब लोग डेडलॉक खेलेंगे. बस अभी सोनिक सेंसर के थ्रू आप वॉक पास्ट कर सकते हो, इसलिए सोनिक अभी डेडलॉक उतना नहीं खेला जा रहा. वरना तो डेडलॉक जैसा एस्ट्रा आया था ना, एस्ट्रा के आने के बाद कोई दूसरा कंट्रोलर चलता नहीं था किसी भी मैप में, वैसा हो जाएगा. वैसा हो जाएगा डेडलॉक का भी.
information. Last did hear one member rotating over to A site, and that's all they have to work off of. बट फिर डेडलॉक मुझे बैलेंस लगता है यार, वो उसका सेंसर जितना ही वो पैसिव है उतनी अग्रेसिव उससे बाकी यूटिल है। Two members in Boathouse, they're still staying alive, and Karon is bleeding out, so only 6 seconds left on the clock. Can you get it in time? No, the clock has passed the 4-second mark, and the round will be in favor of Gen G. Sonic Sensor is next level, याद है तू मर गया वाला। It's good trickery from Zeta, really working the map, but it just takes too long. पूछो ना खुशी से, मैं कैसे बुली करता हूँ लोगों को, डेडलॉक खेलता हूँ जब। Who is the best jet user in APAC? जो भी अपनी टीम के लिए इम्पैक्ट डाल दे वो बेस्ट है भाई। उसमें अब PRX में तो अभी जेट खेल ही नहीं रहे वो लोग। समथिंग हो गया, समथिंग मुझे उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता, कभी कभी बहुत हक देता है, जस्ट इन ओपिनियन। गुड इवनिंग आयनमी, राम राम लादर, यश भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। नो आई मेंट जैसे साइबर का ट्रैप रिफ्रेश होता है, आई जस्ट वांट दैट टू रीस्टर्न आफ्टर सिंगल यूज। To help bring things to fruition on those retakes, and we've seen quite a few of those rounds from Gen G. शायद ऐसा कर दे अगर ये लोग डेडलॉक खेले ही ना अगले 6 महीने तक। अच्छा आप सभी को ये बात पता है ना कि काउंटर स्ट्राइक का जो मेटा है वो ऑनलाइन प्लेयर्स के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, और वैलोरेंट का जो मेटा है वो लोग ई स्पोर्ट्स सीन देख के चेंज करते हैं। तो अगर जैसे कि ई स्पोर्ट्स में डेडलॉक खेला ही नहीं गया अगले 1 साल तक, तो मेजर बफ्स आ जाएंगे उसमें। उनको नहीं फर्क पड़ता कि ऑनलाइन लोग खेल रहे नहीं खेल रहे, एजेंट समझ रहे हो? तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है की कि वो लोग ऑनलाइन प्लेयर बेस के अकॉर्डिंगली एजेंट नर्फ या गन मेटा चेंज नहीं करते हैं, वो लोग ई स्पोर्ट्स को कंसिडर करते हैं, जो कि होना भी चाहिए। इसी रीज़न से उसी रीज़न से चेम्बर को इतनी जल्दी इतना मेजर नर्फ कर दिया था, क्योंकि लोग डुएलिस्ट खेल ही नहीं रहे थे ना ई स्पोर्ट्स में। ई स्पोर्ट्स में लोग डुएलिस्ट खेल ही नहीं रहे थे चेम्बर के आने के बाद। Also that's why they buff Chamber. Yes. अभी एक बार if jet dashes resettles or even player sensor, most of the time you would make more sense to keep it common checkpoint, choke points. And I feel Sonic sensor is not like meant to be put around the entry points. वो थोड़ा सा aggressive रखना पड़ता है आपको. And even in post plant Sonic sensor is very deadly, bro. You can't use Sonic sensor. You can't put Sonic sensor for backstab, obviously. I mean, you can put one if you want, but I would rather put both of the Sonic sensor on the choke points ही होता है। हाँ होता तो choke points ही है। भाई डेडलॉक का सबसे डेंजरस यूटिलिटी में ग्रेनेड भाई। ग्रेनेड भी अच्छा है, उसका सीज बहुत अच्छा है भाई। Sonic sensor plus grenade is fatal. Time is always running low, and we're falling back into the same habits of what we saw with Zeta from last year. You wonder how it could be fixed. We thought the 2 rookies would be enough. It might take some time to make it clean. But so far, Zeta Division seemingly needing this extra time before stage 1, because all of the same weaknesses starting to shine through the cracks once again. But the map's not over. Pistol round. This could be where it begins. Zeta Division with a sheriff in the hands of Depp. If you're trusting anybody with it, it's going to be this guy. He was, you know, in the top 3 of the duelists for power ranking so far in the kickoff so far, but after today, you got to imagine he's fallen quite far down. Yeah, it's been a brutal day for everybody on Zeta. जब रेस के बाद 2 ग्रेनेड थे तब मैंने Valorant स्टार्ट नहीं किया। Certainly a lot of hope though. All accounts combined. We saw earlier in kickoff is extremely encouraging for this Zeta squad, and one bad day does a Zeta squad not make. They will certainly be back. Sure, Team Secret had a terrible first day, and look at how far they bounced back forward. Of course, Destiny not in their own hands, but the firepower absolutely at the level a lot of people expected coming into kickoff. So we won't write them off for the year, but it is a bit unfortunate as we stare down the last remaining few rounds of Ascent. Zeta just looking to extend. नहीं मैं पर्सन द साइफर कैम गन ग्लिच नहीं था, वो शायद फीचर ही था। नहीं मैंने अपेरेंटली बहुत लेट स्टार्ट किया वैलोरेंट, क्योंकि मेरे पास पीसी नहीं था, तो मैंने 4-5 महीने की सैलरी बचा के फिर कंप्यूटर
खरीदा था, 4-5 महीने 3 महीने के साथ। Spike dropped on Heaven. Meteor brought down solo. Surely not this time. 1v3. There's no way this time. There's certainly no way. Tries to fake the rotation, but he gets spotted and now down to 7 HP, and that's going to be last picking up the kill. Well, looked a little dicey with the headshot, but Zeta, they get that first step forward. Really good back and forth. Those were all beater things I think Apex के लिए था भी। And then a follow-up paranoia from Sugar Zero, and then a flash from Munchkin. Everybody doing a nice job, but Sugar Zero, when he gets down into hell, he is a devil. He is tough. के देखूं दूर मैं खोया अपनों वद्दा हिस्सा मेरे दिल दा हो या तेरे भाई। मेरा गला गिव अप कर दे रहा है भाई, मैं थोड़ा सा लंबा सेंटेंस बोलता हूँ ना, मेरा गला भी बोलना चाह रहा है मुझे कि चुप कर साले, कितनी बकवास, कितनी बकवास करता है यार। ये तो 10-3 चल रहा है भाई, जेटा क्या कर रहे हो यार, डोंट मेक इट टू इजी फॉर देम, थोड़ा फाइट करने दो उनको भी यार, ये इतनी आसानी से मत जीत दे दो। डिड यू गेम इन कॉलेज? भाई तो अभी जॉब कर रहे हो क्या? यस भाई, आई प्ले ऑन लैपटॉप एंड गेट 60 में फोर्टनाइट मीन। भाई आप अच्छा गाते हो सच में भाई, ओपी चुप। Zeta, as they have placed themselves right outside in benches. Yeah, you've got that turret watching down. The Nanos wants to delay as well. 0 point. Also, giving a little bit of information. Just waiting to pop those on a timer. That hurts lock you quite a bit all the way through. You love to see it. Onto that ult orb. Now, Last knows he's been weakened quite a bit. It's an easy kill onto the Spike. Spike down. Spike dropped. Munchkin trying to find some wall bangs, but he won't connect. जैसे बारिश कर देता है जैसे बन जाए स्मूथ ऑपरेटर सुना दो एक बार भैया। चुप। आला तंजू भाई, आंसर माय क्वेश्चन। क्या आंसर करूं? बुरा गाते हो बस, that's my boy. No, it has to be pretty much all or nothing the rest of the way. So certainly it is ascent. See it from time to time where teams are able to come back from huge deficits on their attacker's side. Definitely, again, Zeta, no slouches when it comes to those kind of things. A few tags with that 0 point, but yeah, very nice. Make sure that it's not a fake anymore. ओटी देखना पसंद करेंगे हम, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, दोनों मैप में, लोटस में भी और अभी भी। अरे मुझे तो नजर नहीं आ रहा है ये कमबैक, ये तो चेक भी नहीं करेगा इसको। I know अभिराम, 2026 तक वर्स्टैपन ही जीतेगा भाई। So just a 0 point and the paranoia, that's the best they got. The drone will try to sight a little bit. The 0 point gets taken out. Only one member tagged in A main. That's not the information Zeta was looking for, but it's the information they're gonna get, and they will just have to push their way through as all the spam comes out from Meteor. Still all stuck on Heaven. The bounce down into hell, but it's not enough of a distraction as Karat's still focused on the drops. That's 2 to his name, and that's going to be the round for Gen G. Yeah, this is such a good execute for Gen G. The flash catches Laz's turret, so he's not able to play off of that. On the bright side, Ferrari is looking clean. Throws his aim way off, and they're able to just break the site. कितना भी clean दिखे, जीतेगी Red Bull ही भाई। Texture does a ton of damage through those smokes to a couple Zeta players, and then they just keep spamming them down. By the time Zep gets कब तक 26 तक तो, जब तक नए regulations नहीं आते तब तक तो Red Bull is untouchable. It's not going great. Untouchable, untouchable. Start kind of funneling in one by one, and Gen G has no problem dealing कितना कंफर्टेबल लग रहे हैं Gen G वाले, उनको पता है वो जीत चुके हैं। Zeta is clowning. Zeta isn't Zetaing on Ascent. It's not match point just yet. Once you let it get to that 12, it just feels so impossible. But here, it's a mountain for sure.
but seemingly one that you might be able to climb. भाई जेनजी गंदा पे Whether you make it down safely or not, पेल रही है 26 में ऑडी भी आ रही ना हाँ जी Anything's possible. Anything is possible, but it's hard to imagine with how good this Gen G squad has looked other than the first map of the day. Ever since then. Guys please like the stream. Instagram पे एक रील डालिए उस पे जाके कमेंट कर दो. Really starting to click. Max Verstappen. Shooting, but it's their teamwork as well. Seeing a lot better decision making in terms of setting up some crossfires, getting into positions where they can trade off of each other, getting their util to combo a little bit better. That last round, yeah. Gen G, they think it might be that tiles crunch coming out with that timeout, so they're just gonna hang back. Well, it's probably not a tiles crunch, but definitely could be a push for mid potentially. They're gonna see that deep recon bolt, and Gen G scratching their heads just a bit on what exactly the plan would be, as no solid information gained on either side. But Depp is planted into this cubby. Now, Hunter's Fury available for Lakia as well, so I have to imagine Gen G could just consider a full send once the timer reaches a certain point. Just try to get to match point. If he gets a spot onto somebody here, they know it. See, immediately backing out are the members of Zeta, checking that corner for Munch. भाई आपकी qualifications क्या है? Immortal 1 rank. So that's going to actually give them the idea that maybe A is the way to go. They didn't see any pressure out at Abhiram, I know. Try to use this timing to get out in the open, cover top mid. I like the positioning. Can catch anybody out of there. Yeah, no, I really like this. The counter drone spotted at least one member from Gen G in front of B main, so he expects to rotate after they don't push into mid. He's holding that. The question is can Sugar Zero once again anchor down on the site? Because Hero Run may not be able to support depending on the smoke. There's that Hunter Fury that pushes both of them out. They will have to exit. At least this will be a safety net, and Depp gets taken out by Meteor on the lurk. That was such a safety idea, and Texture will shut down the two members. The curveball thrown from Gen G. So often they'll be playing textbook, but not this time. They really deserve better. So does Leclerc, and so does Ferrari. Just to clear space on the site. Laz would be the shocker of the century, but nope, immediately traded out by Karon. 12-4. We find ourselves in match point, and Gen G finds themselves one round away from going into the playoffs of kickoff for VCT Pacific 2024. It's been an absolutely grueling journey for Gen G, having to have played 9 maps so far leading up to this match, and finally trying to catch Dhoni a break replacing on a Checo Perez. 2-0. As Texture, I mean, that's Checo का मतलब क्या होता है पता है मैक्सिकन में? back into the top one that we saw. I mean, yeah, it's crazy to think about that. This, if they can win this map, will be. Zeta, मेरा तो दिल तुमने 2 बार तोड़ दिया. एक आज गंदा खेलकर और एक कल अच्छा खेलकर. Fast push. It's just a guardian in his hand though, so he'll have to land those headshots. And Huron leads the way first. The drone will chase him back, but now they're getting pinched upon in mid, and it's just a massacre for Meteor. Only Huron left in the blink of an eye. Guardian to his name, but the smoke keeps him at bay. You've got Karon still watching the exit from the smoke. The bodyguard guarding the rest of his teammates of Gen G as they funnel into B site, and the spike plant should signify the end of kickoff for Zeta Division. Beautiful voice. अच्छा मैंने मना किया तो और खुशी और लिख रही beautiful voice. ठीक है खुशी भाई ठीक है. It would be now, but Gen G is not taking any chances. No, might as well. Might as well. Make it impossible. चलो दोस्तों. Hey Raven, welcome to the stream. Thank you for joining. Please do not forget to like the stream. We are about to take a break of 15 minutes and then we'll start ranked games. Sure, he'll catch one, but the paranoia, he knows the timer's running out, but he's so scared he just wishes someone would peek him. But Gen G, they want to be absolutely certain as Meteor gets a 4K, and Gen G will be the 4th team in VCT Pacific to make it into playoffs. जयपुर होस्ट एलजीबीटी परेड. अरे यार राजस्थान में ये सब हो रहा है क्या? गाइस मैं राजस्थान से नहीं हूँ. ओह सॉरी. But they have bounced back and won every map since they lost the first one of the day. A little bit of a break in between, came back just as strong as we saw them at the end. And heartbreak for Team Secret and for Zeta today. Team Secret, oh what a... They were so close to beating Gen G. They were so darn close. They sent that icebox to overtime. They just couldn't quite get it done, and Zeta just wasn't their day. Sometimes you have days like this, and that's all there is to it. Sometimes but exactly. At the end of the day,
this has been a long time coming for a lot of the Korean fans. For the longest time, DRX led the way for so long. I am from Udaipur, Rajasthan. Homophobic fuck. Jaipur. I like you. Cross the finish line. Meanwhile, PaperX comes and takes over Pacific. But now, in the kickoff of 2024, it's all three. Isn't that contradictory if you say that I like you pre-move? Alongside the defending champions of PaperX. Well, it just shows you how truly deep the talent pool is here. I mean, there's a lot of really good players. Well, and Challengers America. Yeah, because we got Roxy coming up. That's a good point. That's true. Yeah. Well, for a while, a lot of these players were playing in other regions. Sure, right? sure. So now they found a home in Pacific, able to come back and play Hi, Soumya. home territory, and look what's happening. These are tremendous players, and they are showcasing why we've all been so high on a lot of them for so long. Now, what a moment here for Coach Solo as well. Yes. Coming in last minute as the head coach of Gen G, struggling a bit with DK, not able to get them over the line in Ascension last year. And it's been a redemption story for this entire squad, including the coaching staff, like you mentioned. All Reverse of them Jinx have didn't work. some I like your reputation Jin, generally for their not game, but not that I quite wanna able to suck prove that it key. here in Valorant, and seemingly, on the doorstep of exiting the scene as Good a to pro. know. But now they gather together one last time, going for another push. Guys, please follow me on Instagram. Check my कौन सी टीम की बाय कर रहे हो? नमन मेरी लेटेस्ट इंस्टाग्राम रील देख के आओ, पता लग जाएगा. The texture and the tremendous, the insane, the brilliant play that he has. We've been seeing it for years in Korea. We've been screaming our lungs out that this guy is the real deal, and he hasn't had the opportunity to showcase it until now. And what a entrance to the global stage he has made. Well, that's बताऊंगा gonna अमित be सर को. that long journey for Gen G to क्या? try to get into playoffs, of course. We will have to wait to see what the matchup looks like, but for now, let's hear from our winners on the stage. ये बातें करे तब तक सुसु करके आया भाई. कैसे मस्त टाइम पे आई हूँ मैं? क्यों? Clinched for Gen G. I'm standing here with Meteor. Massive congrats, Meteor, today. I mean, what a match. 네, 메테오 선수 만나보도록 하겠습니다. 승리 축하드립니다. 감사합니다. First off, the resilience that Gen G showed us today, definitely worth mentioning. It wasn't easy every step of the way, but Solo said today was a great experience for the team. Would you agree? 솔로 감독님이 여기까지 오는데 정말 쉽지 않았고 오늘도 풀세트가 있었지만 그래도 선수들에게는 참 좋은 경험인 것 같다라고 얘기를 해주셨어요. 근데 경기 뛰는 선수 입장은 어떤지도 들어보고 싶거든요. 솔직히 너무 힘들었고 팀 시크릿전에서 힘을 다 빼서 솔직히 불안하긴 했지만 팀원들도 다 잘해서 잘 이긴 것 같습니다. It was definitely so tough and difficult, and I felt like we gave everything into the series against Team Secret. So coming into this one, I was a little bit nervous about the fact that maybe we run out of the energy, but we were able to step up. Everybody played well, and we were able to get the last ticket to playoffs. Well, coming into today, Texture had a target on his back, and it was probably expected because he's been putting massive numbers up on the board. But you were the saving grace for the team. You really stepped up and bought those crucial time for the team to come alive. So what was your mindset coming into today's series? 메테오 선수가 사실 텍스처 선수가 오늘 견제를 굉장히 많이 받으면서 좀 흔들리는 모습, 조용한 모습을 보여주기도 했거든요. 그럴 때마다 메테오 선수가 또 팀에게 든든한 힘이 되면서 팀에게 시간을 벌어주는 정말 멋진 플레이를 보여줬습니다. 오늘 전반적으로 어떤 마음가짐으로 임했을까요? 사실 지면 탈락하는 경기라서 정말 최선을 다해 했던 것 같고 그리고 원래 저희가 5명이 다 잘하는데 계속 한두 명만 주목을 받다 보니까 그게 좀 마음이 아프고 저희 5명 다 잘하는 선수기 때문에 5명 다 주목해 주셨으면 좋겠습니다. Well, coming into today, it was do or die, so I really had to perform for my team, and personally I just feel like we have 5 good players and all of them perform very well. They're really good players, but maybe sometimes the spotlight's on 1 or 2 of us, and I just feel like for the viewers and the fans, I would like to get all those 5 members kind of hyped up and get your support. Well, I want to ask about the early round on Ascent.
because texture seemed to struggle, but then we saw your play cam and you said something along the line of yo texture, and then blah blah blah. We didn't get to hear the rest. So what did you tell him that made him come alive and pop off all of a sudden? 저희가 이제 어센트 초반에 플레이어 캠을 봤어요. 네, 텍스처 선수가 조금 약간 힘들어하는 모습이 있다가 또 메테오 선수가 야 나라야 하고 라고 얘기를 했는데 귀신같이 또 텍스처 선수가 갑자기 살아나더라고요. 어떤 얘기를 해줬던 걸까요? 사실 기억은 안 나는데 그 1세트 그 뭐지 브리즈전 끝나고 로터스를 진행하는데 나라가 나 진짜 오늘 너무 힘들다. 한 번만 이겨주면 아이스박스 캐리하겠다. 그런 식으로 얘기가 오갔고 그리고 로터스 잘 이겨서 이제 그때부터 나라가 다시 살아나지 않았나 생각하고 있습니다. 이번 제타전 제타전 말고 이제 팀 시크릿전부터 이제 그때부터. 이번 제타전은 사실 기억이 안 나요. 기억이 안 난다. 네. 알겠습니다. Well, in terms of the Ascent we played against Zeta, I don't really remember, so I can't really tell you. But what I wanted to mention is that after playing Breeze before heading into Lotus, Texture said, "I'm having a really hard day. I feel like I'm so off. So please, everybody, step up, win the map for us, and I'll promise you that I'll carry Icebox." And he did, and that's how we, were able to pull off today, and I am really grateful for my teammates for playing very well. Well, lastly, heading into the playoffs, it's going to be against either T1 or DRX. So which team would you like to face, and which team do you think Solo prefers to face? 이제 플레이오프에서 T1 아니면 DRX를 만나거든요. 메테오 선수가 만나고 싶은 팀과 솔로 감독님이 만나고 싶은 팀은 어디일까요? 아무나 와도 어차피 뭐 마드리드를 가는 팀은 두 팀이고 저희가 올라온 만큼 한국 그냥 두 팀이 이겨서 마드리드를 갔으면 좋겠습니다. 누가 올지는 어차피 누가 오든지 간에 이길 생각이기 때문에 네. Well, we're planning to win whoever we get to face, but what's important is that only 2 teams get to go to Madrid, and I just hope that 2 Korean teams will make it to playoffs. Well, congratulations again, Meteor, and 감사합니다. well done, well deserved. 네, 이렇게 해서 메테오 선수 만나봤고요. So this is what 네, 또 저희의 the playoff 의식이 있죠. Now we have our participating teams looks like. We have Genji, PaperX, DRX, and T1. As we all know, T1, DRX, and PaperX directly qualified from the group stage, and Genji from the plains. Fnatic capsule अभी ले लो. नहीं, break के बाद लेंगे. I have to purchase the VP as well from Unipin. And if you guys don't know how to purchase credits from Unipin, you can watch this video right here. The video is here. Anything you want to say to the fans? 팬들에게 한마디 부탁드릴게요. 응원해주신 만큼 보답해드린 것 같아서 좀 뿌듯하고 그리고 남은 플레이오프 또 열심히 해서 꼭 한국 팀이 마드리드를 갔으면 좋겠습니다. Well, thank you fans for supporting us, and I hope we deliver to your expectations, and I'll try my best, and hopefully 2 Korean teams make it to Masters. Well, that was it. We have 5.6k views on this. Let's hit 6k views. शर्ट कहाँ से? I like ही मैं भी लूँगी. सौम्या पता है ये चैट में मुझे क्या बुली कर रहे थे इतनी देर से? भाई नर्स वेजी नर्स लग रहे हो, डॉक्टर हो क्या भाई, वार्ड बॉय हो क्या, ऐसा बोल रहे हैं मुझे. कितना अच्छा लग रहा हूँ. सही तो है. ये बूमर गैंग को समझ नहीं आता, बट फिर भी अच्छा है शर्ट. सही तो है. अच्छा नहीं बता रहा कहाँ से लिया, नहीं बताऊंगा. अभिराम भाई थोड़ा एक्स्ट्रा उसमें वीपी एक्स्ट्रा मिलता है चैट में. इफ वेजी गिफ्ट मी एफएनसी स्किन आई विल गिफ्ट 1 to a सब्सक्राइबर. शट द फक अप. डोंट प्ले दिस गेम विद मी नाउ. क्यों? अबे अरे यार नमन तू तो खेलता भी नहीं है.
तो क्या आप दोनों क्यों मेरा नुकसान करा रहे हो, तेरा खुद का भी? चल चुपचाप बता। रहने दो, रिजलर की जगह असॉल्टर लग। असॉल्टर तो हूँ मैं, पबजी मोबाइल में बहुत तगड़ी असॉल्टिंग करता था और स्नाइपिंग भी, और वैलोरेंट में तो आपको पता ही है। हर चीज़ में पॉजिटिव्स ढूंढ रहा हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हो गया। अरे मैंने अपना फ़ोन कहाँ रखा? ओह अभी तो गिरने वाला था फ़ोन। It's just so much clearer how Gen G has, you know, all the right pieces, all the right performances that they can put together to give us a 13-4 win to close off the day. I mean, there were rounds, again, if you look at the bottom of your screen, round 3, somehow Zeta couldn't really convert that round, even though they had a full buy. And then moving forward, there were even some rounds where Munchkin was popping off, and like you mentioned, Asteroid, he's on the KO, and he knows how to make use of his movement and the flashes. The nade toss into A short as he held his ground, although Zeta tried their darndest to push past him. And they even managed to defend against the Zeta Division A side execute. You know, that dashing in, the flashes coming out from Hirodon. But then Gen G had the read on it, and you had Meteor on an off angle, Karon backside, just to support with the paranoia. चलो मैं आऊँ क्या थोड़ा सा ब्रेक लेके? थोड़ा बॉडी भी फ्रेश एयर लेके आ जाएगी मेरी। What do you guys think? मुझे लगा था पूरा बंडल आएगा टीम्स का। नहीं, अभी के लिए तो क्लासिक आई है, और उसमें एक बड़ी है और एक स्प्रे है और एक कार्ड है। नहीं क्यों? ओके ओके बाय। थैंक यू यार अभिराम भाई फॉर अंडरस्टैंडिंग, अनलाइक दिस इडियट सामने मिश्रा। Are you playing comp after 15-20 minutes break? फिनिशर क्या? फिनिशर नहीं है। ईशान भाई गिफ्ट कर रहे हो क्या कैप्सूल? अभी यूनिपिन से खरीदने ही जा रहा हूँ। क्या बोलते हैं इसे, यूनिपिन से वीपी खरीदने जा रहा हूँ। समोसा खाने जा रहा है? नहीं यार शायद, हाँ समोसा भी खा सकता हूँ, पर भूख ज़्यादा लगी थोड़ी। कर दूँ? नहीं मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, आपकी मर्ज़ी बाकी। चलो मैं ब्रेक के बाद आता हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ अभी, उसके बाद देखते हैं वीपी खरीदना है कि क्या करना है। और अब तो रील डाल दी है, वैसे फनाटिक वालों ने रिप्लाई कर दिया है मुझे, तो कैप्सूल तो लेनी है। बाकी अभी पनीर भी लेके आना मुझे यार, सोच रहा हूँ पनीर खा लूँ, बट यार फीवर होने वाला ऐसा लग रहा है मुझे यार। आलू टिक्की चाट यार, चाट वाट तो आपको पता ही है पुणे में क्या ही अच्छा। रुको रे, अरे अगर आप दे भी दोगे तो मैं आके ही करूँगा ईशान भाई, तो आप भले ही कोड डाल देना डिस्कॉर्ड पे, बट मैं आऊँगा और फिर करूँगा। अभी मैं ब्रेक लेके आता हूँ यार, थोड़ा सा मुझे बॉडी पेन हो रहा है, थोड़ा सा वॉक करके आता हूँ भाई। चल बाय 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 सौम्या, मैं आपको शर्ट का वो भेजता हूँ इंस्टाग्राम पे, कहाँ से खरीदी है मैंने, ठीक है? चलो बॉयज, सी यू इन 15-20 मिनट्स, बी राइट बैक। गाने लगा के चले जाऊँ क्या? ठीक है। अद्धा हिस्सा मेरे दिल दा होया तेरे खिलाफ क्यों, जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, दस्तके खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर कमी। It's your boy.
एहतराम से गाने मेरे नाम के मुरीद तेरे पसंदीदा रैपर मेरे काम के मुरीद हाथ बांध वरना बोलेगी फिर 9 मिलीमीटर हाथ बांध छोटे हाथ बांध आए तेरे शहर तो लगा दे वहाँ 4 चांद बात मान मेरी बात मान हड़ा होड़ी नहीं होए देंगे तेरी गांड फाड़ जिन्हें चर्च पिला दी वो सारे हाई के मुरीद जिन्हें वर्ष दिया वो सारे लिखाई के मुरीद लेकिन भाई वाले तेरे थोड़े आउट ऑफ द लीग आउट ऑफ द वे जाते हैं कभी आओ तो कराची फ्लो सो सिक मुझे टी-वाई टू टोन बोल हाइप खाएगा ना मुंह तो खोल इधर सोल्ड आउट शो बेटा 10,000 लोग अभी आई एम द शिट अभी गर्मी नहीं ब्रो गलत तेरी मालूमात करे तेरा बंदोबस्त बेंच जाती फटोफट pull up and we fuck it up pull up and we fuck it up कराची मेरा मैं आ रहा city shutting down लाहौर back in Karachi बलोच बनाए जोड़े smoking up in Johor 3 AM 4 AM कलम तोड़ any fucking day मेरे भाई वाले बैठे Canada hustle and digits and edit up शहर मेरा जंगल है gang पूरा animals we can bake मेरे boys करें edibles bitch made motherfuckers acting like many men असल में ये minions देख ये resilience bounce back करें आउंस कैश करें मान के नहीं लाए अपनी हाइप कैश करें तुम्हें रॉन्ग वे छोटे हम तो राइट बैट करें पे अप मदरफकर हम पाइप बने तेरे नट टाइट करें जैसे उस्ताद मुझे सीख के सिखाएंगे ये गुस्ताख नो कीज मैंने वेव किए पुश स्टार्ट बात सुन हाथ बांध छोटे हाथ बांध सुनो एहतराम से गाने मेरे नाम के मुरीद तेरे पसंदीदा रैपर मेरे काम के मुरीद हाथ बांध पड़े फायर तो सुनाई देगी चीख हाथ बांध छोटे हाथ बांध आए तेरे शहर तो लगा दे वहाँ 4 चांद बात मान मेरी बात मान हड़ाउड़ी नहीं होए देंगे तेरी गांड फाड़ ज़ारदार निपट लेते तुझे बारों बार गुनाहगार सदा करो बार खून खार तो तुम बनो मत उछलते औरों के लनों पर बड़े क्या घरों में तुम्हारे बोलो ना भड़वों अब रुको मत सजे और खपे हिप हॉप पे खपे इनको बोरी में भर के हम डब्बों में रखते हैं चीनी मुर्गी के अंडे हैं जो करे गांडू फेस पेट मलते हैं दौलत है शौहरत है इज्जत है चूतिया लेसर नोन सिर्फ मुझसे जलते हैं पब्लिक को खबर है चूतिया बनती नहीं इनकी चूतिया पंथी चलती नहीं इनके करियर भी खाए तफसील से मैंने मुझे भी जल्दी नहीं हाथ बांध छोटे हाथ बांध सुनो एहतराम से गाने मेरे नाम के मुरीद तेरे पसंदीदा रैपर मेरे काम के मुरीद हाथ बांध वरना बोलेगी फिर 9 मिलीमीटर हाथ बांध छोटे हाथ बांध आए तेरे शहर तो लगा दे वहाँ 4 चांद बात मान मेरी बात मान हड़ा होड़ी नहीं होए देंगे तेरी गांड फाड़ Been on a roll आँख खोली तो देखा जो ख्वाब वो बन गया था असलियत अब Now you see me go 240 on Sheikh Zayed Road यार हाइप करें तेरे भाई को Like I'm Park or something मुझ पे ये सारे नशे बेअसर थे खुदा मुझ गुनाहगार पे कितना मेहरबान सर झुक जाता है ये शर्म से अब जो जिंदगी मैं बसर करता हूँ इसके गिव एंड टेक सब तक नहीं समझा मैं रब के बंदे साथ चले मेरे ला शरीक हूँ रब का एक बंदा मैं ये कंधा बोझ उठा ले 2 घरों का शुक्रगुजार हूँ बड़ों का माने हर ख्वाहिश की पूरी हर ख्वाहिश उसकी पूरी होती अब फटाफट टीवा के बैलेंस या का चकाचक है नहीं खींचे मेरे बॉयज गटागट नोटू छापे पूरा गैंग दबादब मॉडल्स wanna have sex खपादब सुनी है बहुत कॉन्शियस शिट फ्रॉम पीपल दैट जस्ट वेंट कमर्शियल इज्जत देने से मिलती है मगर सर ये घुसे इनकी कमर में मेरे लंड से ये फॉल्स प्रॉफिट्स मेरे लंड से रहना चाहता हूँ दूर इस कमंड से ये रंग बदलते इनका कोई किबला ही नहीं है ये नोटों की तरफ अब ऑटो पे चलते जो अल्फाज अदा अपने होठों से करते वो दिलों में नहीं तो फिर काहे की भड़के ये दिल अब भी धड़के ये हाथ भी लिख लिख के पन्ने जो भर दे छोड़ी कसर नहीं खोले ये पर्दे दर्द रहे बेहिसाब जो कभी सुनाए नहीं दे दी छुपाने को तरजीह I cannot diss them just because what they did was a disappointment legacy over everything I think twice सोची समझी choices They wanna see me fall, shoot me in the head, that's where the noise is फिर भी मैं सदा बात तेरे शोर शराबे में दबे ना voice, yeah Cause you're a false prophet False prophet False prophet False prophet झूठ के पैर नहीं होते तुम अपने लगते तो गैर नहीं होते बनते उजाला अंधेर नहीं होते So fuck what you said मेरे लिए तुम सब कैसा false prophet False prophet False prophet False prophet झूठ के पैर नहीं होते तुम अपने लगते तो गैर नहीं होते बनते उजाला अंधेर नहीं होते So fuck what you said you're a false prophet दर्द लिखाई में जैसे कलम के जख्म नहीं भरे बादे अज जंग अब आशनाई है इस इंतशार से सांस सुकून का मिला कब स्टैटिक में जगह से हिला कब We added like addicts हम यारों की बैक पे like adlibs वो जानते already I don't have to tell this मेरी rap shit do you see how I sell this जैसे ये cocaine जैसे I'm right there dealing the dope game जैसे संग दिल I feel no pain सिर्फ एक रात cause I'm not stained we were good kids I miss those days अब वो खींचे till I see a nosebleed जानती industry कौन push it P who's pushing P's I ain't no saint
सेंट बॉय तेरा स्ट्रीट इनको ये स्मोक कभी चाहिए ही नहीं थी हिप हॉप को वापस मैं देता वो अलग जो हाँ के बातें उनकी लेता वो अलग आई ओनली कॉल देम व्हेन द कॉल इज टू शट अप और खुदा ने दिया है मुझे ये शर्फ इस मर्तबे तक आने में थे 10 बरस मुझे तो जहाज़ों से दिखती नहीं सरल मैं सिटी टू सिटी या शहर को तलब घर में नहीं स्टूडियो बन गया घर अब तुम्हें मिली थी ताकत जब इख्तियार की तो तुमने तो कभी ना सोचा था औरों का गुड मॉरल्स के ये लेसन तो छोड़ो अब फॉल्स प्रॉफिट फॉल्स प्रॉफिट फॉल्स प्रॉफिट फॉल्स प्रॉफिट झूठ के पैर नहीं होते तुम अपने लगते तो गैर नहीं होते बनते उजाला अंधेर नहीं होते सो फक व्हाट यू सेड मेरे लिए तुम सबके सब फॉल्स प्रॉफिट फॉल्स प्रॉफिट फॉल्स प्रॉफिट फॉल्स प्रॉफिट झूठ के पैर नहीं होते तुम अपने लगते तो गैर नहीं होते बनते उजाला अंधेर नहीं होते सो फक व्हाट यू सेड यू आर अ फॉल्स प्रॉफिट I'm so in love with you. I don't need you to change. You're sublime, sublime, sublime. And I'm falling right into all the depth that I see in your eyes. You're sublime. सोच में तू खोई हुई झूठ तू ना बोल सके सच कभी छुपे ना तू कल रात रोई भी थी तू तो ठीक से सोई भी नहीं तेरे अश्क मोतियों से कम नहीं तू अपनी कीमत मुझसे पूछ तो सही तेरा साथ अनमोल तू तोल के बोले फिर भी हर बात अनमोल सी हाउ आई अनफोल्ड मैं दिल की बातें इस कलम से जाहिर करूं मैं बिन कासिम इन सबको राजा दाहिर करूं फेक लोग अपने कमरे से बाहर करूं I got everything I need मैं बस वाइप करूं अब मैं टाइप करूं टेक्स्ट और फिर भेजूं नहीं तू मेरा अक्स है मैं कैसे तुझे देखूं नहीं दिल फरेब तू तुझसे चाहे क्यों करीबी असल हिकमत हमें धोखे खाकर ही मिली थी तेरी मेरी यारी बेमिसाल ही रही थी तेरे विसाल के ख्याल में था गुम अभी वहम था मेरा या गुजर रही थी तुम अभी तुम मेरा नशा मेरी हाय मेरी एक्सटेसी ये लोग नहीं है दोस्त मेरे I'm invited everywhere ये सब होस्ट मेरे You need to talk जब तू पी ले दो नीट दुनिया से दूर नॉइस कैंसिल करे सोनी मेरी दुनिया से सुलह भी अब नहीं होनी जिंदगी कीमती लगी when I buried my homie किस तरह कहूँ कितनी बात ये अजीब सुन लिया सब जो तूने कहा भी नहीं गुजरे हैं दिल से तेरे रहे तो नहीं दिल से बड़े ख्वाब हम उनसे बड़े तो नहीं तो रो नहीं I don't need you to change. You're sublime, sublime, sublime. And I'm falling right into all the depth that I see in your eyes. You're sublime. अब घर में आने का जब सा फासला है तुझसे उम्मीद कोई नहीं फिर भी तेरा आसरा है बहुत सवाल हैं पर पहले ये बताओ कि दस्ते साकी आज इस तरह क्यों कांप रहा है मैं बैठा हूँ बेदिली के बाजार में कोई राहगीर जो हमारे गम ये बांट जाए मुझे तेरी लापरवाही पे हैरानगी है कोई कैसे एक उम्र तेरे लिए जागता है आशनाई थी तेरे से एक जमाने में अब दिल तिजोरी बंद ये वक्त के खजाने में वो मुझसे पूछते हैं कब मेरी रवानगी मैं कहता बाकी एक बहार मेरे आने में फिर महक उठेगा दिल तेरा फिक्र ना कर मैं तेरा अपना मेरा गैरों में जिक्र ना कर भरोसा खुद पे जितना उसका आधा मुझ पे कर तुझसे मुखलिसी तेरे मुंतजर कुछ यार दिल से उतरे कुछ यार तो बादशाह I know a bunch of people अब भी मुझसे खार खाएं I know a lot of people जिनके दिल से दुआ आए वो दुआ करे असर तभी खड़ा इधर दिल से बड़े ख्वाब and it only kept getting bigger अब ठीक घर के सामने बिलबोर्ड पे boy 30,000 feet ऊपर तेरी सोच से boy ये खुदा की नवाजिशें मेरी जात पे हुई मैं मुकर ही नहीं सकता इस बात से कितनी रातें काली की हैं इस कला की खातिर बड़े दिन लगे हैं उस रात से इस रात में खुदा मेहरबान किसी ने ये बीच बोए खुदा गवाह गिराए गए ना रोक पाए शर्मसार खड़े उन्हें मौत ना आए मुझे सुने कैसे शायरी का शौक ना आए मौत देखी अपनी आंखों से पर खौफ ना आए we all die
सफर में रहे खबर ना रही मैं मुखलिस तेरा तू डरना मत दुनिया जब पूछे मुकरना मत कर सबसे जुदा और ले चल कहीं रातें सुबह बन गई आंखों में नींदें भटकती रहीं तू ले चल कहीं तू ले चल कहीं तू ले चल कहीं मैं भटका मुसाफिर हूँ ले चल कहीं तू ले चल कहीं तू ले चल कहीं तू ले चल कहीं मैं भटका मुसाफिर हूँ ले चल कहीं ख्यालात के पहाड़ टूटे इस जहन पे सारी जिंदगी ही जी लिए हम इस वहम में सादगी में तेरी सौ हुस्न के रूप देखे एक उम्र गुजारी थी जो तेरी दिल लगी में लफ्ज न कर सके बयां मेरी अफसुर्दगी शुरू जो तुझसे क्यों खत्म वो आके मुझ पे ही आए अब्र फिर शराब फिर सुरूर फिर हुआ ये इंकशाफ के ना मिल सकेंगे फिर कभी उफ क्या करें हम तेरे रूबरू क्या करें कि हो तेरी नजर में सुरखरू हो के रह गए हैं तेरे बिन में नहीं हुसैन and I'm faded निटापी गोली गाने लिखे दिल पे रोगी इतने क्या खुशी में तेरी शामिल हूँ जब सोगी इतने कैसे सिमट जाएं फौरी हम बरसों के बिखरे फर्श भर चुके हैं जान अब हम अर्शों पे लिख रहे अब हम कलम ऐसे तोड़ें जैसे दिल के टुकड़े तुम पे सब करें अया हम बाकी सबसे छुप रहे एक दफा की दिल की बात और फिर हमेशा चुप रहे तुमने सुन के ना सुनी तभी हम कह के मुकरे तुम ना आए हमें खाएं बस तुम्हारी फिक्रें आज जाएंगे बाजार फिर ये लफ्ज बिकने दिल थम गया है ख्वाहिशें हैं मर चुकी मैं रह गुजर था उसका और अब वो गुजर चुकी सफर में रहे खबर ना रही मैं मुखलिस तेरा तू डरना मत दुनिया जब पूछे मुकरना मत कर सबसे जुदा और ले चल कहीं रातें सुबह बन गई आंखों में नींदें भटकती रहीं तू ले चल कहीं तू ले चल कहीं तू ले चल कहीं मैं भटका मुसाफिर हूँ ले चल कहीं तू ले चल कहीं तू ले चल कहीं तू ले चल कहीं मैं भटका मुसाफिर हूँ ले चल कहीं It's your boy. I had a dream once, पर अब वो सब हकीकत है कल तक थे मुस्तरद आज हम उन पर मुसीबत है उर्दू रैप से जो मेरी ताहयात अकीदत है No you can't be fucking with us सारी राहें हम ही तक हैं I make waves You ride my waves You ride this D and still throw shades मैं permanent हूँ इस culture पे जैसे tattoo Whiskas लड़के pussy so I get them cat food लड़के संकी I try not to hype them up खतरनाक they gon' come through and light them up Pop, bodies drop, दफा 302 We're sold out, gate पे है 300 लोग I drink the pain away on Saturdays and sad nights Flying in convertibles, OG saw my headlights निटापी गोली man, I had to keep my head right वो गलत उलाम मैं मर कर भी dead right Rock on my pinky, दुनिया दगादार में संग दिल सोते हुए भी नोटू छापूं मेरे sleep pattern rich I chase a check, I never chase a chick वो खुद ही होती witch, she just looking to get lit तेरा काम पूरा शहर जानता है नाम पूरा बंदा ठीक मेरा काम बुरा If you fucking with the gang रातों रात दस्ती वाला खड़े खड़े तेरा काम पूरा शहर जानता है नाम पूरा बंदा ठीक मेरा काम बुरा If you fucking with the gang तेरा काम पूरा
मैं नशावर like syringes up in main line stainless सर पे 2 fire death is painless ये gangsters बने they don't meet Karachi standards मैं लाजवाब भिखारी writing में दो मुझे answers I take your life then I take your watch I take it personal जब कीड़े करें अर्श की बात I take it personal जब झूठे करें सच की बात I take it personal जब बातिल करें हक की बात I take it to the next level कितने माले ऊपर I'm at the top of this game मेरा मालिक ऊपर rappers की worst nightmare मैं Freddy Krueger quicksand bitch मेरे जूते तेरे मुंह पर और तेरा काम पूरा शहर जानता है नाम पूरा बंदा ठीक मेरा काम बुरा If you fucking with the gang रातों रात दस्ती वाला खड़े खड़े तेरा काम पूरा शहर जानता है नाम पूरा बंदा ठीक मेरा काम बुरा If you fucking with the gang तेरा काम पूरा शहर से मैं बाहर plenty things to do लौंडे बातें करते there ain't nothing new brands follow करें I just pick and choose way too sexy for this I got Coke and Pepsi too I don't check the price tag sub affordable तू real नहीं तो मैं भी unapproachable shit is not a joke लेकिन funny भी उठने से पहले bottles पहुंचे अब rat motherfucker all you do is talk तुल्ले मेरे बारे इनसे पूछे सब pull up on you with a .22 बच्चा है तू hit or miss बचेगा रब की रजा से तू ये stunner vision किसको beef चाहिए send him to the kitchen बहुत खारिश है you fuckers itching हाँ I got so much going on मेरी vision में ये होके भी ना दिखें it's like party every weekend bro शहर से मैं बाहर plenty things to do लौंडे बातें करते there ain't nothing new brands follow करें I just pick and choose way too sexy for this I got Coke and Pepsi too कौन लाया rap trend पे now we know cancerous हो तुम I came at you like chemo तुझे हजम ना हो सच्चू तू go get some eno I'm Marlin मेरी औलाद ये find him like Nemo मेरे से बच्चे ही नहीं अगर बच्चे नहीं मेरे ये भटके हुए रास्ते ले लेते टेढ़े ते जेड़ा भी बने बड़ा rap star fact check लगे नहीं सारे नेड़े we coming we get it we coming with डिस्कॉर्ड चेक करता वो आपने पूरा 2500 का लिया क्या? अरे थे 900 वीपी ऑलरेडी थे ईशान भाई। हेलो पनीर, वेलकम टू द स्ट्रीम।
यूएस छोड़ देगा? नहीं नहीं नहीं, वो ऑफिशियल वॉच पार्टी है ना, इसलिए लोगो अभी लगाता नहीं हूँ। वॉच पार्टी के लिए मना किया गया। ऐसा क्यों पूछा? मैं अभी नहीं छोड़ रहा यूएस यार, मैं यूएस में ही रहूँगा अभी। हाय हाय सौम्या। सौम्या व्हाट्सएप मत चेक करो, ठीक है ना? एक दिन आएगा जब मैं भी आपको इंपॉर्टेंट काम होगा इग्नोर करो। दिल मेरे नू समझा जा, अखा विच डूबा जा, पहला तू रेखी नहीं मैं, ऐसी दुनिया तू दिखा जा। नहीं नहीं, लोगो देखो, लोगो इधर ही है। ऐसा ऑन ऑफ ऐसे कर सकते हैं अपन। ऑन ऑफ ऑन, बस। बट वो वॉच पार्टी के कुछ रेगुलेशंस है, वो मुझे फॉलो करने होते हैं। मेरा स्क्रीन शेयरिंग ऑन था, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन ऑन आ रहे थे। ऐसा है क्या? अभी तक 70 लाइक्स भी नहीं हुए। हाँ यार, ये वॉच पार्टी के लिए बहुत कम लोग इंटरेस्टेड थे आज, पता नहीं, व्यूज़ भी कम है आज। कैप्सूल अपन बाय कर लेंगे थोड़ी देर में, सोच रहा हूँ पब्लिक आ जाए फिर बाय करें, क्या बोलते हो? हेलो मन गांधी, वेलकम टू द स्ट्रीम। चलो मैं चलता हूँ एग्जाम से। बाय बाय पनीर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू वेल, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड मी टू मूवमेंट। Match found. Enough training. It's time. नोबिता, ये कौन है भाई? नोबिता तू कहाँ है? मेरे पास आओ बेटा। हाँ, मैं सुजुका हूँ। नोबिता, I must live in this nightmare. My enemies might as well join me. भाई स्ट्रीम लाइक कर दो, 100 लाइक्स करने फटाफट। सेना, तू है ना नोबिता? एक साथ भेजना तो हमने टेक्स्ट यार। Reloading. दो बॉयज लेके आया हूँ, मेडिसिन खाने के बाद लूँगा। दिखाऊँ क्या? Show me a target. Cover going out. Many enemies me. Breaking them. One enemy remaining. Flawless.
Keep that up, and we're gonna have a good day. Keep it up. Screw up and कौन सी they're वाली है honest. पता नहीं यार भाई कैप्सूल लिया क्या सोच रहा हूँ थोड़ी पब्लिक आएगी फिर लेते हैं वीपी ऐड कर दिए हैं I need a gun. Thank you. Thank you, my friend. Keep up. Focusing. One enemy remaining. Got 3. My ult is ready. Take A. Distraction. Spike down B. Don't worry. I got the straggler. Destabilizing. Reloading. If I may, I'll go in first. Thin out their numbers. हाँ Show me a target. I win again. Enemy B. Destabilizing. Fall back. What? Spike down B. No charges left. Last player standing. Wow. चलो क्लास काट दीजिए गाइस 100 लाइक्स कंप्लीट होने पे एक फनाटिक कैप्सूल खरीदने वाला हूँ वाओ तेरा लेफ्ट में है एक हुक्का है One enemy remaining. Cover going out. ईशान भाई चैट में एक मैसेज डालो ना 100 लाइक्स पे फनाटिक कैप्सूल खरीदेंगे ऐसा 30 seconds पिन करता left. हूँ Shadows traveling. मुझे पता था कि सौम्या वाला क्वेश्चन का आंसर पर मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था मैं सोचा था थोड़ा और ड्रैग हो तो मजा आता Last round before the थोड़ा switch. इंटरेस्टिंग करना था सौम्या मजा नहीं आया Guns you can. आई नो वेजी फ्रॉम कॉलेज तमीज से बात कर वेजी जी वेजी भैया ऐसे कुछ बोल तमीज थोड़ी एफएनसी कैप्सूल्स फॉर 100 लाइक्स ए ऐसा तो फिर ऐसा हो जाएगा कि गिफ्ट कर रहा हूँ मैं खरीदूंगा ऐसा लिखो Can't use that. Last player standing. सॉरी निक्षय भैया गुड behind you shower Switching sides. When we go out there, someone dies. Yo, I saw their share skin. Carry that weight. I need a gun. Thank you. भाई तू स्किन मांगता तब तेरा टोन अलग हो जाता है जब तू बकचोदी करता तो अलग कितनी पर्सनालिटीज है भाई मैंने 22 पर्सनालिटी अरे हम बकचोदी नहीं किया था यार हम तो थोड़ा शिशु होता है ना बुरा मत मानो थोड़ा अच्छे से प्रेम करो ना मन भाई उसको सौम्य लिखना जरा एक चैट में प्रॉपर मैसेज आई विल बाय एफएनसी कैप्सूल ऑन 100 लाइक्स ऐसा कुछ लिखो ना ढंग से Focusing.
Spike down B. कब ले रहे फनाटिक वाले 100 लाइक्स पे. One enemy remaining. Reloading. I'll make them remember they're only human. आपको एक्सपेक्टेड था पर इतना जल्दी नहीं था. मैं सोचा थोड़ी रील वायरल होती है तो. नो मनी ब्रो. सौम्या से एक काम बोला वो नहीं हुआ. कितनी यूजलेस है यार. Focusing. Breaking them. Spike planted. Over there. Reloading. Here. Destabilizing. One enemy remaining. My ult is ready. I was typing अब नहीं करना फिर यार प्लीज मिशू. I was sweating. Gun here. Stop the fire. Match point. My burden never ends. Bonne chance, mes amis. Yeah. Oh, thank you. No distraction. Contract complete. Spike planted. Last player standing. Look for my shadows, they will hide you. You got dumped. Need a drop. I don't have one. I also have skins. Does anyone? They are so dead. I also have skins. They will come. Away. There they are. Show me a Spike down B. Reload. हेलो. One enemy remaining. मेरा माइक क्यों नहीं चल रहा है. हेलो. This was fun. We should do it again. हेलो. कॉम्प नहीं खेल रहा तभी ठीक नहीं. जब चल समोसा खिला. फोटो भेजा ना व्हाट्सएप पे. उस पर कुछ रहो. उससे कुछ रहो. हेलो. ओ माइक इजंट वर्किंग. हेलो. ओए. हेलो. कुछ तो मेरा ये कुछ तो गेम का ही ग्लिच हो गया. मेरे स्ट्रीम चल रही है ना. कौन जीता.
जेनजी जीत गई। होपलेस समटाइम्स टू मीट। मेरा बहुत टाइम बाद हुआ है, मतलब बहुत टाइम बाद। सुजल भाई वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मेरी आवाज़ वापस क्यों आई थी अभी? हेलो हेलो, ग्लिच हो गया भाई ये तो। हेलो हेलो, स्ट्रीम पे तो चल रहा है ना माइक? हाँ भाई, आप राजस्थानी हो ना? हाँ जी। गेम बहुत ग्लिच कर रहा है मेरा, नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया फिर से। राइट क्लाइंट ही क्लोज करना पड़ेगा। हंड्रेड लाइक्स पे एफएनसी कैप्सूल बाय करेंगे, लेट्स गो। मुझे राजस्थानी आती नहीं है दोस्त। ओ हेलो, हाय ये ग्लिच हो गया था, चालू करते अच्छा। ये तुमने स्लाइसेस कर दिए उसके? अच्छा वाइट वाला वो करा ना। नई क्लासिक बाय कर लो। एक कमेंट पिन किया है वो चेक करो। मैच फाउंड। इस पे वो कौन डालेगा? ऑरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स। अभी ऐड कर देता हूँ तो। नहीं मैं खुद कर लूँगी। Enough training. It's time. शेफ ब्लिस, शेफ ब्लिस, यस। सो क्रिएटिव। ऑरिगानो ऐड कर दो। सीक्रेट रेसिपी रिवील्ड। वो एंड्रॉइड शिट डॉट्स पे ऐड अरे नहीं कर सकते। पिज्जा पे क्या है? ऑरिगेनो सीक्रेट क्या है? वही तो। यार मोमोज की क्रेविंग हो गई। मेरे फीड पे क्यों आती है खाने की चीजें? खिचड़ी में ऑरिगानो। ब्लिस, कोई बोल रहा है ब्लिस साउंड्स लाइक अ पर्सन हु पुट्स केचप ऑन पिज्जा। You know, sadly I do. Is he right or is he right? He's very right. और मैगी में भी? नहीं मैगी। ठीक है फिर ठीक है। Butter in my Maggi. I like it soupy. What? Dude, you need to try it first. Good work. What? अरे पूछ रहा हूँ क्या मैं मिस कर दिया? बटर, हाँ बटर तो चलता है। Enemies nearby. Here. Enemies nearby. मैं एक्सपोज तो बिल्कुल नहीं। Focusing. Destabilizing. ब्लिस थोड़े स्किल्स दिखा दो प्लीज। किल किया मैंने। और ये देख नहीं पाया, और दिखाओ ना। Spike planted. Last player standing. नेक्स्ट टाइम इन्हें बटर चीज़ ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स, फिर सोया सॉस डाल के वही बना दो ना उसको। वो क्या बोलते हैं जो बीच में फेमस हुई थी इंस्टाग्राम पे?
पिरामिड कोरियन मैगी क्या बोलते हैं उसको? Did I ask you? यार कितनी रूड है यार ये लड़की। मैं भी बोलता रहता है। Good work. Everyone have fun. Need a drop. Thanks. सब गेम्स कब करोगे? आज दोपहर में ही किए थे यार। और I am rude. Why would I mind? तो ऐसा पसंद नहीं है। Can you stop? नूडल्स ही बोलते हैं उसे। Switch here? Watching here. Here. नहीं तू नहीं। Show me a target. हर Watching बार here. जब Joke's over! You're dead! साइड चला जाता है ये। हमारा तो हेट रिलेशनशिप है, आपको तो पता ही है। तो कुछ नहीं है। मेरे साइड से तो है। ओनली हेट नो लव। Thank God. Here. I mean, no, I'm too sad. Careful. नहीं यार, इसमें क्या है, हर कोई मुझे थोड़ी पसंद करेगा। Reloading. Spike down mid. Last player standing. One enemy remaining. It seems these strangers want me dead. Why do I feel like Yeah, she's they're a not ball first. chamber? Hence blesses high. बट कुछ भी कहो, ओरेगानो तो भाई डोमिनोज के पैकेट्स में अच्छा लगे। पैकेट सैशे क्या बोलते हैं उसको? This is business. बाकी आप खरीद के लाओगे ना, उतना मज़ा नहीं आएगा। डोमिनोज वाले अलग ही ओरेगानो बनाते हैं भाई। Focusing. Breaking them. Stopping fire. Bro, पूरा पाएगा। Target down. यूएस में आई वाज एडिक्टेड। हाँ, इंडिया में तो ऑथेंटिक पिज्ज़ा थोड़ी होता है वो। बट अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे चल जाता है वैसा भी। इतने efforts. One enemy remaining. Gun here. Spike planted. Joke's over! You're dead! Teleport's ready. Cutting through. भाई पिज़्ज़ेरिया वाले पिज़्ज़ा खाए। Back side. Last player standing. Let me send the pizza. जी क्वालिफाई नहीं हुआ जी का, बट विद फ्रेंड्स इट्स अ वाइब। Portal closed. एवरीथिंग इज अ वाइब विद फ्रेंड्स, नो? Last round. Even watching my before the stream. switch. Bye, since you don't live with your fam, do you cook by yourself? No, ये भैया आते हैं। नहीं ना, check कर। वो value वाला। I don't know. तो watch party कर रही थी ना। एयो। On my mark. I have your back. मुझसे पूछ रहे हो क्या? हाँ। हाँ, मैच खत्म हो गया। Show me a target. Subtle marketing. No distraction. Spike planted. डोसा के अलावा हाँ, जो मैं खा सकता हूँ वेज में जो भी होता है मैं खाता हूँ भाई। मैं सुशी भी खा लेता हूँ, मुझे सुशी भी अच्छा लगता है भाई। अच्छी बनी हुई चीज़ मैं कुछ भी खा लेता हूँ।
यहाँ कैसे ये चेंबर हमेशा ही ऐसे मैसेज भेजता है, मेरे मैच में भी आया था। ब्लिस चैट में कोई बोल रहा है कि ये चेंबर हमेशा ऐसे ही मैसेजेस भेजता है, मेरे मैच में भी आया था। लगता है ग्रामरली का सब्सक्रिप्शन लिया है। On my mark. Watching here. I think chamber needs to get a life. Focus now. Eyes off me. Back soon. Show me. Too slow. What the fuck, sushi your pure veg I guess. हाँ sushi veg भी होती है भाई। जैसे बेस्ट बिरयानी वेज बिरयानी होती है वैसे ही बेस्ट सुशी भी वेज सुशी होती है। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सुशी रिवॉल्व्स अराउंड फिश। मुझे क्या मतलब भाई उससे। Spike down A. Here. जाए नहीं रही बाय बाय। जा ही नहीं रही बोल के तुरंत जा रही है। Last player standing. डब्बू दब गया था। Maybe new variants. वेज सुशी भी होती है क्यूकम्बर एवोकाडो बेस्ड। Gun here. भाई मैं तो वैसे खाता हूँ, चॉपस्टिक्स को ऐसे टिश्यू पेपर में डाल के नहीं खाते। मुझे तो चॉपस्टिक्स यूज करने आते नहीं। 30 seconds left. ऐसे तो होल कॉन्सेप्ट ऑफ मैगीज 2 मिनट में बन जाती है। आज तक कभी बनी क्या? ये नहीं बनने कभी नहीं आएगा क्या स्टोर में? क्यों पैसे वेस्ट करने हैं? हो तो आप गोल्डी और रहोगे भी। Spike planted. ओ भाई पायल ने तो क्रेजी कर दिया भाई। Teleport's ready. वाइपर कॉस्प्ले थोड़ी सी। One enemy remaining. That's 3. वैलोरेंट की पब्लिक क्रेजी होने वाली है। Did everyone see that? Style and substance chamber. Excellent work. क्या सीन खेल रहे हो फ्लैश भाई? बहुत तबीयत खराब है, मन नहीं है। मतलब मन था बट वही बॉडी हालत में नहीं। On my mark. Combination of loser and load. Cutting through. खैनी और विमल तो वेज है ना? आई एम वेज कोई ना। Joke's over. You're dead. Here. Focus. आज रैंक पुश करोगे? मन तो था मेरा बट लग नहीं रहा हो पाएगा। गाइस 100 लाइक्स पे फैनेटिक कैप्सूल खरीदने वाले हैं। देखो मजाक नहीं कर रहा हूँ, दवाइयाँ भी लेके आया हूँ, थोड़ी देर खाने के बाद लूँगा। ब्लेस उसको हील कर दो ना। मेरा कद्दू हील कर रहा है उसको। What do you mean, bro? Standing. One enemy remaining. मार्क करेगा तू? Really? Match point. What do we learn by fighting? इग्नोर तो मत ही करो। अरे अभी पढ़ा तो खैनी रुमल तो वेज होती है ना। मैंने बोला तो हाँ वेज होती है। आपने सुना नहीं ठीक से और आप मुझे ऐसे बोल रहे हो फिर। चेंबर भाई
यूट्यूब पे स्ट्रीम कर रहा हूँ, ऑफिशियल वॉच पार्टी चल रही है, राइट के डेव्स भी देख रहे हैं, ठीक है? मजाक से हट के बता रहा हूँ, ये चैट जो लिखी है ना, करा दो रिपोर्ट। मजाक लग रहा है आपको? लिंक देता हूँ, आके देख लो, ठीक है? ऑफिशियल वॉच पार्टी है कि नहीं, ठीक है? चेक कर लो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, चेक कर लो। हाय देवी जी भाई, ये बैंडल अच्छी लगती है। हाँ अच्छी है। No distraction. अरे उसने मार दिया। Focusing. Enemy spotted. My ultimate is ready. Spike down A. One enemy remaining. Just as my playlist. I'm not right dev. चेक कर लिया चेंबर? 5 सेकंड के लिए एफ के तो हो गए, चेक कर लो एक बार, ठीक है? Here. On my mark. तो अगली बार ऑनलाइन किसी लड़की को या किसी के लड़के को भी इग्नोर कर दिया करो। आपको अगर कोई परेशान कर रहा है तो गाली मत दो, ठीक है? सेम गोस फॉर सेज एज वेल। सेज आपको भी बोल रहा हूँ। एल चेंबर। On my mark. 23 की बात वो अभी बताता हूँ बाद में। On my mark. Time to jump. होने को तो 2 में भी हो सकते हैं भाई। Show me a target. Spike down B. Plant the spike. Plant the spike. Here. Got the spike. Careful. Spike down B. हेड नहीं लगा। कौन जीता? One enemy remaining. Here. एपेंसी की स्किन 100 लाइक पे लेंगे। देखो ना, कमेंट पिन कर रखा है, उसको देखो। Good work. Gun here. Sudden death. I don't care if there are 5 of them or चेंबर वो अभी स्विफ्ट प्ले खेल रहा हूँ ना, जब भी कॉम्पी खेलूंगा ना तब देखना वॉचिंग, ठीक है? आके Need healing. Need healing. लेंगे 100 लाइक। हेलो वामशी बड़ा वेलकम। राइट डेविड। प्लांट तो कर ले चेंबर। Help. cutting through. हेलो तो समझा। Let's take what they have. हाँ Show me a target. Making cover. Destabilize. Plant the spike. Enemy defense wall. Plant the Jet spike. over. Plant the spike. Here. Focusing. Breaking them. One enemy remaining. I got the Spike down. शीफू mid. भाई स्पैम मत करो, योकाई टाइम आउट दे देता है फिर वो। Here. Careful. Spike planted. My what's this? Last player standing. Attackers win. I'm done here. GG's. मैं थोड़ी देर के लिए FK जा रही हूँ, I'll be back. भाई चेंबर तो मैं हूँ, मैंने क्या कर दिया? मैं चलो बाय बाय। बाय ब्लेस। ओ एपेक्स भाई का हो गया असाइनमेंट 3। हैं?
अच्छा एलेक्स प्रेडेटर है। कितने लाइक्स हुए मुझे योकाई भी बता देना, लाइक करो चिमर भाई कि 100 लाइक्स हो जाए तो फिर अपन बंडल खरीद लेंगे। भाई एपेक्स भाई को बुलाओ अगर ऐसा ऐसा बोलना चाहते हो आप, तो वो ऑनलाइन नहीं है। Match found. यार आज की तो बहुत कम रीच है भाई। 21 मोर लाइक्स। Death match. Warm up. जो कहे भाई इसको टाइम आउट दे देना। 24 घंटे का देना, ठीक है। I'll shut them down. Until then, जो कहे भाई चैट में नहीं हो क्या? Fight. let's get this done. Hostile KIA. Come get some. 4 kills. Hello White, welcome to the stream. Bad guy down. Three kills. गाइस 100 लाइक्स पे कैप्सूल खरीदने वाले हैं। Cancelled. योर क्रॉसर हेलमेट। नो 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 वाइड, आपका एम अच्छा है तभी आप मार रहे हो, क्रॉसर से कुछ नहीं होता। Target dead. Got him. मॉडेस्टी देखो भाई, सच बात है। और क्रॉसर की तारीफ करने से मुझे कुछ अच्छा फील भी नहीं होता। आपके स्ट्रीम देख के गेम सेंस इंप्रूव हुआ ऐसा बोलते तो अच्छा भी लगता। क्रॉसर में कोई उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है।
डाउन टू अर्थ राव साहब। Bro is humble like Messi. Shut the fuck up. Don't compare me to that short-heighted clown. I'm 6'2". Put some respect under my name. ओनी फैंटम जारी तो है, अगर हेडशॉट्स कनेक्ट हो तो। Kill confirmed. 3 kills. 4 kills. Excuse me, Vijay, what color is your World Cup? I am not FIFA's favorite boy. 10 kills remaining. PUBG मोबाइल जिगल कर दिया। भाई TRX और P1 का T1 और PRX का मैच है क्या? कब है? टाइम बताओ। Why am I so good? नहीं अभिराम भाई, कोई फुटबॉल कल वॉच पार्टी हो रहा है, मेरा कल ऑफ है। हाँ एकदम सुबह नहीं कर पाऊँगा यार, मैं थोड़ा सा अपना काम वाम निपटा के थोड़ा सा आ पाता हूँ, तो एकदम सारे मैचेस नहीं हो पाएंगे, बट हाँ दोपहर में कर पाऊँगा। अरे कब है? आज है तो आज देखेंगे अपन। डिबेट तो 2022 में खत्म हो गई, अभी मत चालू करो भाई। पासवर्ड चेंज कर दो फिर हर्षित भाई। नो इश्यू, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यस, 100 लाइक्स हो जाए तो मैं वो खरीद लूँ FNC का कैप्सूल। बाय द वे, जिसको भी नहीं पता है, फनाटिक के ऑफिशियल पेज ने अपनी एक इंस्टाग्राम रील पे कमेंट किया, जो मैंने अभी इंस्टाग्राम पे डाली है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क इंस्टाग्राम पे जाओ और वो रील देख के आओ, और आप लोग भी उसमें कमेंट करो और उसमें फनाटिक को टैग करो। इवन दो दे हैव ऑलरेडी कमेंटेड, बट आई वुड स्टिल अप्रिशिएट मोर स्पैम। हाय हर्ष वैस, वेलकम टू द स्ट्रीम। दीदी पनीर लेके आया हूँ, पनीर भुर्जी बना देना और थोड़ा सा उसमें अनियन ज़्यादा डाल देना। ठीक है। चार तबीयत खराब हो गई है, मतलब बुखार आने वाला है। हाँ बोल के गया। हाँ मतलब ऐसा आँखों में वो ऐसा पानी जैसी होगी, बॉडी पेन हो रहा है थोड़ा सा। हल्दी दूध पीना था क्या? मैंने तो हॉट कॉफ़ी पी ली। थोड़ा सा भाई आपकी वीडियोस देखकर ही वैलोरेंट खेलना शुरू किया था, पर पिछले 1 महीने सिल्वर पे अटक गया हूँ, क्या करूँ बिग फैन। कितने की है कैप्सूल? 2300 ऐसा कुछ तो वैलोरेंट पॉइंट्स की है। हल्दी दूध पीना पड़ेगा क्या? भाई हल्दी वाटर डोंट टेक विद मिल्क। हल्दी वाटर लूँ क्या? मैंने आज तक नहीं पिया है भाई हल्दी वाटर। भाई फनाटिक वर्सेस वाइटलिटी वॉच पार्टी कर रहे हो क्या? 24 को मिडनाइट है। करेंगे अभिराम भाई। ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीजिए, दिन का एक बस। कृतम भाई कॉम्पी खेलोगे क्या मेन? सक्षम भाई खेलना, लेकिन तबीयत ख़राब है, हो नहीं पाएगा, सॉरी। मैं कब खेला था कॉम्पी? परसों खेला था, कल भी नहीं खेला था मैं। और मैच तो आपने इतना मैंने स्विफ्ट प्ले खेल लिया है, और मैच तो आपने देखा ही होगा।
सोलो कैरी, सोलो तो नहीं, मी एंड स्काई बोथ। सबको पेला भाई, सबको पेला। इनिशिएटर मेन लेस को, पर मैंने तो रेस खेला था। वन डे 17 आवर्स दिखा रहा है, गेस कर लो। PRX का मैच क्या? हाँ 24 को ही है वो भी। कैलकुलेट योर सेल्फ। मेरे को डेट नहीं भाई। एवेटार द लास्ट एयर बेंडर न्यू एपिसोड आए हैं, 8 एपिसोड्स। ओके यार अभी 8 ही बजे हैं बस। Match found. डायमंड लॉबी गेम क्यों कर लूँ क्या? अगर तुमको कॉम्पी देखना है हाई रैंक थोड़ा, असेंडेंट डायमंड लॉबी करा सकता हूँ। इमॉर्टल में तो नहीं हो पाएगा मुझसे। तुम लोग लाइक ही नहीं कर रहे। 21 लाइक्स अभी और चाहिए। नो इट्स अ न्यू सीरीज नॉट एनिमेटेड। ओके Enough training. हाँ कर लो, ठीक है करता हूँ। इस स्विफ्ट प्ले के बाद डायमंड कॉम्पी। यार मुझे थंबनेल बनवाना है कैप्सूल के लिए लेकिन वॉच पार्टी के टाइम तक तो हम थंबनेल चेंज नहीं कर सकते। रुको अपन वो देखते हैं। अच्छा अभी तो कल के लिए कर सकते हैं हम, थंबनेल बनवा सकते हैं। चलो बनवा के आया, अभी बोल के आया। पोस्ट कर देना भाई। ओवरथिंक मत कर, कैप्सूल ले ले भाई। वीकेंड में सब कस्टम करो, ठीक है गेमर अल्ट्रा। ओवरथिंक नहीं कर रहा हूँ यार, 100 लाइक्स हो जाएंगे उसके बाद कर लेंगे। मेरा क्या, मैंने VP ऐड कर रखा है, मैंने एक क्लिक करना है मुझे बस। थोड़ा इंटेंसिटी देखने में मज़ा आता है, मुझे भी वैसे ही खेलने में मज़ा आता है। ऋतिक को टाइगर डांस मूव्स, टाइगर डांस भी करता है क्या? मुझे तो लगा बस वो एक्रोबैटिक मूव्स करता है बस। और कैसे कंपेयर कर रहे हो ऋतिक? माय यू आर कंपेयरिंग टाइगर विद माय बॉय। Hola. Need a drop. शाहिद कपूर इज अ गुड डांसर टू। हाँ गुड लुकिंग भी है। स्नोमैन की मुसीबत। और यार मैंने कभी तोड़ा ही नहीं आज तक उसको। कहाँ होता है वो? ये इसको तोड़ते हैं क्या? पहली बार तोड़ा है, कसम से बता रहा हूँ, जहाँ तक मुझे याद है। Show me a target. Reloading. Break them. Killed them. Plant the spike. Last player standing. क्लच कर दूं क्या? You're finished. इसमें सोमेन भी है। वाओ
Which is the worst agent according to you in the game? It's mine, and I will kill to defend it. Need a drop. एक सब कोई सब ही नहीं, सारे कुछ न कुछ काम के हैं. Need a drop. Reloading. 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 Scanning ahead. Focusing. Cutting their vision. Enemy spotted. A. Reloading. Enemy spotted. Reloading. Over there. Last player standing. Spike down A. लॉल भाई सच में इंस्टा पे कमेंट आ गया, तो आपको क्या मजाक लग रहा है क्या? वेगी भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? रीलोड तो करके देता बेशरम. ले लिया क्लासिक 100 लाइक्स पे लेंगे. कमेंट पिन किया है वो चेक करो. Time to jump. Blocking sight. फैनेटिक के ऑफिशियल एनालिस्ट हैं भाई, वही ना. Deploying drone. Enemy. Show me a target. Revealing area. Stand aside. Destabilizing. Planted. Last player standing. I know exactly. One enemy remaining. My ult is ready. No distraction. Veggie bhai, now create a reel where you say I will buy the capsule of every team that comments. चुप, पैसा तुम दोगे? अरे जाओ, मेरे आगे कोई नहीं बोल सकता. Last DM round देखो. in the half. Don't be cheap. Spend it all before it's gone. बग्गा वो रील देख ली मैंने पहले ही. कॉस्प्ले देख लिया भाई. वाइपर में तो क्या भाई, पूरी वैलोरेंट कम्युनिटी हिला देगी पायल अब तो भाई. ब्रो फोन कौन सा है? Show me a target. Get out of my way. Spike down A. Breaking them. What now? Hi Bliss, welcome back. कुछ बोला आपने तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा. मैं बोल रही हूँ गाने बजा देती हूँ, बैंड लगवा देती हूँ. बैन नहीं लगता गाने से. मैं चलाता हूँ गाने. चला रहे हो तो अच्छा चलाना, बोर नहीं करना. अरे वो सिगरेट्स आफ्टर, अब इंग्लिश नहीं, कॉपीराइट लगा देते हैं वो लोग. Switching sides. Match point. मतलब मैं बैंड करवाना चाहती हूँ. किसी किसी में लगता है, किसी किसी में नहीं लगता. Got the music in you baby, tell me why. छाती पे मौसम में. Got the music in you baby, tell me why. मास्टरपीस सुना वो वाला. Your lips my lips, apocalypse.
यही लगाया था ना आपने? Yes. Best song पता आज तक का कौन सा है? Focusing. इंग्लिश की हिंदी? नहीं, लीग ही नहीं है, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। क्या? कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, इट्स यूनिवर्सल। मैं अपने गानों में ऐसे चूज नहीं कर सकता। आई एम लाइक अ पेरेंट who can't choose between daughter and son. Oh my god, trying to be modest. अभी चलो बता दो क्या मेरे जो नेक पे टैटू उसमें एक फेवरेट तो मेरा लिखा हुआ है, दूसरा जो नहीं लिखा है वो बता देता हूँ। दूसरे ये वाला लगा लो, नहीं गोरे गोरे गाल तेरी छाती पे। आप खुद टैटू करोगे तो करा लूँगा। आता है आपको? टैटू आर्टिस्ट नहीं, टैटू आर्टिस्ट पूछा था भाई। टैटू आर्टिस्ट ट्राई, मतलब यू शुड गिव इट अ ट्राई, आई एम टेलिंग यू। मैं जो मेन अकाउंट गेम प्ले नहीं, तबीयत खराब है भाई। यू प्लेइंग आफ्टर दिस? Yes, that's why I invited. Destabilizing. Here. Spike down A. Don't worry. I got the cyber. यूरो भाई फ्लैश बहुत अच्छा करते हो, अगली बार मत करना भाई। स्ट्रीम बहुत अश्लील हो रहा है। क्यों? कुछ गंदा थोड़ी बोला हमने। हाँ तो मैं अपना फेवरेट सॉन्ग बता रहा था। यार ये जेनजीज ना कुछ भी। हाँ बहुत पुराना गाना है ना, क्योंकि जब रॉक बैंड्स का कल्चर हुआ करता था। ओल्डी। अभिराम भाई आप मेरे को हल्के में ले रहे हो क्या? I know exactly where you are. No distraction. Welcome to the Hotel California. And that's the end. Spike planted. What a lovely place. Last player standing. Such a lovely place. One enemy remaining. Got 4. Making cover. Attackers win. You can check out anytime you like, but you can never leave. That is my favorite line from the song. I might get that tattooed someday on my chest. Pink Floyd सुना है क्या? Hello. कम्मो केड़ी दुनिया तो आई है तू 10,000। मैं पूछ रहा हूँ पिंक फ्लॉयड सुना है क्या? Match found. मैं गाना सुन रही थी क्या? पिंक फ्लॉयड सुना है क्या? मुझे भाई शादी की उम्र में वैलो खेल रहे हैं। And कम्मो, oh my god. Enough training. It's time. कम्मो केड़ी दुनिया तो आई है तू 10,000। ये तो सुना ही होगा, क्वाइट जेंजी। ब्लिस आपका रैंक पूछ रहे हैं लोग चैट में, बता दोगे क्या थोड़ा जोर से बोल के? यार मैं ब्रोंज 2, वो भी आई डोंट नो हाउ। What do you think? What rank do you deserve?
At least diamond. Deserve at least iron. At least iron. Dude, I don't play comp. Veggie bhai, Spontan yaar, welcome to the stream. मैं welcome करना भूल गया आपको, sorry यार. By the way, that some guy supposedly is claiming to be that chamber from Breeze, and he's in the chat from the past 30 minutes. He's still in the. What? He's. Chamber, you need to actually. No. What? नहीं बोलो, छोड़ो ना, उसको इग्नोर करते हैं. Back then, I wasn't able to talk. That's why I didn't reply. That guy stands no chance talking. Fucking idiot. भाई लड़की है तो कुछ भी बोलती है, देखो. Bro, I'm 13. वो बोल रहा है वो 13 साल का है. Shame on you then. अरे ओ भाई, मुझे गाली दे दो, किसी और को नहीं. वैज भाई उधर बेस्ट प्लेस फॉर फूड टाइप रेस्टोरेंट बहुत सारी है. जिधर भी जाओ भाई, सब रॉयल्टी से भरा हुआ है उदयपुर पूरा. ऊपरे चले जाओ. UPRE. बाकी फिर आप नॉनवेज वगैरह खाते हो तो और भी जगह हैं जो मुझे उतने अच्छे से नहीं पता है, बट हैं काफ़ी सारे. और कुछ नॉनवेज डिशेस भी फेमस है वहाँ पे, लाल मांस वगैरह. वो मैं अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा. हर टेम्पर इज़ टू शॉर्ट दैट वेजी बाई टॉलर सजेस्ट मी. ऊपरी चले आओ. UPRE. भाई ये स्विफ्टली में ग्रज रख रहा. मैं थोड़ी रख रहा हूँ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा भाई. पर आप 13 साउंड तो नहीं करते हो चेम्बर. मोए Destabilizing. Spike down mid. वॉइस रिवील चाहते हो? नहीं, नॉट इंटरेस्टेड. ब्लिस लोग चैट में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट मांग रहे हैं, दे दो क्या? One enemy remaining. फिर नहीं यूज़ करते तो दे ही देता हूँ ना फिर. एक बार बस हाँ बोल दो, दे दूँगा सबको. सब लोग गाइस आर क्रशिंग ओवर यू. अरे हाँ या ना तो बोलो, ना भी बोलोगे तो हम आपका डिसीजन को रिस्पेक्ट करेंगे. अरे कम्मो गाने सुन रही हो क्या? लगता है स्ट्रीम देखने गई. कम्मो गाने सुन रहे हो क्या? अगर हाँ तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा अभी. अरे क्या, I was just cooling down. Cooling yourself down? Yeah. How do you do that? Listen to good beats. Show me a target. Mid. Spike down B. Hawk out. Enemy spotted. One enemy No remaining. chance. पीछे से किसी ने स्नाइप मार्शल चलाई थी ना? हाँ, मेरे को डैमेज किसने दिया? सेज. Player standing. 114. Blushing लाल हो रहे चिक्स. नहीं मैं क्यों लाल? थैंक यू भाई फॉर सजेस्टिंग. अबे फेस पे लाइट पड़ रहा है. 30 seconds left. Ten seconds left.
不错 promising काय तेरा शरीफ देना मैं तेरे को बाय करता हूँ शरीफ देना गने ले ले नहीं तू शरीफ दे मेरे को मैं तेरे को बाय करता हूँ Reloading. ब्लेस थोड़ा खाता खुल जाता तो Reloading. क्या बोल रहे हो नीचे से आवाज नहीं आ रही थी focus मार्केट 1 नो अरे अभिराम भाई ठीक है भाई अब चिल करो वो मस्ती करती है भाई पीछे ही पड़ गए हो आप तो छोटी बच्ची थोड़ी है उसको पता है वो क्या बोलती है मस्ती करती है भाई वो Last round before the switch. इस बार वैंडल दे कराने दे एक राउंड तो वी आर फैमिली इट्स ओके यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ आपका कैम स्ट्रेच्ड है क्या अरे आप कितनी देर खेलोगे कितने लोग हैं जिनको यहाँ मैं आप करके बोल रहा हूँ नहीं वैसे तो मैं कभी से ऐसी बात करना मैं कहने वाला था ये कितने लोग पार्टी में मेरे You will not kill my ally. Spike down mid. breaking them One enemy remaining. Reloading. 10 मिनट के गाने सुने यस Last player standing. that was satisfying stopping fire Switching sides. Match point. Well, I reckon morale's gonna be pretty low over there. Have you been recently hurt in an on-site accident? The riot took no efforts in drawing ISO. Continue to overwhelm them. दैट्स अ 3-pointer Spike down mid. Enemy spotted mid. show me a target who's your favorite player what is so cute Yoru was so cute. मुझे भाई आपने शेव किए हैं कभी Last player standing. One enemy क्लच और remaining. स्ट्रेट क्लच और स्ट्रेट What will it be this time? Have any patterns What emerged? is the matter with you? Why do you always go against me? Sky शरीफ अरे मेरी नहीं रहे हो मैंने उठाई थी I need a gun जेट दूं क्या मैं तेरी है रिक्वेस्ट की थी टाइम लेट हो गया आ जाए तो कोई show बात me a नहीं। target Reloading.
One enemy remaining. Team Ace. Attackers win. This is fun. Your duty is not over. Sweet, thanks. खेल रहे हो? I'll bring one more go. अरे प्लशी आगे ना बढ़े. पड़ा. Why watching solo? पता नहीं वॉच पार्टी का आज थोड़ा रिस्पॉन्स कम था. कल Unable to invite क्यों आ रहा है सबको? Okay, start. मेरी नेगेटिव एनर्जी उनको अलाउ नहीं कर रही है. मिस्टर वेजी वेलकम टू द स्ट्रीम. हेलो मिशेललेस गेमर. मेरी गंदी पर्सनालिटी ने ब्लॉक कर दिया सबको. ओ गॉड कितना क्या बोलते हैं उसको? Match found. नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है. Yeah, something happened last night. I didn't think you can tell this on stream. डीएम कर दो ना. नहीं यार फन चला जाएगा. पढ़ने वाला कंटेंट नहीं है. आपकी आवाज़ म्यूट कर दो क्या 2 मिनट के लिए स्ट्रीम पे? पॉसिबल है कि उन लोग कर दिया. जल्दी बताओ. Who we? Okay. It's not बस अब fun ऑन to कर दिया बस. हाँ वो शायद उस टाइम वो ऐसे टाइमिंग पे बहुत हंसी आई होगी. I get your point. गद्दारी कर बेबी भाई. अरे यार वो बात ही ऐसी कर रही स्ट्रीम पे सुना नहीं सकता. कैसे क्यों हो गया हमारे साथ? ओ केड़ी दुनिया तो आई है तू दस जा. सर मत बोलो और मैं अच्छा हूँ. आप कैसे हो दोस्त? आपका दिन कैसा था? भाई मैंने वैलो को अनइंस्टॉल कर दिया. केजेस गेमिंग आप अब परम सुख प्राप्त करने वाले हो जब तक रीइंस्टॉल नहीं करते. इग्नोर कर दिया. हर्षित भाई रुको यार, आपने कुछ बड़ा समझ लिया. ऐसा हुआ है क्या हर्षित भाई? सुपर फाइन ऐसा है क्या? बेस्ट डिसीजन केजेस गेमिंग. स्ट्रीम लाइक कर दो 100 लाइक्स पे कैप्सूल. Their jet is fast. So are rabbits and squirrels. I hunt both. भाई उसने तो शादी.com का प्रोफाइल डाल दिया भाई. Front, go back. Face the wall. Go back, face the wall. Go there. In the corner. यहाँ पे. Barrier clears. Now you remember the trick. Oh, what? हो गया. You remember, don't shoot until the
wall is down. Destabilizing. Last player standing. कंटेंट मिल गया भाई. You're gonna die. Thanks for the content. Bliss. Thanks for the content. I clipped it. Listen for the wind. It will tell you where they're. वजी भाई jealous. हम दोनों जानते भी नहीं है भाई एक दूसरे को. डीएसए के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया? चुप. वीर खुराना, हेलो ब्रदर, वेलकम टू दिस स्ट्रीम. थैंक यू फॉर जॉइनिंग. बेचारा इतना प्यारा ना साई वाले वाले. क्या उसको प्यारा बोलना सही वर्ड रहेगा? He is a kid. How do you know? Oh, everyone's a kid for you. Last player standing. डी से क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम. कौन किड है क्या पता? आपका फ्रेंड है क्या ये? हाँ हाँ. कैसे? मतलब म्यूचुअल है हमारा एक. We have played quite some time. So just know. स्विफ्ट प्ले में तो आपका कुछ तो है भाई. रुका है स्विफ्ट प्ले में तो आपका रुका है भाई. Dude, I didn't play anything. Every choice matters. हाँ स्विफ्ट प्ले में तो है भाई. स्विफ्ट प्ले की तो गुंडी एक ही है. Guys, don't kill Chamber. Show me a target. क्या बोला है? Get out of my way. इंस्टेंट म्यूट कर दिया. लेवल सबके निकलेंगे पर जो यार रुकेंगे उसी के निकलेंगे. Reject Razer algorithm. One enemy remaining. Dictras. Guys, please like the stream. On 100 likes, we are going to purchase the Fnatic capsule. And if you don't know, Fnatic के official account ने अपने एक रील पे कमेंट किया जो मैंने अभी पोस्ट किया. जाके चेक करके आओ. Last round in the half. रील मैंने पिन करके हटा दी. इंस्टा एक्सक्लेमेशन मार्क इंस्टा. मैं 1 घंटे से देख रहा हूँ कुछ बुरा नहीं. ओह ओके. और भाई चेम्बर ब्रीज का क्या कुत्ता था? अरे छोड़ दो ना भाई. क्या कहीं इजी स्निपेट की स्ट्रीम पर तो नहीं आ गया? वर्सेटाइल स्ट्रीमर भाई. ओपी करो. नेक्स्ट राउंड करता हूँ. Show me a target. Spike planted. Oh yeah! Monster on the loose! No distraction. किधर से अल्ट? ओ उसने तो जेल से अल्ट करी थी. One enemy remaining. भाई क्या चैट इग्नोर. Not this. Reloading. अरे पढ़ा मैंने ढाके में पढ़ी चैट मैंने. We are strong because we are together. Don't forget that. ब्लिस हमारी इस लॉबी में कोई आपसे भी नीचे है. He's not playing, that's why. आपको सब पता है क्या? आपको कैसे पता है he is not playing? अरे तू वो खेल थोड़ी रहा है. Are you not watching? मैं तो चैट से इंटरेक्ट कर रहा हूँ.
अरे ये कब से मांग रहे इंस्टा आईडी, आपकी दे दोगे इंस्टा आईडी? एक और लड़का बोल रहा है भाई इसकी आवाज़ बहुत क्यूट है। यार it sounds very cap, you know. Nobody in your stream is like that. I've noticed. We're not equals. Let's go. नहीं वो तो है ना, मानव अरोरा तो है ही है, वो तो लेजिट बोलता है आउट एंड आउट कि ब्लिस जैसी चाहिए मुझे तो एक बंदी। Focus. Destabilizing. रैंक क्या आपकी? एक्सक्लेमेशन मार्क रैंक डालो। Fucking idiot, we are not even in the same party. Bitchless ass, talking out of your stupid mouth. Right planet. कार्तिक शर्मा was up brother. Insecure, do Sub you games. know the meaning of insecure? She is bro, she is. The way she is reacting, she definitely is. Last player standing. One enemy remaining. Got 3. My ult is ready. When you said Veggie, you sounded exactly how a friend of mine used to sound. Nice one, sir, bro. Good color, bro. Clutch. This is the reason why I left last time, and I'm gonna go again. And don't invite me. We move as a unit, okay? Last thing I need is some hero messing things up. We go. चलो इसके बाद कॉम्पी खेलेंगे, ठीक है? खाना खा के खेलूं क्या? खाना बन गया वैसे भी। केड़ी दुनिया तो आई है। ब्रो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Remaining. Got 3. Nice, bro. Nice. L race Sigma Bruno don't. No distraction. Bro. Kill him. Well played. अरे डार्क गेमर स्पैम मत करो भाई। Match point. मुझे पता है, बोल के ही छोड़ा है उसने, मुझे पता है उसने पार्टी छोड़ दी है। एल रिज विस की बात कहाँ से आ गई भाई इसमें? वी डोंट Eyes up. Scanning ahead. Shadows traveling. Show me a target. Take flight. Enemy and attacker spawn. Enemy spotted here. भाई बहुत गर्मी हो रही है, पर मैं पंखा भी चालू नहीं कर सकता। क्लासिक से भाई किसको स्पॉन्सर कर रहे हैं? खुद कर रहे हैं। One enemy remaining.
spotted. Revealing area. So what? Take that area. क्या बताऊं? Good. Last player standing. गौरव भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। कितने लाइक्स हो गए? 100 लाइक्स पे कैप्सूल ले लेंगे। Stealing sight. 11 more subscribers for 6.15k. Let's reach the milestone today. Clutch. Attackers win. हाँ ब्रेन में भूल गई थी मेरे को ड्रेस। ऑफलाइन ही चलेगी, पता नहीं गुस्से में थी। एक्सिस और प्राइम दोनों में से कोई नहीं। चलो खाना खा लेते फिर खरीद लेंगे ना। हाँ, और ही विल नॉट टेल। कोई मैच वैच शुरू हुआ है क्या अभी? VCT में 1K वॉचिंग है, मतलब अभी मैच को टाइम है, आधे घंटे बाद होगा। कार्मिंग कौर वर्सेस टीम हेरेटिक्स। क्या खरीदोगे? नाइस वन वेजी भाई। हेलो हर्ष भाई, कैसे हो? क्या खरीदोगे? हम खरीदेंगे ये। केड़ी दुनिया तो आई है, तू दस जा। फनाटिक ने कमेंट किया था। आओ कोई सा मैच देखते हैं। लिक्विड का मैच देखा था क्या मैंने? ये सब तो देख लिया हमने। वाइटलिटी वर्सेस जेंटल मेट्स, लिक्विड वर्सेस कोई। फर्स्ट मैप मैंने देख लिया था। सेकंड बाय करेंगे 100 लाइक्स पे करेंगे। कितने लाइक्स हुए अभी देख लेते हैं। $93 है ना। 7 more likes and we buy the bundle. Okay, buy the capsule bundle, whatever. It's the smart move to make. Move onto this. Watching your back. एक मिनट खाना लेके आए, ठीक है। शुभम भाई वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वो कैप्सूल भी लेनी है और ये कैप्सूल भी लेनी है।
चेंबर और वो रिपोर्ट हो गए। हेलो राहुल भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। टॉक्सिसिटी मत करो भाई, आपको तो पता ही है मेरा पूरा सिस्टम चलता है आगे। 100 likes and I click here. 100 likes and I click here. Let every road know you've arrived. ओ हो गए। हो गए 100 दल्लुस। अरे यार शिट, बड़ी जल्दी कर दी है। ऑल्ट आईडी उसने किए, मुझे पता है, क्राउन ने किया ऑल्ट आईडी से। Me with 6 alt IDs. हो गए। खाना खा के ले रहा हूँ, ठीक है? 100% खाना खाते ही, क्योंकि मुझे उसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो मैं थोड़ा खाना खा के प्रॉपरली रिकॉर्ड करूँगा। Can you be with operator waiting for that back? Move onto this ASAP on attack here against Team Liquid's defense camo. First blood, Kiko no more. Enough of his funny business from the previous map. But now they've garnered full site access. And it's Mystic waiting on for his team to try and join in. Scratch that, he's actually trying to go for a choke himself. Gets eliminated, although Enzo does find a pot shot through the smoke to keep things at least at a fathomable condition. Still two guiding lights here for Yampi to work with though. First one finds a bit of info. Not much you could work off of. Second flash coming through together with Dizzy. Yampi finds some space, but you need more than just a trade here. You can find yourself on top with numbers. Otherwise, they'll all come in and start chiming in shots on you, Nats. Good enough to find an isolated pick. Enzo as well, but a Shadow left alone. And little bro isn't on the spike anymore. It's Enzo. Get to half. Now gets off of it. But who's going to win it this time around? Enzo is going to have to stick it in. Shadow isn't going to miss that shot. It's Koi. Hit for the A side, but instead it's the double front take onto this A side camo. His feet are burning, but he doesn't care. Still, Koi coming out on top, and this is so scary for Team Liquid if nothing is done about it. Koi, advantage. Kiko, so scared to take that fight. So Koi a big time ahead with a spike plant on this B side. You've also got the heal coming out from Stark, so replenish. बताता हूँ राहुल, खाना खा के बताता हूँ। Shados' angle was so sneaky, and it's a wide pick Kiko had to take, and Starks was going to play a different angle to make it all too uncomfortable here for Nats, and oh, you can see how much he's fidgeting. He needs the pick and he needs it quick, but it's not going to happen to him anytime soon. It's Shados with a triple core.
Spike dropped, and Yampi heard it, so he's definitely going to start spraying. Once he hears the spike being planted, Starkso is so close to it. Flash comes out, and Yamp is quick enough to react. And now with a Thrasher out, one of them is stuck in place. And that's exactly where Yampi tries to move in. And Koi's attack crumbled into pieces. Instantly, Team Liquid seized control, and there's two left to try and fend it all off. There's an orbital strike, though. No need to follow it up, but he can buy some time. Touched once. When do you start spraying? Do you afford to use the orbital strike here? No, you don't. And there you have it, Team Liquid only lose one player throughout it. And the orbital strike to try and find some room. Nobody's there, so it doesn't affect anyone, but the showstopper instead from Camo does a lot. Enzo on that closer angle could have done quite a bit, but now out of the equation, Koi will find themselves on top. Viper's Pit to take up a lot of space outside of Lamps, moving into the CT side, and Kiko looks to push past it. Oh, he's very eager to get pushing here. Starkso, nicely done to deal with him, but still Team Liquid trading equally. At the bottom end, though, as it's a 2v3, and only now the spot. ये तो मैंने देखा था यार. The A side is the right call. That's the empty side, but it's still them trying to walk a hill. It's 2 versus 4. No smokes to deal with aside from that short toxic screen. Nice nade to push off. अभी इसको headshot मारेगा. There towards truck. Kiko has all the vision that he could ask for here. Yeah, he's delayed it quite a bit. His teammates are here to help. Spike tapped. Ooh, TP potential. Kiko goes for a swing. Grabinho thinking about it. 25 seconds. There's a necessity here for Shados to get a pick. I feel that's the plan here for Koi. But Kiko's going to hold that angle all day. What a shot. Taking his work with. अच्छा 2-0 किया था क्या? Looks behind. Onto the box. Oh, he's gone all the way on top. He's shown it back. यार मैंने तो दोनों मैप देखे हैं यार. मैं तो भूल ही गया था कि मैंने देख लिया है. क्या वो टीएल तो जीत गई थी. टीएल के पहले मैप में उनके डोलर ने 37 किल्स किए, 450 ACS. नेट्स ने बढ़िया खेला. नेट्स भी हेलो रक्षित भाई.
हेलो परी भाई। हेलो निखिल शर्मा, वेलकम ब्रदर, सो लॉन्ग। खाना कहाँ गिरा दिया भाई? चल झूठ बोल रहा है। कौन सी गन पे लगाएंगे अपन ये फनाटिक बड़ी? प्रतीक भाई खाना खा लो फिर बताता हूँ भाई। अरे बंडल का वीडियो रिकॉर्ड करना अच्छे से, वो इंस्टा पे डालना पड़ेगा ना, फनाटिक वाले को बताना भी तो पड़ेगा कि भाई लिया है सही में। इसलिए अभी नहीं कर रहा हूँ, खाना खाने दो बस, अभी ले रहा हूँ भाई।
यार ये प्रतीक कौन है? नया सब्सक्राइबर है क्या? बैन करो इसको भाई। ल्यूनाटिक उनकी एमवाईएम अलग है और मेरी एमवाईएम से हम कोई कॉम्पिटिटिव नहीं खेलते हैं। मेरी 2015 से टीम है काउंटर स्ट्राइक की, तो तब से मैं वही नाम लिखते हुए आ रहा हूँ। पबजी में भी वही नाम लिखता था, पबजी पीसी, पबजी मोबाइल, डोटा, CS GO, CS 1.6, वैलोरेंट सब में। VDY और सीबर्ट वो सब जिस टीम में थे वो अलग थी, वो मैं, मेरा कोई रिलेशन नहीं है उनसे। लेने वाला हूँ। अभिनव भाई, गिफ्टर को मैं कैसे गिफ्ट कर सकता हूँ यार? चलो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 मिनट, वो कुछ तो बकवास बोलूँगा, इग्नोर करना, ठीक है? So finally, Fanatics Instagram official page has replied on a reel, and let's buy the VCTX FNC capsule. Let's try the classic in deathmatch. परी भाई ट्रोल करोगे आप? Match found. Deathmatch. Warm up.
Here. एस करने का ट्राई करते हैं क्लासिक से। चलो हाउ इज द क्लासिक? चलाने में बहुत बेटर लग रही है। चलाने में बहुत अच्छी लग रही है। Zuko better watch their backs. Fight! Try not to die. Back off. प्राइम स्टिल बेटर देगी। 2020 में ही रह जाओगे जिंदगी भर। बड़ी देख रहे मेरी? आय हाय हाय। Look at the gun, buddy. Idiot. Time to get the ace. अरे Don't get up. 3. please let me ace. Dominating. अरे ऑफिशियल वॉच पार्टी का टाइम टाइटल चेंज करना अलाउड नहीं है, ऐसा मुझे बोला गया अपेरेंटली, तो मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये छोटा मोटा कोलैबोरेशन नहीं है ना, अपन को फ्यूचर में भी चाहिए वॉच पार्टीज। अच्छा उसने तो हील कहाँ से मिला? वो तो आगे एक एस तो लेके रहूँगा। क्या मेरा स्किल सेट नहीं है एस वाला? You're done. वार्म अप के टाइम 3-4 बंदे एस में मिल जाएंगे तब हो जाएगा। टीम डेथमैच में हो जाएगा। ओह स्मार्टी पैंट्स। चलो नेक्स्ट टीम डेथमैच आ जाओ। हेलो आशीष चौधरी, वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कोई प्लीज़ बाहर वाले रूम से मेरा चार्जर ले आएगा क्या? Match found.
They have no idea how ASMR. heartless I am. Enough training. Hi Ashish, welcome to the stream. ये कार्ड में भी वेजीबॉय है you know. भाई तुम्हें पता नहीं है मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ फनाटिक का। बताया ना मैंने शायद पहले, मेरे पास जब आईफोन 5s था ना, कस्टमाइज़ किया था मैंने मोबाइल का कवर फनाटिक के लोगों से, खुद हाथ से बैठ के वो वॉलपेपर बनाया था, उसको प्रिंट कराई थी स्किन, फिर लगाई थी उस पर। एक वो थी और एक रोनाल्डो की थी। आउटप्ले भी भाई रिवील नहीं करना था। भाई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया आपने? नहीं, मैं देखूंगा आपका गेम प्ले अच्छा है तो ही करूँगा। हो केड़ी दुनिया तो आई है तू दस जा। ओ मैं यहाँ पे तो कम से कम मैच लगा के छोड़ सकता हूँ ना। मैच मैं यहाँ तो देख ही सकता हूँ। 23 वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक द स्ट्रीम। 150 लाइक्स करने जल्दी से। Reloading. Reloading. Let the bullets fly. Neutral. Focusing. Reloading. Kill confirmed. नहीं हो पाएगा भाई, इस सब ट्राई हार्ड के चल जाएगा। Target down. Right there. Reloading. Still in sight. Seconds until stage change. 10 seconds until stage change. मेरे को क्लासिक ही चलानी है। ड्रिफ्ट में डिफिकल्ट है वही ना, किस्मत से कुछ घाटी सी है ना अपनी। कोई नहीं, करते रहेंगे जब तक एस नहीं होगा तब तक खेलते रहेंगे। Got 3. Reloading. 6 मैन कस्टम को लो, इतने बुरे दिन नहीं आए कस्टम में जाके क्लिप बनाऊंगा। Next. My ult is ready. 10 seconds until stage change. One down. Reloading. No. Stage 3. अगले में करेंगे। Still in sight.
Breaking them. There. Blocking sight. Grenade! Throwing net. Yikes. Destabilizing. Reloading. Breaking them. Not enough. Not ready yet. Kills to go. Hi! Pissed! Kills remaining. Begins. No escape. Who's next? 5 kills left. Not ready yet. Breaking them. 3 down. मैं तो वार्म अप करता ही नहीं हूँ, आपको पता ही है. Match found. योकाई भाई. They have no idea how heartless I am. भाई टीडीएम पहली बार हारते देखा आपको. नहीं हार रहा हूँ यार.
योकाई भाई आपको कैसे लगी कैप्सूल्स? जान दे हो गए 9:45 ओए होए। कॉम्पेन यार शायद थोड़ी देर में वो कर दूंगा। अच्छा अभी तो इसके बाद खेल सकता हूँ वो ब्लेज वाली आईडी पे। लो रैंक तो नहीं करूँगा अभी। खुशी खुश आप आ गए क्या वापस मीरा रोड? ओह शिट आई वाज नॉट सपोज टू से दैट बट इट्स फाइन। मीरा रोड से तो क्या ही पता लगेगा। क्या मैं एग्जैक्ट एड्रेस बता दूँ खुशी का? ऑन द वे। अभिनव आपको मिस कर रहा था इतनी देर से स्ट्रीम पे। खुशी कहाँ थे आप? आई मीन यू माइट बी बिजी बट वी वर मिसिंग यू। देखो 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 फ्लेक्स करूं जरा। कोई है क्या ई स्पोर्ट्स का चौधरी इधर? देखो 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 देख भाई देख भाई ये भाई। Cutting their vision. Finished. Stage 2. Reloading. ये तो रिकॉन Nice guy. कटवा स्पैम आ गया। कटवा स्पैम लो। My ult is ready. No distraction. There. Target down. अगला खेलना पड़ेगा। Reloading. Reloading. In there. लेना 120 You disappoint me. Cutting their vision. ऐसे रैंप कर रहे हैं नीचे। एक तो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन आ जाता है बाहर। करके रहूँगा भाई ये पूरी रात निकल जाए। सिक्स एस नहीं हो रहा है कम से यार।
Stealing sight. 10 seconds until stage change. Go, go, go. तेरे संग खेली होली. Three souls. Beyond to bud, yeah. Beyond to bud. Cutting their vision. What? Go, go, go. Only swiftly stream होगा. Shock it. Adios. My कभी भी रेना अल्ट करता हूँ किल नहीं मिलता है. क्या हो गया? Stealing sight. You're nothing. अभी ये पूरा कैंप कर रहा है. The clock begins. Shoot. Making Cutting their vision. ईमेल के वॉच पार्टी करो ना. ऑफिशियल एक्सेस तो है नहीं, पता नहीं यार मैं पर पता नहीं यार कुछ एक्शन होगा कि नहीं. बट You want to play? Let's play. इम्पोर्टेंट मैचेस होंगे तो कर लेंगे. अरे भाई ये कैंप कर दिया मुझे. हेलो मान्या. हाउ आर यू? अरे वो तमीज से एफएनसी की स्किन ले ली. यस, मेरी फेवरेट टीम की स्किन आए और मैं गेम में ना लूं. स्विफ्ट प्ले में करते हैं ट्रायर को. नहीं यार स्विफ्ट प्ले में गारंटी नहीं है, डेथ मैच में ही होगा. फिनिश इफेक्ट नहीं है, बस किल बैनर तक है. किल बैनर तक बस. ओए होए होए. Match found. ऐसे ही गोली चलती है और गैज़म आते रहता है, ऐसा लगता है. कैसे हो आप मान्या? कैसा था आपका दिन? They have no idea how heartless I am. Just take a seat. I got this. फिनिशर होता था अमेजिंग. हाँ यार एक मतलब ऐसा टीम का लोगो बनता हुआ आता, कुछ तो आता है यार. आप फिर ब्लेज से लॉगिन कर रहे भी? हाँ ब्लेज से करूँगा, नहीं तो बेबी से कर लो. क्या मेरे को आपकी जैसे बना लो ना, कोई बात नहीं. कॉपीराइट थोड़ी है उस पर मेरा कोई. कौन सी टीम के बनाओगे आप? भाई 27 को नेक्स्ट एग्ज़ाम है. आज का बहुत बढ़िया हुआ. सबसे पहले मैं ही कमेंट करूँगा. मान्या बना दो. डिड यू सक्सेसफुली रॉब द बैंक मान्या?
You're an energy fan? Or you just like the skin? Those are yeah, फिर भी Primus Spectrum में better. Okay man भाई. Those are में से classic की skin नहीं है, इतना पता है ना आपको? दो बड़ी, एक बैनर, एक स्प्रे और एक कार्ड भी आया है. I love mouse. ऐसा है क्या? Sensor tripped. You're out. Reloading. Put down. Charge your ult. Flash. Going up. I'll do it from our place. ठीक है. New stage in 2. अरे मेरी मम्मा बचा लो मुझे. 10 रिकॉर्ड हो गए. Watch your eyes! अगले में करना पड़ेगा. Who's next? Raiders down. Reloading. माने आपको भैया ना बोल दी मान 19 के. मुझे पता है. Reloading. Careful now. Reloading. Triple baby. Show me. Watch your eyes. अरे प्रतीक को Look sharp. मान्य चली भी गई. झगड़ना बंद करो. Raiders down. My ult ready. 10 seconds until stage change. Stay down. No distractions. Final stage. No surprises. Worthless. अच्छा वैंडल आ गई क्या? Focusing. My ultimate's ready. Careful now. Flash. Come on, let's go. Fire in the hole. Embarrassing. It's you and me. Focusing. No, you don't. ना तेरा आइट आ रहा है.
ड्राइवर वाला डिफॉल्ट ब्लैक वैंडल Can't use that yet. Target down. The hunt begins. Reloading. 15 kills remaining. Flash out. Who's next? Target down. Careful now. Reloading. Get out of my way. And 5 kills remaining. Watch your eyes. Reloading. Four down. No surprise. Deadlock's on a rampage. Haven't you got somewhere to be? There isn't here. Charge your ults. ऑफ खेलेंगे एस करने के बाद क्लासिक एस करने के बाद कॉम्प खेलेंगे जोनट्रिक्स भाई हेलो मॉलिन जी वेलकम टू द स्ट्रीम ओह मॉलिन कहाँ है आज आई नहीं जान दे होगे 9:45 Match found. भगवान प्लीज करा देना यार स्टार्ट से सीरीज खेलूंगा एकदम They have no idea how heartless I am. वेजी भाई हॉक्स एक्टिव फिर आ गया मतलब हॉक्स एक्टिव तो अपना रेगुलर व्यूअर है ना फुल फैनेटिक बाजी अच्छा आप ही हो क्या वेलकम हॉक्स एक्टिव आजकल मेल नहीं कर रहे लगता है तभी हारे थे हम नहीं टीडीएम को खेल रहे हो वो क्लासिक लिए उसका एस करना है फैनेटिक Adios.
hungry souls. Gotta go. Listen up. Charge your ult. Bad move. Too slow. I'm out of here. This way. Cutting their vision. Raise it. Yeah. Rain is on rampage. 10 seconds until stage change. Reloading. हो गया. अब कॉम पे खेलेंगे नेक्स्ट. Stage 2. One down. Still inside. Gotta go. One down. Smart move. Go, go, go. Raise it. That's one rampage. I'm out of here. Shotgun. Spawning. Reloading. Bye. Go away. Cool bridge. New stage is For them. dominating. My ult ready. Stage 3. Ciao. Pirate satchel out. They will cower. More. Ultimate orb spawning. Still inside. Here we go. Too slow. They're dead. Reloading. Four down. Reloading. Cutting their New vision. stage intact. Gotta go. Final stage. Flanked. Go, go, go. Down. I'm out of here. Satchel out. Four down. Bye. Go get him. You're done. Reloading. You want to play? Let's play. Ultimate orb. Embarrassing. Get out of my way. Raise it. Dropped. 10 kills remaining. Cutting their vision. I'm out of here. Night, night.
Still in sight. You own Reina भाई TDM है भाई क्या अरे यार अटेम्प्ट हो जा रहा है अभिनव भाई इसलिए ले रहा हूँ बाकी कंटेंट के लिए भाई आपने तो क्या ही करना है ओए होए नी तू सोनी बारी Match found. They have no idea how heartless I am. ईशान भाई हाईएस्ट वाला रैंक कैसा लिख दो रेडियंट की स्पेलिंग नहीं आती है तो हाईएस्ट वाला रैंक लिख दो कॉन्करर लिख दो नहीं तो
आज मेरा लेग डे था. Even if I go out, I'll go out with a bang. Just promise you'll dance at my funeral, okay? By the way guys, last game में फिर stream end हो जाएगी, ठीक है? अगर watching 35 के ऊपर चलेगी तो एक और खेल लूँगा, वरना फिर आज का बाय बाय. भाई उमन को भर दो आप. क्यों, कुछ बोल रहा है क्या? अच्छा नो ब्रेक भाई, चलता है इतना तो यार. इतनी जल्दी क्यों एंड, इतनी जल्दी क्यों स्टार्ट किए, पूछा आपने? हेलो अमित गेमर, वेलकम टू द स्ट्रीम. 7 घंटे हो गए, तबीयत खराब है पता है आपको? वो अच्छा याद दिलाया, गोली ले लूँगा अभी. कहाँ घूम रहा है? Spike down A. Reloading. भाई क्या क्रॉसर प्लेसमेंट है रेस का भाई. भाई पिंक कलर की गोली पहली बार देख रहा हूँ यार. One enemy remaining. लगता है सेंटिनल कैप्सूल आ गई मेरे पास. Aw, thought you'd try harder. Keep after them. कोल्ड को भी पीने से गला खराब. हाँ ऊपर तो शेक पिया था ना. Reloading. ये तो मेरे रैंक का बंदा है रेस, फॉर रियल. Enemy spotted mid. You disappoint me. Still in sight. Blood a bunch of you. Spike planted. I'm joking. Reloading. One enemy remaining. Cover going out. Shadows traveling. Reloading. रेस को डिफ्यूज क्यों नहीं दिया यार? Is diffused. ओ भाई मॉडल. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. शेरिफ गिराएगा उमन या रहना में से कोई? Gun here. I'm watching here. I'll cut through. स्मोक्स There. मेरे पे साइफर ट्रिप लगाई है उसने यहाँ पे. Spike down B. Feeling sight. My ult ready. One enemy remaining. Blinding. Grenade! Cover going out.
30 seconds left. गुड नाइट अभी. Last player standing. Oh ho 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 ho. 10 seconds left. Clutch. Hey, bloody one shot, you got flash, you buy flash and then you never use it. Bloods, you had the audacity to insta-lock your lord name. Guys, I say we start complaining and start winning. Cutting through. रेज भाई आप तो बिल्कुल मत ही बोलो, आयरन हो बिल्कुल ही. The hunt begins. Spike down A. One enemy remaining. Cutting the rig out of charges. There. Spike is A. Finally. It is done. क्या देख लिया? The enemy only looks ऐसा ही है composed. भाई. Their hearts tell a different story. भाई क्या बच्चा आ गया है भाई ये. Shadows traveling. Equally. They will cover. Spike down mid. Last player standing. Fake teleport. रीमेंट करके पता नहीं, एक तो वीडियो एडिट करूँगा और पता नहीं बाकी तो यार. Thrifty. क्या चल रहा है भाई गेम में? Look for my shadows, they will hide you. Keep up. Face your fear! Spike planted. Last player standing. They think they know pain. They can't begin to comprehend it. To all staff, our memorial for Anton. Hey, come on, guys. Can you hold down the site? Bloody hell. Life and sacrifice of our friend and colleague. We are ready for them.
Cutting their vision. Still in sight. One enemy remaining. I'm dead. I'm still hungry. We got this. Spike down A. One enemy remaining. I know exactly where you are. That is a good look for you. I'm the last thing they'll see before they die. Lucky them. Need a drop. Thanks. Need a drop. अच्छा पता नहीं आज का ओवरऑल रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है कोई नहीं कल अपन मेन आईडी खेलेंगे ना तो आएगा वापस Get out of my way. Results. Reloading. Cypher was. Cutting their vision. One enemy remaining. Spike down B. Hey. Spike spotted B. Die meaningless. Fake teleport. They should give up now. Save us the effort. Need a drop. तबीयत खराब हो नींद में हो 5 दिन बाद खेल रहे हो गेम प्ले सेम ओपी Pathetic. Still in sight. One enemy remaining. Spike down mid. Map. Spike spotted mid. We get a pick. We move in. Got it? आज केवल वेजी भाई वाले रहने का दिन है They will cower. Enemy spotted mid. The rush. One enemy remaining. Last player standing. हेलो दाकू भाई Last round in the half. Use everything you have. We lose it anyway.
for you, hermanita. Prepared for hellfire! Here. Yeah. Results. One enemy remaining. Spike down A. Cutting their vision. Last player standing. Hacker. Switching sides. You're going to scatter for my stuff. Super easy to pick off. All game sense, instinct, and sound sense. Hi, David, buddy. Welcome to the stream. Reloading. Reloading. थर्ड एज था यार, थर्ड एज था, एक पहले भी 4K रह गया, 4K में था मतलब. It begins. Cutting through. Cover going out. Reloading. Shadows traveling. Reloading. Spike drop. The spike. Reloading. अरे मेन आईडी नहीं है. Here. सेकंड मॉनिटर सैमसंग का है. Enemy spotted B. Enemy spotted B. One enemy remaining. Reloading. You didn't see that coming. I'll make them remember. They're only human. Time to jump. Satchel out. Cover going out. Enemy spotted B. Cover going out. Go get some ecos, Jet. Go get some ecos. Hey, shut your bloody banquet up. One down. Reloading. One enemy remaining. Get some eco frags, Jet. Get some eco frags. Hey, take a bunch of stay mad king. Regrets, everyone. Your hearts are pounding. Are you South Indian, Jet? Can I get a drop? No, bro. He's not from India. I'm from China. हो सकता है 80 पे है ना. रिपोर्ट करा दूं क्या? YouTube पे लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, रेसिस्ट कमेंट कर रहा है, रिपोर्ट करा दूं? What the hell is? Hey, relax, Reina. Relax. It's just a game, Reina. Yeah. रणजी का तो है ही ये मादर चोद. Hey, banquet chutiya sister chod mother chod. Shut the hell. I'll get your ID banned. Don't worry, brother. I'll get you. करके बोला तो. Wait. Blinding. Reloading. Watch back. Reloading. Wait, Jet. Wait till I report your account, okay? Oh my god, I'm player shaking. My standing. legs are shaking by.
स्ट्रीम लाइक कर दो यार सब लोग, 125 लाइक्स कंप्लीट करने जल्दी से। Strike their weak points. If one link breaks, the rest will follow. Cutting through. Cover going out. Decoy. Still in sight. Still in sight. Last player standing. Hello Jet. Flawless. Can't kill when they have guns. Only eco frags. Hello eco fragger. I hate to say it, but probably best to play as a team. So, what's the plan? अरे आपको थोड़ी बोल रहा हूँ कुछ, वो कुछ भी बोलेगा कंट्री के बारे में तो थोड़ी सुनूंगा भाई। Help that old man find his grave. Cutting through. Bro, why skins are so expensive? Cutting their vision. Spike down B. One enemy remaining. Red planet. There. Enemy spotted B. Okay, take the break, guys. Match point. I know how this will end. I need this. Reloading. भाई रेडिएंट बढ़ी है। रेडिएंट बढ़ी है देखो। Keep up. They will cover. Cover going out. Spike down B. Last player standing. Get out of here. Loosen up. जी नहीं रेडिएंट कौन है पता नहीं। Just let them try to catch me. We win. We survive. Time to jump. Oman, I'm not talking to you, bro. Why are you talking in between? Did I talk to you? Enemy spotted B. Prepare. Decoy. Hey! Spike planted. Be faster. One enemy remaining.
Looks like I was stronger. Attackers win. Join my stream. I am doing official watch party for VCT. I'll see you, bro. Man, shut the Come. मेरे को मन नहीं करता है बोलने का, ये सब बहुत ज़्यादा रेसिस्ट कमेंट करता है. MMR is so high, exactly. मज़ा आता है ना बजने में. आई एम डूइंग ऑफिशियल वॉच पार्टी फॉर VCT. कम, आई सी यू. कैसे हो सब लोग? और खेलूँ क्या? मैंने बोला था 35 के ऊपर वॉचिंग जाएगी तो खेलूँगा, बट अभी तो नहीं आ रही उतनी, तो सो जाते हैं उससे अच्छा. तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है आज. चलो बैन दिलाओ. वन मोर. रुको, मान्या से पूछता हूँ खेलेगी क्या, फिर वो एक गेम खेल के बंद कर दूंगा. 30 है ही ऑलमोस्ट. बाय में चला सोने. 30 ऑलमोस्ट नहीं, 25 है. 10 कम है जितने बोला था उससे. रुको, अगर मान्य बोलेगी तो खेल लूँगा. रुक जाओ. ट्वेंटी 27 खेल रहा हूँ. अगर मान्या बोलेगी तो खेल लूँगा. ठीक है. वो खेल रही किसी के साथ. Kaiser, why did... नहीं Oman, I was having fun with everyone. I was having fun with everyone till that Jet started being racist. है ना? SK रॉसी ये वो इतना रेसिस्ट कमेंट किया उसलिए. बाकी मैं तो मस्ती कर रहा था भाई. I am not feeling well, so I am not in mood to anyway fight with anybody. But that guy started being toxic and being racist towards all of us. When you said where was that chat? When I said no brain only aim, you said you know aim. Did I say anything? I just ignored because I was not in mood to have an argument or start a fight with anyone. But that guy started being toxic, so that's why. I was joking. Even I was joking. We all were having fun, bro. नहीं सीरियस कुछ नहीं हुआ. मुझे तो यही नहीं पता चला कि वो उसने बुरा कौन सी बात का माना. शायद उसका मूड ऑलरेडी ख़राब था तो मैंने ड्रैग नहीं किया उस बात को, तो मैंने कुछ बोला नहीं. मैंने बोला चिलो ठीक है यार. और वैसे ही मतलब वी आर जस्ट ऑनलाइन फ्रेंड्स, तो उसको भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता. ब्लीस तो वही ब्रीज वाली है ना.
Next time, ignore that racist guy. No, the Riot devs will look after him now. I don't even have to report him. This is, I mean, since the time I'm doing official watch parties, they monitor my stream because even I have to follow some regulations. So the Riot devs, they monitor my stream anyway, and I have to behave properly as well. So even without me reporting, that guy will be banned. 2 days back, same thing happened. When Reina was being toxic to everyone, I didn't even know that they were going to report him, and I randomly got a text from the Riot dev that that Reina will be banned, don't worry. And I was like, please don't, because we are playing a game, it happens. But I don't mind. अच्छा, इसलिए आजकल फैमिली फ्रेंड स्ट्रीम चल रही। हाँ, जब तक ऑफिशियल है तब तक तो क्योंकि VCT का लोगो लगता है ना भाई, तो अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी किसी और को, तो थोड़ा तमीज से बिहेव करना पड़ता है। बाकी आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो, जब ऐसे नॉर्मल स्ट्रीम कर रहे हो, जो बोलना बोलो, उनको क्या फ़र्क पड़ता है भाई। मेन आईडी ग्राइंड बची अभी, वैसे तो ऑल्ट आईडी ऊपर लास्ट गेम है। अभिनव के आईडी से खेल रहा हूँ। स्ट्रीम एंड करने वाला हूँ कुछ चीज़। भाई भाई प्लीज़ एंड कर दो आपकी आवाज़। अरे वो तो मैं थोड़ा ज़्यादा वैसे बोल रहा हूँ इसलिए। मैंने मेडिसिन ले ली वैसे, पर रियल वेज हो जा। हाँ, मैं बस होने ही जा रहा हूँ इस मैच के बाद। I hate that jet. It's all right, brother. Get over it now. दवाई लेके नीनी कर लो। जान दे होगे नो पंतारी ओए होए। Are you guys ready for some deadlock crazy clutches? No sound. झूठ मत बोलो। झूठ पकड़ा गया। अमित गेमर का 9 ट्रायंगल पकड़ा गया झूठ बोलते हुए। भाई कोई कुछ तो तोड़ो। हील कर रहे बाबा, हील करो, हील। मेरे जैसा डेडलॉक कोई खेल ले तो प्लीज मुझे वेक मी अप व्हेन यू स्पॉट अ बेटर डेडलॉक देन मी। हेलो, आई एम द जेट। वुड यू लाइक टू डू? Last player standing. And 1 enemy remaining. 26 you all. Why did you dismiss, bro? You could have just healed. आपकी स्ट्रीम देखना जब कोई गेम साउंड नहीं था सच्ची। नहीं अभी रहने दे, मजा आएगा। एटीट्यूड भी निकले। हाँ भाई, अरे आपको पता नहीं है, मुझे भी ऐसे ही करती है। दिखाऊं अभी मैं इंस्टा डीएम दिखाऊं? ऐसा सीन करके छोड़ देती हमेशा। ये देखो, Barrier deployed. Spike planted. मुझे तो इंस्टा आईडी नहीं थी, मैं भेजता हूँ रुको। Last player standing. बहुत वैसे आपको मिलते हुई होगी, पर आप भी सोच रहे हो कि जब वो खुद से नहीं बोलेगी तब तक फॉलो नहीं करूँगा। मुझे पता है अभी। भेज दी मैंने। Team 8. मेरे से अच्छा डेडलॉक कोई खेल सकता है। अरे इको राउंड था, अभी दिखाता हूँ। Like us, but different.
अरे मुझे एक बात पूछनी थी यार खुशी से. चलो क्यूटी से चाहिए थी ना. पकड़ लिया देखा. अभिनव को पकड़ लिया. क्यूटी आप दे दो. क्यूटी यार आईडी दे दो. Sound sensor up. I know exactly where you are. Sensor What? Sound sensor out. Throwing net. Last player standing. यार वो क्या टीम आई है भाई. Spike planted. PUCH क्या आता है. पुच्ची. अभिनव पुच्ची मांग रही है आपसे. नई स्किन बाई फैंटम. थैंक यू युग भाई. बट मैंने नहीं बनाई है. One enemy remaining. Astra knows how to play. Concealment. अरे भाई क्या कर रहे हो बाकी लोग. बाय राउंड था अपना यार. चलो भाई लोग सब पुश कर दिया. मैं हेल्प करने गया फ्लैश पे. Only brought enough for me. गार्डियन क्लच इनकमिंग. इफ दे कम बी आई किल 3 मिनिमम. दे दो बच्चे. ऑलवेज रेडी टू गेट बच्ची. यार ये तो अब इंस्टा आईडी पे आप लोग कर लो बात. All these personal questions. Guys, go get a room. Not here. Hey, smoke. Fuck bro, smoke नहीं किया. Sorry. उन्होंने किया smoke. Okay. तू भी there. भाई वो रिवील. अरे पाप लगता है क्या रिवील तोड़ने पे. Spike planted. Fates have gone up. No escape. Hold them Pocket. to their grave. Reeling them in. 121. Last player standing. Reloading. अरे कमेंट्री मत करो भाई. मुझे पता है सुनाई देता है मुझे भी. I'm faster than sky wolves. भाई सुनाई देता तो गन स्विच क्यों किया. जाके मार देता. आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ भाई. चार स्टेप दूर था. मैं रिलोड करता हूँ. मैं जाके मारता हूँ तो मैं रिलोड हो जाती हूँ. अभी आर्ग्यू नहीं मत करने से. चुपचाप खेल ले. बी आए तो मिनिमम. क्राउन भाई थोड़ा सा आप थोड़े से आ ही नहीं रहे भाई इधर. एक फुल लगाया. Sound sensor up. Fire in the hole. Pull him. Enemy spotted A. डी हो रहा है क्या. Blocking movement. Throwing net. I know exactly where you Spike down A. Sound sensor up. Towers. One enemy remaining. पीछे स्पाई. शॉट. हाँ. Cutting division. No wahala. I end the trouble. Now again, we must repeat that. I'll progress. I could use a drop. Right there. लाइव करते रहो. खुशी तो चली गई. रिप्लाई भी नहीं दे रही. लॉल इग्नोर कर दिया सबको. रेना कुछ बेच के ड्रॉप दे सकते हो. Right there. Thank you. बी आए 3 किल मिनिमम. Listening. Ultimate ready.
Bring it. Enemy spotted B. Reloading. वो हील से है। Inside lamps. One can hear us. Oh fuck, he's close. Spike down A. No escape. ये पकड़ लिया उसको, चल 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 पकड़ लिया उसको, मार मार मार, वो बैठा ही नीचे। One enemy. अरे पर वो नीचे बैठा है। Barrier deployed. ऊपर चढ़ा है अभी तो। They're done. रुक कर रही फॉलो बैक। ये Race it to the spike site. बी आए तो बताइए आपको मिनिमम 3 किलो वाला स्कीम तो ऑन ही है। Need a drop. Listening. Thank you. I don't think so. Mute किया है। रेलॉग तो स्ट्राइक ऑन। हाँ कर दिया भाई। अरे उसको अनम्यूट कर दे। नहीं एरोगेंस नहीं सुन सकता भाई। अरे सॉरी मत बोलो भाई, अब मेरे को गिल्ट दोगे क्या अब सॉरी बोल के? अरे वो बोल कर दिया भाई। अभी तो रिप रहा हूं ना 105। हाँ समझ में आई, अब समझ में आई। अनम्यूट क्या पता था मेरे को। अभी किया ना भाई तूने, सॉरी बोल दिया तो करूंगा ना भाई, बड़ा दिल है भाई मेरा। मैं तभी बोल दिया था भाई 105 रेज हील। देखो अगर ये राउंड यहाँ ही आए तो कैसे निकालता हूँ। आई थिंक बी के यहाँ पे तो शांति हो गई। आप कब कर रहे फॉलो बैक? छोटे बच्चे को फॉलो नहीं करता। Barrier deployed. I've got your trail. जेट भाई झूलो नीचे, झूलो। नाइस वन रहना। स्पाइक शॉट। चल Down A. या भाई Kill confirmed. चिल करो निकाल दूंगा राउंड में। स्पाइक तेरे कवर में है कि ले सकते हैं वो लोग? 30 seconds left. ठीक है। और एक Sound sensor up. भाई मैं बिल्कुल पैसिव खेल रहा हूँ, ठीक है। हेवन से शावर देख ले, सिटी नहीं आएगा मेरे। चिल कर। टाइम नहीं, अल्ट कर दूंगा मैं प्लांटर को, चिल करो। Last player standing. I know 10 seconds left. where you are. Pull them to their grave. Nothing there. Spike मैंने मार planted. किया ब्रो। One enemy remaining. Let's go. कौन बोला है मार्क वाला? कौन बोला था अभी? तू स्काई तू ही था क्या? फिर तू कहता है कि तेरे को अनम्यूट रखूं मैं। मार्क किया तो मैं इसके अलावा और कहाँ अल्ट करूं बता मेरे को, यहाँ से अलावा? खेला है डेडलॉक तूने कभी? They think themselves are equals. ऐसे ही होती है भाई उसकी अल्ट। डेडलॉक के बाद में पॉइंट तो है, डेडलॉक के बाद में पॉइंट तो है। आज तो है भाई। भाई 3 किल और 13 किल में डिफरेंस पता है? अबे यार मैं मेरा एजेंट खेल रहा हूं। सॉरी भाई, मस्ती कर रहा हूँ यार, मस्ती कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानना। सॉरी, बस मेरी तरफ से भी सॉरी। आपका भी दिल बड़ा है तो माफ कर दो। और भाई गाली दे, अरे अजी गाली दे रहा है, अजी गाली दे रहा है। मैंने खेला भाई बेंच उसका है। तू ही कूल बन के बोल रहा था क्या ना, सोवा और स्काई तो कुछ तो खेलना ही पड़ेगा ना इनिशिएटर। तो वाले लेता जब आता नहीं है तो वो भी नहीं आता। आता क्या है फिर तुझे? जेट मत बोल देना। रेज रहना, जेट, फीनिक्स। लॉल। Last player standing. Flawless. ना चुदा यूटिल भाई, मैं गन पे खेल रहा हूँ। Their death demands our attention. यार बी कोई खेलो, मैं ये होल्ड करता हूँ, रुको बताता हूँ। होल्ड ए डेडलॉक मास्टर क्लास बताना हूँ देखो भी। ऐसा होली एड़े भोके गप ना बेंच। Listening. अबे Listening.
रायला कुठे भाऊ, कुठे राहिला? बाय. छी भाई छी. I know right. मैं तो मजाक कर रहा था भाई. छी है भाई. Blocking movement. No surprise. Face your fear. आना भाई, किधर है इसका वो? अरे पीछे से आ गया वो. अच्छा सैचल करके साउंड नहीं आई ना. अरे यार Spike planted. जेट को भर भरना है भाई किसी को. ये क्या जबरदस्ती है भाई, भर दो भर दो. They don't have a single life worth saving. इको कर रहे हो क्या? अभी तक सोलो निकालता रहा हूँ. Need a drop. Sound sensor up. करता हूँ भाई. Sound sensor up. क्या करेगा, मार तो पाएगा नहीं. अरे यार ये तो पर्सनल हो रहा है भाई. फिर भी एक दो इसके ऊपर. तू मेरे को हील कर, एटलीस्ट तुझे असिस्ट तो मिलेंगे. Blocking movement. 110 स्काई इधर ही है. स्काई शॉट पे 110 है वो. तेरे सामने होगा. हाँ. One enemy remaining. मार देगा तू. बैठ नीचे, नीचे बैठ. शिवमू I'm amped. Let's go. I got things to do. वो तेरे लिए किल रख रहा हो भाई. ले ले एक बार. आज जितने मैं 3 मैच से नहीं लिए उतने ले ले अभी. बाद में ऐड करके देख लेना पिछले मैच कितना मारा हूँ. ठीक है 5-10. 5 तो एक ही राउंड में कर दिया था. भाई क्रेजी भाई. बच्चों था घमंड है भाई जो. भाई है भाई इसमें क्या होना तो चाहिए भाई. करना भी चाहिए भाई. कपा बस. रे बुक्के. ये शॉट है क्या डेडलॉक? ये कि वो बस ऐसे वेस्ट करने आया टाइम. वो सारे बी जा रहे हैं. Be heavy sound. I know exactly where you are. Spike down B. No escape. Last player. अरे वो पुश कर गया. 1 सेकंड और बस. Spike planted. एक को अल्ट में मारता भाई. तो रहने दे, इन पे खेल भाई. भाई हार जीत तो गेम का पार्ट है ना. Scout destroyed. Last round before the switch. Equip yourselves, all. Money अभी सब लोग बेस पे बैठो भाई. एस मार गया तो बढ़िया आदमी. बढ़िया है भाई इसका ही तो. संभालते हैं बाकी आदमी बढ़िया है इसका ही तो. फनी तो है. अरे barrier deployed. यार इसने एस ले लिया. Listening. लेकिन हील. Reloading. Time to hunt. Scout destroyed. No escape. Hold them to their grave. Really? अरे उसको मार. वो उसको मार रहा है. बचा रहा है उसको. मार. One enemy remaining. छी भाई छी यार. स्काई तुम तरह गंद प्लेयर है यार. रहने दे भाई, तू रहने दे. फोफड़ा बंद कर. 70. कौन मच्छी करता है? मैंने वापस म्यूट कर दिया भाई. बिल्कुल ही छोटा बच्चा है. मैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा भाई. मैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा तब तक. हाँ नीचे से उसकी आवाज आ भी नहीं रही होगी. एग्जैक्टली ब्रो. वड़ा पाव.
स्कूल के फाइनल्स वाले दिन इंजर्ड होकर बैठ गया था। अनफिट लड़के भी फुटबॉल खेलने लगे हैं आजकल। यार ये स्प्रे कैसे मिलता है, मुझे भी चाहिए, मज़ा आता है देखने में। टाइम पास होता है राउंड के स्टार्ट में, कितनी बार भी देखो बोर नहीं होता। This is gonna be fun. गोलकीपर हो गए तो चल जाता है कभी कभी। Enemy spotted. Throwing net. Obscuring concealment. Quarry killed. Barrier deployed. Reloading. अरे स्मार्ट निकला ओमन तो। कोई बचा लो इसको भाई, कोई। बहुत सही। अरे भाई अटैकिंग स्काई, अटैकिंग स्काई, लेट्स गो। तेरे जैसे 10 लौंडे तेरी से चल। That moment is gone. But it'd be cool. गुस्सा बता रहा है कि बात सही है मेरी। गोलकीपर नहीं मोटा। यस। नो ऐसे जोक्स मत करो प्लीज यार, बॉडी शेमिंग मत करो। मेरा दोस्त है, क्या फुटबॉल बनता है, क्या फुटबॉल खेलता है। सही है भाई। Enemy spotted me. Buried. जाओ जाओ, इको फ्रैग तो ले लो कम से कम। No escape. Blocking movement. Enemy punch. Reloading. One enemy remaining. अनस्ट्रीम खेल देना। साइबर क्राइम। Just some good old hard yakka. Standing in between us and victory. स्काई भाई झूलो। Reloading. जान दे हो गए नो पेंतारी ओए होए नी तो सोना। We're not equals. Let's go. देना लॉक वर्ड। Enemy spotted A. करना देना और ले। Throwing net. अरे बाकी तो अंदर आओ ना तुम लोग, क्या बेंचो तो घर बना रहे हैं क्या तुम लोग। हाँ मर गया। Spike down A. Execute. Hold them to their grave. Ultimate ready. Last player standing. अल्ट करनी नहीं थी यार, मुझे रीलोड करना था, टी दब गया। I got your back. अरे वो अल्ट करते ना ग्लिच हो जाता है, लास्ट राउंड में अल्ट करते ना फ्लैश तो पहले हाफ की। अरे मैं मार दिया था, 116 था वो, फुल फ्लैश कर दिया, पीछे आना पड़ा। जेट भाई यार पूरा मैच निकल गया, बाहर नहीं दे रहे हो यार, बंदे मारो भाई। अब मारेंगे लर्क करने का मौका नहीं मिला ना। अरे लर्क, अरे तेरा सही है, गेम स्टाइल वैसा ही है ना। हाँ Enemy spotted A. Never saw me. भाई आ जाओ चावल से भाई, 2 लोग बेट हो रहे हैं भाई इधर तुम्हारा वॉकिंग में। Spike down A. Target down. Throwing net. Last player standing. भाई तू कितना अजीब आदमी है भाई यार। मैं उधर उससे, वो शॉट आ गया भाई, वो यहीं नहीं, यहाँ नहीं आएगा अब वो।
मैंने जल्दी डाल दिया वो सीज यार। रहने दे भाई। स्काई खेल रहा है, उसकी गलती नहीं, तेरे गेम सेंस की गलती है भाई। हेलो विनय भाई, वेलकम टू द Look your enemy in the eye. तो रेना भी खेल रहा था तो ऐसा ही खेलता भाई। Time to mobilize my pack. Reloading. Reloading. भाई इनिशिएट कर दे, डोलेस की हेल्प कर दे भाई कुछ। सब देख लिया उसने, फोटो खींच ली उसने, फोटो खींच। Sound sensor up. Barrier deployed. Listening. Spike planted. Reloading. जाओ ये गन और दे दो। मैं 1 HP हूं, मैं 1 HP हूं। One enemy remaining. मैंने भी दिया उसको। Ready. नाइस। All enemies accounted for. There's no need for the ओम enemy प्रकाश to भाई अभी देखो suffer. आपको गेम प्ले दिखाते तक। Kill them fast. Reloading. I got you, okay? Reloading. Seek them out. Found one. Nice. Hawk out. Still in sight. Hawk knocking fish. Concealment. Blinding. Block and leader of the hunt. They're लास्ट पे going ओमन है, next. ओमन। Headshot. Listening. Spike planted. Duck. My ult's ready. One enemy remaining. सीटी ओनली। हां यार। Reloading. आज भी लेंगे, टेंशन मत लो, टॉप फ्रैग तो कर ही रहे हैं अपन, आज भी जीतेंगे, रुको अभी। कैसे गड़े में भाई हम। फट गई भाई उसकी इतनी सारी बॉडी देख। जट क्या हग रहा। समर राठौड़ कैसे हो भाई? अभी ना पढ़ना हो गया होता है। You're all more important than words on a brief. Look out for each other. Reloading. मैं उसे भूल चुका बात है दिल। और लेने आना। मैं होता तो और लेने के चक्कर में मर गया होता अभी। नाइस। एक साइड है। स्मोक। No escape. Spotted A. Hawk out.
Blocking movement. Sound sensor up. Got him. No surprises. One dead. Spike planted. Sound sensor up. No surprises. Fire in there! Hold them! One enemy remaining. Last अरे player standing. गलत इंसान गोल्ड कर दी। The punishments on them. तेजस भाई कोई नहीं, बहुत इंटरव्यू होंगे यार अभी तो। Win. Show me where to go. ई की स्किन खरीदेगा? फनाटिक की खरीदी यार, मैं थोड़ा फनाटिक का फैन हूँ। Reloading. Reloading. आज मैं स्ट्रीम अभी एंड करने वाला हूँ इस गेम के बाद। मैं भाई बड़ी जल्दी आ गए। Cheers, mate. Watch this. मैं हाल्ट खींच रहा हूँ यार। Enemy spotted A. Enemy spotted A. Last player standing. Ha det bra. Three down. थोड़ा तो ढंग से खेलो यार। स्काई को साथ ले जाओ ना अपने शॉट पे। वो इधर यहाँ क्यों आता है? पता नहीं, वो शाबाश वॉक कर रहा है तेरे साथ, क्या बोलूं भाई। मैं नहीं तो कुत्ता चाहिए उधर। डैश नहीं चाहिए मेरे को तेरा, बट डॉग हर राउंड कर ही तू ये शॉट। No prisoners. Time to hunt. Scout destroyed. Hawk out. कैसे फ्लैश करता है रही? कैसे आ गया इस रैंक पर तू यार? Concealment blinded. Vision. भाई वापस तू Face your fear. भाई कुछ कॉल देना, समझ नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही तो। आजा सावस कर। I know exactly where you are. One enemy remaining. Listening. Sound sensor up. Sound sensor up. Last player. Stun. I've got your trail. Make sure to follow my pack in. They'll lead us right to the enemy. I could use a drop. I could use a drop. रीना ड्रॉप देना हाफ शील्ड पे। कुछ तो बेच के दे दे भाई। With me. Thank you. My ult's ready. Seek them out. Enemy spotted B. Listening. Blocking movement. Spike planted. Listening. अरे उसको पुश करके मारो ओमन को। नाइस। Get done. Fire in the hole.
No escape. Down with. One enemy remaining. Distant, pulling them, blasting them. रिपोर्ट कर दूंगा, रिपोर्ट कर दूंगा. Match point. Help a girl out, would you? Need a drop. डेडलॉक बाय कर दे. डेडलॉक. Need a drop. डेडलॉक क्या नहीं बाय हम. यार मेरे भाई के लिए कुछ भी यार. Blinded. Concealment. Blocking vision. Wait, also backside. Also backside. Blocking movement. Healing over here. Sound sensor out. Here. Sensor tripped. Lol. Reloading. Spike planted. एक है भाई. Let's pull them through their grave. Shotgun. Nothing there. Heal up, squad. One enemy remaining. Last I player know standing. exactly मैंने भी 35 where you दिया. are. Attackers win. Pack your bags. Tally your नीचे नीचे स्काई भाई नीचे. मैं उसे भूल चुका. और यार रैंक अप मैच था, चलो कल करेंगे. अरे बहुत बकवास कर रहा था भाई. ये लो जेनित्सु भाई, तू असेंडेंट 2 है. हेलो वेजी. दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके सबको हो रही है. खेल रहा है. सबको खेल रहा है. हो रही है ओए वेजी खेल रहा है. चुपके हो. क्या बात है, क्या बात है. झूलो नीचे झूलो खुशी दीदी. कभी भी मुंबई मत आना प्लीज. ठीक है, मैं तो वैसे ही मना गया मुंबई आने का. आई वांट द अदर वे अराउंड. अच्छा बंदी पुणे आए तेरे लिए. भाई एक बार पुणे आके तो देख, उसके बाद तू देख कैसा प्रिंसेस ट्रीटमेंट. पलकों पे रखो कुछ नहीं. अभी नहीं भाई सच में. अरे मेरी ही आईडी है तेजस भाई, मैं खेलता हूँ. हाँ खेल के लाल कर देते हैं, फिर मेरे को वापस रैंक अप करना पड़ता है. अरे सुन तो वेजी. आ रहा है इसके बाद. मैं अभी आधा घंटा रेस्ट लूँगा, फिर एक वीडियो एडिट करूँगा. उसके बाद अगर मुझे ठीक फील हुआ तो मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा. ठीक है ठीक है डन सीन. ठीक है. तब तक मैं रैंक अप करती हूँ. श्योर. गुड. बाय. भगा रही है मुझे. बाय. यार मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. बहुत हैपनिंग मैच हो रही है रे. VCT बस चल अब रहा है. ऐसी बात है अब. वो मैच ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए. अरे तूने ले लिया FNC का. यस सर. हाउ इज द क्लासिक. इट इज़ एज क्लासिक एज वो इसकी स्पेक्ट्रम की तरह लगती है ना. बराबर. स्ट्रीम पे ही कर लो सब कुछ. हाँ क्या कर लिया हमने. ये आयुष भाई बोल रहे हैं कुछ तो. कितना खराब है हमारे सिल्वर के बंदे आ रहे हैं G3 में. कहाँ सिल्वर है, प्लैट आ रहे हैं भाई. क्या बोल रहे हो. तेरी आवाज को क्या हो गया यार. मुंह में कुछ ले लिया था. कुछ नहीं. पैथेटिक. गंदी बात है.
बेची वो वाली आईडी से आना। मैं पीच की आईडी से आऊँगा हाँ ओके। अगर मुझे करना हुआ तो यार से मेरे को तो पता है आ जाएगा। देखो भाई लड़कियों को अपनी सुंदरता पे इतना भरोसा है। मुझे तो पता है आ जाएगा। क्यों? हाँ बस आएगा, चिल करेगा और क्या। तेरे साथ और चिल। वेजी भाई अगर मैं स्ट्रीमिंग करूँ तो मेरे साथ खेलोगे? ये क्या लॉजिक है भाई? हाँ उस दिन वही मॉडल 3 वाले को भी तो धोया था पटक पटक के अभिनव भाई। कल नहीं देखा साइफर ले कैरी करता उसमें बाद में नीचे आ गए थे मेरे से रहना 3-4 राउंड में ऊपर थे एग्जिट फ्रैग जो लिए थे ब्रीज पे वही ना बराबर। और बता खुशी कैसा था आपका दिन? अरे बहुत हेक्टिक था यार, इधर से उधर इधर से उधर। क्या हैपनिंग था? सही है यार तुम्हारा। हैपनिंग था। प्रॉपर्टी वर्क। 4th हाउस और व्हाट? हेलो बोलो ना खुशी दिखो। प्रथम मित्तल आपको हेलो बोल रहे हैं। हेलो जी, हेलो हेलो प्रथम। हेलो कह रही है आपको भी। गेम प्ले देख लो यार। किसका गेम प्ले देखूं भाई? और तू मेरे को स्पेक्टेट कर रहा है? काश इसमें ऑप्शन होता है ऐसा CS:GO जैसा। 3 किल पे हूँ मैं। दैट आई एम नॉट सरप्राइज्ड एनीवे। मेरा अच्छा युग भाई आपका गेम प्ले क्या नहीं देखना है? खुशी दी को बोलो कि कभी दिल्ली आए मिलने। हैं जी? क्या बात है? क्या बात है? आयुष गवाना दिल्ली में किधर भाई, किधर किधर आना है बताओ। पूछ रही दिल्ली में किधर आना है? आप जगह बताओ बस हाजिर हो मोहल्ला जाएगी। बताओ अपना। हम लुट गए अविया के मोहल्ले तेरे। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट। अरे वो आपने दूसरे अकाउंट में भेजी है रिक्वेस्ट, मुझे कर लूँगा भाई। और वैसे भी वो इमॉर्टल आईडी आप क्या करोगे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करा के? भाई दिल्ली आएगी तो सिर्फ मुझसे मिलने आएगी खुशी, ऐसा कह रहे हैं अभिनव। तुम लोग से मिलने आएगी क्या अब क्यूटी? भाई वैसे तो पहाड़ी अभी बट भी तो दिल्ली उधर ही सेटल्ड। रहता है। अभी भी तो उधर ही रहता है। अभी अरे इधर जेट टॉक्सिक हो रहा है रे मेरा। बोलना उसको उसको दिख कुछ रहा है text। कुछ बोलना उसको। मैं तो म्यूट पे रखी हूँ सबको। सिस्टम तेरे से बात करूँ कि इनसे बात करूँ? प्रायोरिटी उनसे बात कर भाई, गेम चल रहा है। सपने सुहाने लड़कपन के। हंस रही है देखो सब पे, हम सब पे हंस रही है खुशी। ये सारे सिंगल लौंडे एक लड़की देखते नहीं है गेम में कि उसको। अरे यार लड़कियां तो आती जाती रहती है तेरी स्ट्रीम्स पे वेजी। वो एक भी लड़की नहीं आती भाई। अरे चल भाई। रहने दे, एक भी लड़की नहीं आती लेजिट। खुद को फ्लैश कर लिया मैंने। क्यों खेल रही है क्या? क्यों खेल? क्यों मैंने व्हाट? चलो बहुत सिंपिंग हो गई। मैं तो खुशी को बहन मानता हूँ। अरे शुक्रिया यार, थैंक यू भैया। किसको बोल रही है? जो मेरे को बहन मानता है वो। हाँ आयुष को। मैं नहीं मानता भाई, मैं तो पहले बता रहा हूँ। 5-6 हो गया भाई। वरना मेरी वेजी बंदी आना। मारेगी। बंदी फ्लेक्स कर रहे हो क्या? अरे भाई इंसान हो भाई, तबीयत खराब है कम से थोड़ा। अब कभी ये बोला क्या कि वजी रेस्ट कर ले? कितनी सेल्फिश है यार खुशी। वेजी आना जल्दी, रैंक अप कराना। आप अभी हो 6 RR पे। कुछ कितने RR पे हो आप? 2 RR पे। ये हारोगे 0 पे जाओगे। मैं आऊँगा 1 बजे तक, तब तक आपके 3 मैच और हार जाओगे। आप पहुँच जाओगे गोल्ड 2 के 50 पे। मैं कहाँ से रैंक अप कराऊँ भाई? आ चल काम वाम करके आ, निपटा के आ। चल चल के दिखा। हाँ भाई दीपाली चौक के पास ले भाई। उसने मोहल्ला भेज दिया अभिनव ने तो तेरे। थोड़ा एंटरटेन करना खुशी यार, मज़ा नहीं आ रहा है कुछ। अरे मैं कुछ, मेरे को ना बाबा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है फॉर रियल। इतना कुछ भी चल रहा है यहाँ पे।
चल यार मैं निकलता हूँ, ठीक है, आप खेलो। आना बाद में आ खेलते हैं। अभी बोलो वेजी भाई की ओनली पेड सर्विस है बूस्टिंग। यार पैसे का कहाँ लोड है भाई, बहुत अमीर है ये। पैसे तो अपने मुंह पे फेंक के मार देगी ऐसे ही। ले 10 करोड़ हट निकल। 7 करोड़ निकल बोल दे, चल बाय। चलो दोस्तों स्ट्रीम एंड करता हूँ, कल मिलते हैं आपसे, और कल होगी शाम को 7 बजे वाली स्ट्रीम। I joined late with the last like I guess. Abhinav bhai, good night. Arshit bhai, good night. Guys, one more subscriber for 6.14k. Can we hit 6.14k before we leave? GG bhai, GG. Bye Gamer Ultra, good night everyone. चलो बाय, सीधा एंड कर रहा हूँ, ठीक है स्ट्रीम में, बात एंडिंग वेंडिंग कुछ नहीं डाल रहा। बाय।